हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम बैठ के वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड डू द इंटायर मैथ्स। जो भी क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ाई जाती है वो पूरी की पूरी मैथ्स कोशिश करेंगे कि उसको खत्म कर पाए। चाहे इट इज सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी विल ट्राई टू रैप अप इन टुडेज मैराथन। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं विद आवर बेसिक नंबर सिस्टम के साथ हम शुरुआत करेंगे। एक बारी टेलीग्राम ग्रुप पे एवरीवन प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन केस दे वांट टू डू, क्योंकि शुरू से पढ़ने का ही इसको फायदा है। सो आई वांट एवरीवन टू बी देयर इन दिस। प्लीज ज्वाइन इन। आई एम ऑल्सो पोस्टिंग एवरीवेयर so that we can start the class. शुरू करते हैं। Okay, so we will go ahead and we will begin by talking about नंबर सिस्टम फर्स्ट कि नंबर सिस्टम क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर इज एनी नंबर विच इज अ काउंटिंग नंबर, माने 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो हमारे पास सेकंड आता है, नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल नेचुरल नंबर्स एज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। और होल नंबर्स में क्या आता है? होल नंबर्स में नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी। पर ये नंबर्स भी सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ही हैं, 1 1 के इंटरवल पे चलते हैं। सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, एक जीरो को ले लो और एक सारे नेचुरल नंबर्स को ले लो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू एज होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद W एज वेल। नेचुरल नंबर्स को हम n से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, बट इनको हम Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव भी लिखते हैं। वी ऑल्सो राइट देम एज Z पॉजिटिव और I पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेसिकली हमारे जो सेट हो जाता है दैट इज ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। माने हम नंबर्स जैसे -1 -2 -3 -4 जीरो एंड नंबर्स लाइक 1 2 3 4 ये सारे हम अपना इंटीजर्स में इंक्लूड करके चलते हैं। इंटीजर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज जेड और आई को भी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इस इंटीजर में प्लस साइन लगा दें, माने वी आर ओनली कंसिडरिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर अगर मैं आई में प्लस साइन लगा दूं, माने आई एम ओनली कंसिडरिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कंसिडर करके चल रही हूं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बट बेसिक फैक्ट जो बच्चे गलत करके चलते हैं, दैट जीरो जो है बेटा, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो हमारा जीरो है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। पर हाँ, अगर कोई बोलेगा राइट ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर कोई मुझे बोलेगा कि सारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखो, देन आई विल बिगिन फ्रॉम जीरो। तो मैं फिर लिखूंगी 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर कोई मुझे लिखेगा कि राइट ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, दोज इंटीजर्स विच आर नॉट नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है,
तो हाँ बेटा, उस केस में मैं जरूर जीरो भी लिखूंगी, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो जब वो नॉन पॉजिटिव बोल देता है, तो ऐसे इंटीजर विच आर नॉट पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें सारे नेगेटिव तो आते ही हैं पर जीरो भी आता है। ऐसे ही अगर कोई बोल देता है नॉन नेगेटिव, तो उसमें मेरे को सारे पॉजिटिव भी लिखने हैं और जीरो भी लिखना है। आई हैव टू ऑल्सो राइट जीरो। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, कि बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं किसी को भी p/q फॉर्म में लिखूं बट q कैन नॉट बी जीरो, तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है? देखो, रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज हैं। ये जो p/q फॉर्म है, दिस हैज टू प्रॉपर्टीज। कि पहला, इट कैन टर्मिनेट, या तो ये टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट कर जाए का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं निकालूं 5/4, तो ये 1.25 होता है, और 1.25 पे टर्मिनेट्स, खत्म हो जाता है। या अगर मैं बोलूं कि बेटा व्हाट विल बी 4/2, तो ये तो 2 हो गया, तो 2.0 टर्मिनेट हो गया, डेसिमल्स खत्म हो गए, टर्मिनेटेड। या इफ आई गो एंड इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी 6/4, तो माने ये हो जाएगा 1.5, ये टर्मिनेट कर गया। तो ये हो गए रैशनल नंबर्स विच टर्मिनेट। दूसरी कैटेगरी आ जाती है दैट डू नॉट टर्मिनेट। वो टर्मिनेट तो नहीं करते हैं, दे डू नॉट टर्मिनेट, बट द पॉइंट इज दैट द डेसिमल विल रिपीट देमसेल्फ। डेसिमल अपने आप को रिपीट करते हैं। द एग्जाम्पल टू दिस वन कैन बी 1.23232323, 0.6666666। सो वी सी दैट देयर इज अ रिपीटेशन। हम देखते हैं कि एक पैटर्न है जो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है। देन ऑल्सो वी कैन गो एड एंड कॉल इट एज अ रैशनल नंबर, तो भी हम उसको एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सो रैशनल नंबर बेसिकली हैज टू प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, दे आर द नंबर विच डू नॉट टर्मिनेट, विच डू नॉट टर्मिनेट बट रिपीट, और दूसरा विच टर्मिनेट। अब इरैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स जो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो बेसिकली दे आर दोस नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो एक इरैशनल नंबर कहलाएगा। इट विल बी कॉल्ड एज एन इरैशनल नंबर। माने दीज आर द नंबर्स विच आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है, ना ही वो रिपीट कर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई गिव यू अ नंबर लाइक दिस, कि 1.234, 235, 45, 234, 1, 4 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, बट कुछ खत्म भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं है, कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, तो इट्स नॉट टर्मिनेटिंग। खत्म भी नहीं हो रहा डेसिमल, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। द डेसिमल इज नॉट एंडिंग, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, बट वी ऑल्सो सी इट्स नॉन रिपीटिंग। वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, इट्स नॉन रिपीटिंग। वी सी दैट देर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। 234, बट आफ्टर दैट इट इज 235, है ना। उसके बाद इट इज 4 5, तो देर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वी डोंट सी दैट द डेसिमल्स फॉलो एनी पैटर्न। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट दीज आर इरैशनल नंबर्स। इनको हम इरैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाते हैं पाई। इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाते हैं √2, √3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज एन इरैशनल नंबर। अब पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, दिस दैट इज 3.14159, एंड वो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होता। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम पाई को 22/7 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट पाई का एक्चुअल वैल्यू इज 3.14159 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलता रहता है, राइट। ओके, सो 22/7 एक्चुअली इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स आर दोस नंबर्स, ये वैसे नंबर होते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरैशनल नंबर्स। तो इसमें बहुत ध्यान देने का बात है बेटा, कि जब हम लोग नेचुरल नंबर्स ले रहे थे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे,
फिर हमने जीरो को इंक्लूड किया तो होल नंबर्स बन गए, फिर हमने नेगेटिव नंबर्स को भी वी इंक्लूडेड एंड वी गॉट इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स में हमने डेसिमल्स को भी इंक्लूड कर दिया विच वर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, माने हमने यहां से बनाया विच इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। नाउ वी वेंट अहेड एंड वी इंक्लूडेड दोज नंबर्स, अब हमने वो नंबर्स देखे विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड वी कॉल्ड देम एज इर्रेशनल नंबर्स। अब हमने रैशनल एंड इर्रेशनल को इंक्लूड किया एंड वी गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। तो जब हम रैशनल एंड इर्रेशनल सबको इंक्लूड करके चलते हैं, व्हेन वी इंक्लूड रैशनल आल्सो एंड इर्रेशनल आल्सो, तो मिलाकर जो हमें मिलता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रियल नंबर, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। सो रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, दोनों ही उसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले एक छोटा सा पॉइंटर विच आई वांट टू हाईलाइट कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्राइम वर्सेस कॉम्पोजिट नंबर। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं विच ओनली हैव टू फैक्टर्स, जिसमें आता है नंबर इटसेल्फ, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू, टू इज नथिंग बट टू इंटू वन, बस यही दो फैक्टर्स है, ठीक है। बट कॉम्पोजिट नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे फोर, फोर कैन बी रिटन एज टू इंटू टू, फोर इंटू वन, तो माने वी हैव थ्री फैक्टर्स टू फोर एंड वन। So which have more than two factors, they are composite number, which have exactly two factors, उनको हम prime number बोल देते हैं। and one जो है it is neither prime, ना वो prime है nor composite, ना ही वो composite number है, क्योंकि one का factor is only one, right? So it's neither prime nor composite। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो की एक प्रॉपर्टी की। सो यूजुअली व्हाट आर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ टू, जैसे टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। बट जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, जीरो को भी हम इवन नंबर मानते हैं। सिमिलरली वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, these are called as your odd numbers. So zero is considered an even number, please remember this thing। ठीक है, अब let us go ahead and talk about the set theory। set theory के बारे में बात करते हैं। when we talk about set theory, the first thing that we have to understand is what is a set। एक set होता क्या है? a set is basically, सबसे important part है बेटा कि it is well defined, इसका well defined होना जरूरी है। it is a collection of objects, राइट। सो सबसे पहले इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड माने अगर मैं बोलूं कि राइट अ सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, या राइट अ सेट ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये एक सेट नहीं है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। फॉर यू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट एंड फॉर मी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट, आपके लिए और मेरे लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अलग होंगे। सो देयरफॉर वी कैन गो एंड वी कैन से कि दीज आर नॉट सेट, ये सेट नहीं है। बट व्हेन आई गो एंड व्हेन आई से, जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि राइट अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स या राइट अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो हाँ ये एक सेट है, दीज आर सेट बिकॉज दीज आर डिफाइंड, ये हमारे अकॉर्डिंग डिफाइंड। आई नो कि इवन नंबर विल बी टू, फोर, सिक्स, एट, वन, थ्री, फाइव, सेवन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट कम्स इन सेट इज दैट इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसका डिफाइंड होना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। इट हैज टू बी वेल डिफाइंड, राइट। दूसरा चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स हैव टू बी यूनिक। जब सेट में यूनिक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, व्हेन वी डोंट हैव यूनिक एलिमेंट्स, देन आल्सो वी विल टेक देम एज यूनिक एलिमेंट्स, हम उनको यूनिक एलिमेंट्स की तरह ही लेंगे। माने व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं दैट लेट्स से दैट आई हैव अ सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं टू, फोर, टू, टू, सिक्स, फोर, टू, एंड आई हैव अ सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं टू, फोर, सिक्स।
तो बेटा एक्चुअली दीज टू सेट्स आर इक्वल, ये दोनों सेट सेम ही हैं। बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट सेट, जब भी हम सेट की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज गो अहेड एंड वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द यूनिक एलिमेंट्स, हम सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेट ए, जब हम सेट ए की भी बात करते हैं, वी नोटिस दैट द यूनिक एलिमेंट्स आर ओनली 2, 4 एंड 6। सिर्फ यही तो तीन यूनिक एलिमेंट्स हैं, 2, 4 एंड 6। So set A ka, when I write down the set comes out as 2, 4 and 6. We are only going to take distinct elements, हम सिर्फ unique elements, distinct elements ही लेके चलेंगे। तो आइए देखिए जरा इसको। So we can go ahead and say कि set is a well defined collection of objects and it only has unique elements. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजुअली जब भी हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, whenever we go ahead and we represent a set, we notice that a set is always represented by capital alphabet। तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि सेट को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ वॉइड सेट, जिसको हम एक नल सेट भी बोल के चलते हैं। A null set or a void set is also called as an empty set, इसको हम empty set भी बोलते हैं। This basically is a set which has no element in it, जो एक खाली सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एक null set या एक void set भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक null set में number of elements, how do we represent number of elements? We represent number of elements by like this, ऐसे कि what are the number of elements in A। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा तो हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब हम लिखते हैं कि दिस इज अ नल सेट, तो नल सेट का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट विल बी 0। उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ नल सेट। जैसे अ कलेक्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन अ बॉय कॉलेज, अब बॉय कॉलेज में तो देयर कैन नॉट बी एनी गर्ल स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली ये एक एम्प्टी सेट है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉय कॉलेज विल बी 0, तो इसको हम एक एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। अब हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं जिसमें से फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। इट्स कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट। सो व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? A finite set is basically the process of counting different elements come to an end। अगर हम number of elements count कर सकते हैं तो उसको हम एक finite set बोल सकते हैं। If I can count them and that counting will come to an end, वो counting एक end पे आती है। जैसे set of first 5 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, तो काउंटिंग कम्स टू एन एंड ना, काउंटिंग एक एंड पे आ रही है। सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट रहेगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब ये है दैट वी आर गोइंग अहेड एंड टेकिंग ऑल एलिमेंट्स which belong to सेट ए एंड सेट बी। तो अगर मुझे यूनियन बिटवीन सेट ए एंड बी निकालना है, सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द एलिमेंट्स। मैं वो सारे एलिमेंट्स लूंगी जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई गो हेड एंड इफ आई टेल यू कि सेट ए जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 है और सेट बी जो है वो 5, 6, 7 एंड 8 है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सिमिलरली सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ए जो है वो है 1, 2, 3 और सेट बी जो है वो है 3, 4, 5, 6, तो ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखना बेटा, सेट कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट में सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो विच मीन्स आई डोंट हैव टू टेक 3 ट्वाइस, मेरे को 3 दो बारी लेने का जरूरत नहीं है। आई कैन टेक 3 वंस। सो विच मीन्स दैट आई विल गो अहेड एंड गेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देयर इज नो नीड टू टेक 3 2 टाइम्स। 3 को दो बारी लिखने का जरूरत नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट 3 बिलोंग्स टू ए एंड बी, 3 ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, बट व्हेन यू राइट यूनियन यू हैव टू राइट ईच एलिमेंट डिस्टिंक्ट। एक ही बारी लिखना है, यूनिक टाइम्स लिखना है। सो दैट बिकम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स यू ओनली गो हेड एंड यू टेक कॉमन एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी का बेसिकली मीनिंग हो जाता है दैट द एलिमेंट शुड बिलोंग टू ए एंड द एलिमेंट शुड बिलोंग टू बी। ए को भी बिलोंग करे और
बी को भी बिलोंग करे एंड इट शुड बिलोंग टू बी, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। जैसे अगर इफ आई हैव अ सेट ए 1 2 5 6 एंड आई हैव अ सेट बी 2 5 7 9, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 and 5 बिकॉज दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। वेन डायग्राम को देखते हुए इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस थिंग डायग्रामेटिकली, तो ए ये है और बी ये है, सो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना हुआ तो ए यूनियन बी कैन बी दिस, एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी दिस। ठीक है, सो दिस पार्ट आई कैन गो अहेड एंड आई कैन से इज ए इंटरसेक्शन बी, और पूरा ब्लू रीजन ले लू, सो दैट इज माई ए यूनियन बी। Now we have an important property जो हमें याद रखनी होगी, which basically goes ahead and says that if I have to find number of elements in A union B, अगर मुझे number of elements A union B में निकालने हैं, so it will be number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, और इसको हम बोल सकते हैं that this is the formula for A union B। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। सो इफ वी हैव टू गो अहेड एंड इफ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, माने अगर मुझे निकालना है a माइनस बी, सो इट मीन्स यू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम a। आप अगर b के एलिमेंट्स को हटा दोगे a में से, इफ यू विल रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम a, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज a माइनस बी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेसिकली, सो लेट्स गो अहेड एंड से कि मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए इज 1 2 3 5, एंड सेट बी है, सेट बी इज 2 3 8 9। तो ए माइनस बी मीन्स आपने बी का एलिमेंट्स को हटा दिया फ्रॉम ए, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन ए, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3 and 2, these are present in A, so when I will do A minus B I will get 1 and 5, एंड हम बोल सकते हैं दैट दिस विल बी बेसिकली a माइनस बी, ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा। ओके, नाउ बेसिकली सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो अहेड एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट डू दिस इलस्ट्रेशन क्विकली। एक बार हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि यू आर गिवन ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये क्वेश्चन बोल रहा है दैट बी इज बी सी एंड डी। तो व्हाट विल बी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माने ए के भी सारे एलिमेंट्स लोगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स लोगे, सो इट मीन्स यू विल टेक ए, यू विल टेक बी, यू विल टेक सी एंड यू विल टेक डी। अब बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लोगे। सो इफ आई गो अहेड एंड इफ आई फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो इट विल बी बेसिकली बी एंड सी। नेक्स्ट बोलता है फाइंड ए माइनस बी, तो ए में से बी का एलिमेंट्स यू हैव टू रिमूव, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो व्हाट विल यू गो अहेड एंड गेट, बेटा ए मिलेगा, बी विल बी रिमूव्ड, सी विल बी रिमूव्ड, तो यू विल ओनली गेट ए एंड बी माइनस ए, माने फ्रॉम बी यू हैव टू रिमूव एलिमेंट्स ऑफ ए, बी में से ए के एलिमेंट्स को हटाना है। सो व्हेन यू विल गो अहेड एंड डू दैट, बी में से अगर ए के एलिमेंट्स हट जाएंगे तो बी विल बी गॉन, सी विल बी गॉन, और आपको मिल जाएगा डी। आप एक बात नोटिस करो यहाँ पे कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी, इसको हम a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं a में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दूं a और b वाले, तो दैट इज ऑल्सो a माइनस b। यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड चेक। देखो a था a b c, और मैंने उसमें से उनके कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया, देन आई एम गेटिंग a। तो मतलब व्हेन आई रिमूव द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम ए, जब मैं ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देती हूँ, सो व्हाट आई विल गेट, जो मुझे मिलेगा दैट विल बी बेसिकली ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं, वी कैन गो अहेड एंड लुक इट थ्रू अ वेन डायग्राम ऑल्सो। तो अगर ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, सो फ्रॉम ए आई हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी, मुझे ए में से बी को हटाना है। सो आफ्टर आई रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी, मेरे पास ये वाला ए पार्ट बच जाएगा, आई विल बी लेफ्ट अप विद दिस। ठीक है, और आप देख सकते हो, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड नोटिस कि ये यही तो है a माइनस ये कॉमन पार्ट a इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी को हम a माइनस a इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो अहेड एंड से दैट। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स की। सो डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स बेसिकली क्या बोलता है, व्हाट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स से, कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं,
Then b is divisible by a if b can be written as some k times a. बहुत सिंपल रूल है कि when will be 6 divisible by 3? If 6 can be written as some number times 3, तो ही तो 6 will be divisible by 3 ना. So if 6 can be written as, suppose in this case 2 into 3, तभी तो 6 is divisible by 3. When is 9 divisible by 3? If 9 can be written as, if 9 can written as some number into 3, तभी तो 9 will be divisible by 3. तो जब हम divisibility की बात करते हैं, then we just go ahead and say that a number will be divisible if b is equal to k times a. अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं b equal to k times a, then it will be divisible. ठीक है. इन जनरल हमारे पास एक रूल आ जाता है that any number b, कोई भी नंबर b को वी कैन राइट k टाइम्स a प्लस r, जहां पे हमारा जो r होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द रिमाइंडर. r को हम रिमाइंडर बोल देते हैं. वी कैन कॉल r एज रिमाइंडर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करते हैं दैट फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 9 एज 2 टाइम्स 4 प्लस 1. माने अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करती हूं, सो आई विल गेट 2 हियर and 1 as the remainder. So it is not completely divisible. कुछ गैप बच रहा है, that is 1 का. So only and only if this remainder is 0, अगर ये remainder 0 हो जाता है, that means b is equal to k times a हो जाता है, then we say that b is divisible by a. तब हम बोल सकते हैं कि b a से डिवाइड होता है. ठीक है. It's a very small thing but important thing. Okay. Now come back. Now let's go ahead and let's talk about certain important algorithm. तो अब हम बात करने वाले हैं what is log. log की कुछ बात कर लेते हैं. Let's say a is a positive real number other than 1 and a to the power b is equal to some c. अगर मैंने a to the power b को c लिखा, then we can write log c to the base a as b. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. टेक एन एग्जाम्पल. इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स से दैट आई नो कि 10 टू द पावर 2 इज 100. इसको इंग्लिश में लिखते हैं. लेट्स राइट दिस इन इंग्लिश. सो टू व्हाट पावर शुड 10 बी रेज्ड टू गेट 100? 10 को हम किस पावर से रेज करें कि मुझे 100 मिल जाए? टू व्हाट पावर शुड 10 बी रेज टू गेट 100? So we notice that 10 should be raised to the power 2 to get 100. अगर मैं 10 को 2 से रेज करूंगी, 10 into 10 करूंगी, I will get 100. So in terms of log, what I can write is that log 100 to the base 10 is 2. ये इसका मीनिंग है. सो व्हाट लॉग इज गोइंग अहेड एंड टेलिंग अस, ये लॉग क्या बताता है? लॉग गोज अहेड एंड टेल्स अस दैट 10 टू द पावर 2 इज 100. 10 टू द पावर 2 इज 100. तो जब हम लिखते हैं log 100 to the base 10 is 2, it means कि 10 to the power 2 is 100. तो अब यहाँ पे लेट्स कम बैक. सो यहाँ पर अगेन जनरल टर्म्स में if a to the power b is c, अगर a की पावर b रेस करके c मिलता है, so we can say log c to the base a will be b. ये देखो will be this b, ये b ही तो यहाँ 2 है, this b is nothing but 2 here, है ना. और ये c जो है this 100 वो ये रहा, और ये a this 10 is coming here. So basically this is what is the meaning of log. यही log का meaning है. एक और example let's go ahead and take. So we know कि 9 to the power 2 is 81. So log 81 9 will be 2. तो ये क्या बोल रहा है कि when 9 is raised to the power 2, जब हम 9 to the power 2 करते हैं तो हमें 81 मिलता है. We go ahead and we get 81. This is the meaning of log. इसको हम log बोलते हैं. ठीक है. Now once you go ahead and you understand कि what is log, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना इस केस में, that we can go ahead and we can understand some properties of log. अब पहला प्रॉपर्टी ये है that the first property is that this x should be greater than 0 for the log to be to be meaningful. अगर हमें कुछ मीनिंग निकालना है तो ये जो हमारा x है इसको greater than 0 होना जरूरी है. The base cannot be 1, a cannot be 1,
एंड ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम वेरी कॉमनली डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वी विल यूज देम, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज दैट x शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव एंड a कैन नॉट बी 1, a 1 नहीं हो सकता है। एक और चीज है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हेन वी गो टूवर्ड्स जीरो, जब x जीरो की तरफ जाता है तो हमारा जो log का फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है एज लॉन्ग एज a इज ग्रेटर देन 1। एंड जो हमारा log का फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है इफ a इज बिटवीन 0 एंड 1, if a is between 0 and 1. So these are two very very important properties. Again, domain range के questions में ये बहुत ज़्यादा important है and you have to remember them. So basically, if I go ahead and if I have to plot a log function, अगर हमें log function को plot करना होगा, how does a log function basically go ahead and do? एक log function basically ऐसा दिखता है, ये 1 है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज बिटवीन 0 एंड 1। सो व्हेन x इज गोइंग टूवर्ड्स 0, जब हम x को अप्रोच करवा रहे हैं 0 की तरफ, देन log x इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? व्हेन x इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो फिर log x इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, so these are the properties that you have to go ahead and you have to remember, ठीक है। ओके, नाउ सो रीड दिस, एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से, कीप अ नोट ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स एज वेल। अब हम बात करेंगे आगे दैट whenever we talk about any expression, तो उसका log का हम बेस कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ कैन वी गो ahead and how can we change the base of log? So let's go ahead and say that suppose log b का बेस a है और मुझे कोई बोल देता है कि चेंज द बेस टू एक्सपोनेंट, तो व्हाट आई कैन गो ahead and do ना, कि आई कैन राइट log b अपॉन log a, और इसका बेस हमने चेंज करके e कर दिया। सो वेन एवर आई हैव टू गो अहेड एंड चेंज द बेस ऑफ log फंक्शन, अगर मुझे log फंक्शन का बेस चेंज करना है, what I can go ahead and do that this b will come in the numerator, ये a will come in the denominator, और ये e और e से बेस चेंज हो गया। अगेन इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, दैट इफ आई गो अहेड एंड इफ आई से log 100 टू द बेस 10, मुझे पता है कि ये 2 होता है, बिकॉज 200 10 टू द पावर 2 विल गिव यू 100, ये तो हमें पता है। नाउ इफ आई गो अहेड एंड आई टेल यू कि नो बेटा चेंज द बेस टू से 5, मुझे बेस 10 का नहीं चाहिए, मुझे बेस 5 का चाहिए। सो नाउ आई कैन से कि log 100 टू द बेस 10 विल गिव द सेम आंसर, सेम आंसर आएगा अगर इसकी जगह आई हैव log 100 टू द बेस 5 एंड log 10 टू द बेस 5। माने व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी इट विल गिव यू 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी इट विल गिव यू 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब हमने क्या किया है, हमने बेस बेसिकली चेंज कर दिया, वी हैव चेंज द बेस। पहले हमारा जो बेस था वो 10 था, नाउ आवर बेस इज एक्चुअली 5। सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन चेंज द बेस ऑफ द log फंक्शन, हम log फंक्शन के बेस को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमारा log 100 टू द बेस भी 100 ही है, माने दीज टू नंबर्स आर सेम, तो ऑफ कोर्स 100 टू द पावर 1 ही तो 100 होता है, या log 10 टू द बेस 10 है तो 1, 10 टू द पावर 1 ही तो 10 होता है। सो व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी नोटिस दैट इट इज log a टू द बेस a, मतलब बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, देन द आंसर विल बी 1, उस केस में हमें आंसर 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोल दूं कि व्हाट इज log 1 टू द बेस a, तो दैट विल बी 0 बेटा। log 1 इज ऑलवेज 0 वट एवर बी द बेस, बेस कुछ भी क्यों ना हो जाए, log 1 का वैल्यू 0 आता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट इफ आई हैव log x टू द बेस a, अगर हमारे पास ये है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log a टू द बेस x, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें बेस को रेसिप्रोकेट करना है तो हम फ्रैक्शन को भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। माने log 100 टू द बेस 10 इज नथिंग बट 1 बाय log 10 टू द बेस 100। अब ध्यान से सीख लो एक बात को, बहुत इजी है ये।
टू व्हाट पावर शुड 10 बी 100 बी रेज टू गेट 10, यही तो बोल रहा है। ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि हम 100 का क्या पावर लगाएं कि हमें आंसर 10 मिल जाए। तो 100 का पावर जब हाफ होता है तो वी गेट द आंसर एज 10, हमें आंसर तभी तो 10 मिलता है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे आई विल गेट हाफ। सो इफ आई जस्ट पुट हाफ यहाँ पे, इफ आई पुट यहाँ पे 1/2, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। So it means that I am getting the same answer that I was getting earlier. जो पहले आंसर आ रहा था वही आंसर अभी भी आ रहा है। So we can go ahead and we can actually say that whenever we have to alter the base को reciprocate करना है। अगर मेरे पास है log b to the base a, so this is nothing but 1/log a to the base b। ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, these are the same things। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लॉग से रिलेटेड, दे आर एक्चुअली द फॉर्मूलाज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आ जाता है log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो इसको हम log m प्लस log n भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाता है log m बाय n, तो इसको हम log m माइनस log n भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है log m टू द पावर n, तो n जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, सो इट विल बिकम n log m। ठीक है। अगर सपोज बेटा हमारे पास आ जाता है कि log b टू द बेस a, थोड़ा जगह क्रिएट करते हैं। सपोज इफ वी गेट log b टू द बेस a, तो इसको हम log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, राइट? सो द log b टू द बेस a कैन बी रिटन एज b टू द बेस c एंड c टू द बेस a। ठीक है। एट लास्ट, supposedly if I go ahead and if I have log n टू द बेस a टू द पावर k, तो इसको हम log n टू द बेस a डिवाइडेड बाय k भी लिख सकते हैं। यू विल नोटिस कि जो हमारी पहले ऊपर वाला फॉर्मूलाज है, दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3, दीज आर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला, स्पेशली इफ यू हैव टू डू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला 1, 2, 3 जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टेक अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सो इट सेज सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, और क्या क्वेश्चन है बेटा? log x minus 2 to the base half should be greater than 2, should be greater than 2। तो अब हम क्या करेंगे दैट, बिकॉज अब ये देखो यहाँ पे 2 है, मुझे किसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी log चाहिए, somehow I need log on the right hand side, और मुझे बेस को सेम करना है, मुझे राइट हैंड साइड पे भी बेस हाफ का चाहिए। सो बेसिकली मेरे को 2 को कुछ इस तरीके से चेंज करना होगा दैट आई एम एबल टू राइट इट इन लॉग, मैं उसको लॉग के फॉर्म्स में लिख पाऊं, एंड आई एम एबल टू ब्रिंग द बेस टू हाफ, मैं उसके बेस को भी हाफ कर पाऊं। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज आई कैन से लॉग टू व्हाट पावर कैन हाफ बी रेज्ड सो दैट आई गेट 2। ऐसा क्या हो कि मैं, बेस मुझे हाफ ही चाहिए, हाफ के बाद यहाँ पे क्या नंबर आए कि मेरा आंसर 2 है। सो दैट मीन्स हाफ टू द पावर 2 शुड गिव मी दिस नंबर, यही तो होना चाहिए। सो हाफ टू द पावर 2 विल गिव मी दिस नंबर जो भी यहाँ पे आना चाहिए, दैट मीन्स 1/4। सो यहाँ का जो मेरा फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा दैट विल बेसिकली बी 1/4। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? इज इट मेकिंग सम सेंस? हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम बेसिकली बोल रहे हैं दैट हाफ टू द पावर 2 गिव्स मी दिस नंबर, मुझे ये नंबर भरना है। तो अब मुझे समझ में आ गया दैट ये जो 2 यहाँ पर है, आई हैव अंडरस्टूड दैट दिस 2 दैट आई एम गेटिंग हियर, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग, इसको मैं इस चीज से रिप्लेस कर सकती हूँ, आई कैन रिप्लेस इट विद दिस। इज इट क्लियर? सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन नाउ इज कि ये जो मेरा क्वेश्चन था ये बहुत ही सिंपल कर दिया है हमने। सो वी हैव रिटन log x माइनस 2 टू द बेस हाफ ग्रेटर देन log 1/4 टू द बेस हाफ। इस वजह से क्या हुआ, अब हमने क्या किया दैट नाउ वी नोटिस कि यहाँ पे x माइनस 2 एंड यहाँ पे 1/4 आ रहा है, एंड नाउ वी कैन इक्वेट देम, अब हम इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज द बेस इज द सेम, क्योंकि बेस सेम है। So now I can go ahead and say कि this means that x minus 2 should be greater than 1/4, या फिर x should be greater than 2 plus 1/4,
या फिर x should be greater than 4 into 2 8 plus 1 9 by 4, and this will be the answer to this question. So x should be greater than 9 by 4. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? Is it clear? Okay, now we also go ahead and we also get that at the same time जो भी हमारा नंबर यहाँ आ रहा है, this must also be greater than 0. So हमारा जो x minus 2 है, whatever is coming in this bracket, जो भी इस bracket में आ रहा है, बेटा one thing, sorry, I just have to highlight, ये थोड़ा सा मैंने साइन गलत कर दिया. Whenever we equate these, जब हम इनको x minus 2 और 1/4 को जब हम log में रख के equate करते हैं, when we equate the equations, the signs change, inequality का sign change हो जाता है. So here it should have been less than. The inequality sign will change. Now I want that जो भी bracket में आ रहा है, as we said, that has to be positive. So x minus 2 has to be greater than 0. It means that x has to be greater than 2. तो हमारे पास एक range आ जाती है that x has to be greater than 2, but it has to be less than 9 by 4. And this will be the answer to this question. इसको हम ऐसे solve कर सकते हैं. ठीक है? Is it clear? Any doubt? Anyone? कुछ भी problem log functions में? Anything which is not clear? Okay. अब हम क्या करेंगे? What we want to next do is called as a modulus function. Let us now go ahead and let us solve for a modulus function. So एक mod function क्या होता है? So if I have to write mod of x, अगर मुझे इसे open up करना है, so I can go ahead and write this as minus x if x is less than equal to 0 and x when x is greater than 0. Similarly, suppose if I have mod of x minus a, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x minus a if x is greater than equal to a and minus of x minus a when x is less than a. Like this, we can go ahead and solve a modulus function. अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन का भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है. व्हाट्स द बेसिक प्रॉपर्टी? सपोज एक मॉड फंक्शन का मैं दोबारा मॉड निकालू. मॉड मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू निकालना. तो अगर मैं एक मॉड फंक्शन का दोबारा मॉड निकालती हूँ, इफ आई फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दोबारा अगेन आई फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दैट विल बी सिंपली फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू वंस. माने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और फिर से एब्सोल्यूट निकालो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब when you find the absolute value of -4, it is 4, और उसका फिर से absolute will just be 4. And this is nothing but -4 को एक ही बारी absolute value निकालना. To find the value of -4 only once, to find the absolute value only once, or finding it twice, it does not matter. एक बारी निकालो या दो बारी निकालो, how does that matter? Right? So we can actually go ahead and say that finding it twice or finding it once does not matter. Similarly, we can go ahead and say that we can go ahead and say, and this is a very very important property, that mod of x plus y जो होगा, it will be less than equal to mod of x plus mod of y. ये बहुत ही important है and I can just prove this to you. So जैसे for example, let's say कि x जो है वो 5 है और y जो है वो -3 है, तो हम नोटिस करेंगे कि x plus y जो होगा वो 5 plus -3 माने 2 होगा, and its mod, अगर मेरे को इसका मॉड निकालना है तो वो 2 आएगा. बट व्हेन आई फाइंड मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, तो दिस विल बी मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ -3 माने 5 प्लस 3 माइनस 8 माने इट विल बी 8. सो वी कैन गो अहेड एंड से दैट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है, इट विल बी मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. Similarly, if I have xy का mod, x by y का mod, तो this is nothing but x का mod divided by y का mod. Similarly, suppose if I go ahead and if I ask you कि मेरे पास x into y है and I have to find its mod, तो this is nothing but mod of x into mod of y. सिर्फ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे x plus y mod will be less than equal to mod x plus mod y. This is a very very important property.
ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी वेल। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरवल्स की। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट इंटरवल्स। तो जब हम इंटरवल्स की बात करते हैं, बेसिकली देर आर टू काइंड ऑफ इंटरवल्स, राइट? द फर्स्ट इंटरवल विच वी गो अहेड एंड विच वी हैव, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ क्लोज्ड इंटरवल। और जो सेकेंड इंटरवल होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन ओपन इंटरवल। सो क्लोज्ड इंटरवल क्या है बेटा? क्लोज्ड इंटरवल माने जो हमारे इंटरवल का लेफ्ट एंड राइट साइड है, वी विल ऑल्सो गो अहेड एंड इंक्लूड दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, इफ आई राइट -4 to 5 इन क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब ये है दैट इफ आई गो अहेड एंड इफ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन -2, -3, -4 and 1 2 3 4 5, so closed interval means you will take all values including -4 and -5. These are included. ये included है। But when I go ahead and when I say -4 to 5 in open interval, तो इनको हम in bracket से represent करते हैं, it means -4 and 5 are not included. इन दो को हमने include नहीं किया है। So it actually goes ahead and means not including -4 and 5, इन दो को इंक्लूड ना करते हुए what we go ahead and get, that is basically called as your open interval। ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल मींस एक जगह से ओपन है, एक जगह से क्लोज्ड है। सो इफ आई से कि x इज बिटवीन a एंड b एंड a इज इंक्लूडेड, माने a को तो इंक्लूड किया है बट b को नहीं किया। देन द अदर वन कैन बी x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, माने a इंक्लूडेड नहीं है बट b इंक्लूडेड है। These are called as my open close interval। ठीक है, we can also have infinite interval। Infinite means it is open ended at one side। एक में हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके खत्म होगा, where will it end। So for example, when I go ahead and when I say कि मेरा जो इंटरवल है वो फ्रॉम a to infinity है, ऑफ कोर्स infinity कोई नंबर नहीं है ना, infinity means not ending, है ना? So which means कि this will always be open। यहां से आई कैन हैव क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है और यहाँ पे ओपन भी हो सकता है, बट इंफिनिटी वाला साइड विल ऑलवेज बी ओपन, है ना? दिस साइड विल ऑलवेज बी ओपन। तो ये बोलता है कि मैं ए, जो मेरा एक्स है वो ए को इंक्लूड करते हुए जा रहा है, इट इज इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इंक्लूडिंग ए, बट एंड पता नहीं, वी डोंट नो वेयर इट विल एंड, एंड इज स्टिल इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली आई कैन से -infinity to a, सपोज it means all values on number line up to a। माइनस इंफिनिटी माने सारा नेगेटिव वैल्यूज, ऑल वैल्यूज अप टू ए, जब सब इंक्लूड हो रहा है, देन इट विल बी -infinity to a, एंड दीज विल बी कॉल्ड एज इनफाइनाइट प्रिंसिपल्स। अब हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बेसिकली गोज अहेड एंड सेज सबसे पहले कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग ये है कि ईदर a कैन बी लेस देन b और a कैन बी इक्वल टू b, ऑफ कोर्स। ठीक है, नाउ बेसिकली इफ वी गो अहेड एंड से कि a जो है वो b से कम है, a इज लेस देन b, b जो है वो c से कम है, देन वी कैन ऑल्सो से दैट a इज लेस देन c, राइट? ये भी बोला जा सकता है कि a जो है वो c से कम होगा। सिमिलरली सपोज इफ आई गो अहेड एंड से कि a इज लेस देन b, सपोज a b से कम है, एंड आई एड c ऑन बोथ साइड, तो नो प्रॉब्लम, ये इनइक्वालिटी भी होल्ड ट्रू करती है, दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। ठीक है, इफ आई गो एंड इफ आई से दैट a इज लेस देन b, a b से कम है, एंड इफ आई मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, तो बेटा साइन विल चेंज, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सो वी विल हैव -a ग्रेटर देन -b। अगेन दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव, इसको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। सो इफ आई से 4 इज ग्रेटर देन 3, माने -4 विल बी लेस देन -3। सो इनइक्वालिटी का जो साइन है इट विल रिवर्स इटसेल्फ द मोमेंट यू मल्टीप्लाई इट विथ -1। ठीक है, देन सपोज इफ आई गो अहेड एंड इफ आई से कि हमारा a जो है वो b से कम है,
and I raise it to some power and that power is positive. जैसे power can be 2, 3, 4, 5 positive power है, तो a to the power r will be less than b to the power r as long as r is positive. अगर r positive है, if r is positive, तो पावर को रेस करने से inequality will remain unchanged. inequality change नहीं होगी. But if the power is negative, then inequality will reverse. अगर power negative है, if r is negative, माने -1, -2, -3, -4, तो in that case, your inequality will basically go ahead and reverse itself. Inequality reverse हो जाएगी. Then we basically go ahead and have some properties. वो properties काफी interesting है and you have to go ahead and see those properties. The first property that we actually have is that a plus 1 by a has to be greater than equal to 2. Similarly, a plus 1 by a has to be less than equal to -2. These are for all a positive and these are for all a negative. अगर a एक पॉजिटिव नंबर है, if a is a positive number, then a plus 1 by a will always be more than equal to 2. आप कोई भी नंबर लेके देख लो. Suppose if I take let a be कुछ भी नंबर, हाँ, let a be 2. तो 2 plus 1 by 2 will be what? 2.5. Let a be 1. So 1 plus 1 by 1 will be 2. So this is greater than or equal to 2. Let a be half. तो हाफ प्लस 1 by 1 by हाफ मतलब हाफ प्लस 2 माने 2.5. यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय नंबर है ना, सो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाएगा, सो ये भी 2.5 देगा. So what we go ahead and what we notice in this case is that this becomes a rule. ये एक rule बन जाता है that a plus 1 by a will be actually greater than equal to 2. ठीक है. Similarly, if a is negative, जैसे let's take a to be -2, then a plus 1 by a will always be less than equal to -2. ये कुछ properties हैं which you have to remember. Now we have a property that if a1 is greater than b1, a2 is greater than b2, and so on. तो a1 plus a2 plus an will be greater than b1 plus b2 till bn. माने सपोज एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, 4 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 7, सॉरी ग्रेटर देन 5. तो देन 4 प्लस 5 प्लस 6 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 2 प्लस 3 प्लस 5. इट विल बी ग्रेटर देन 2 प्लस 3 प्लस 5 और इसी को हम एक प्रॉपर्टी करके लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग दिस एज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. ओके, नाउ ये इनइक्वालिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि इफ a इज ग्रेटर देन b तो a to the power n will be greater than b to the power n as long as n is positive. ठीक है. but a to the power minus n will be less than b to the power minus n. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज इफ आई गो अहेड एंड इफ आई टेल यू that 3 is greater than 2. ठीक है. So 3 to the power 2 will be greater than 2 to the power 2. Of course, 9 is greater than 4. But 3 to the power minus 2 will be less than 2 to the power minus 2. Of course, 1 by 9 is less than 1 by 4. है ना? So basically, if the power is positive, right? So inequality will remain same. If the power is negative, तो inequality will reverse itself. Inequality अपने आप को reverse कर लेगी. Okay. Similarly, another rule that we basically go ahead and have is that if a is greater than b, तो a to the power p by q will be greater than b to the power p by q. Okay, बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इसको सॉल्व करने का कोशिश करो. इट सेज mod 2x minus 1 is less than 3. अब जैसे ही हम इस मॉड को खोलेंगे, द मोमेंट आई विल ओपन अप दिस मॉड, सो आई विल हैव दैट 2x minus 1 will be between -3 and 3. तो जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x minus 1
will be between -3 and 3. अब अगर if I go ahead and add 1 on both side, अगर मैं दोनों साइड पे 1 को add कर देती हूँ, I will get -2 less than 2x less than 4. And if I divide by 2 on both side, अगर मैं हर जगह 2 से divide कर देती हूँ, so I will get -1 less than x less than 2. So basically we have got where x is lying. And it is an open set. So x belongs to -1 to 2. x -1 से 2 के बीच में रहेगा. एक थोड़ा सा complicated question है which you can go ahead and you can see. So it says that x square upon x minus 1, this is less than equal to 1. This is less than equal to 1. So now what we can go ahead and what we can do is that इसको solve करने के लिए, to go ahead and solve this thing, what we can do is that we can say that x square, you remember जब हमारे पास p by q in mod था, it can be written as mod p by mod q. तो इसको हम लिख सकते हैं x square by x minus 1 less than equal to 1. अब हमें पता है that whenever we square any number, we know the square of any number is always non-negative. तो माने एक्स स्क्वायर का मॉड लेने का तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, पहले ही नॉन नेगेटिव है. सो बेसिकली द मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज ओनली एक्स स्क्वायर. वो नेगेटिव वैल्यूज तो वैसे ही नहीं है, सो इट्स रिमूव्ड. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल टू 1. एंड दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस 1. mod में x minus 1. Now you can go ahead and just solve this thing. इस चीज को आप solve कर सकते हो. Remember, denominator cannot be 0. तो क्योंकि denominator 0 नहीं हो सकता, it actually goes ahead and means that x cannot be equal to 1. This is another thing which we have to keep in mind. So यहाँ पे जब भी हम इसको solve करें, whenever I am solving this, I am just keeping in mind that x cannot be equal to 1. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने के लिए. सो आई विल जस्ट शो यू द ग्राफ फॉर दिस वन. एक बार इसके ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं. व्हेन वी मेक ग्राफ फॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज बेसिकली अ पैराबोला. ये एक पैराबोला निकल के आता है. सो वेन एवर आई हैव टू गो एंड मेक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट लुक्स लाइक दिस. ये ऐसा दिखता है, राइट. whenever I have to make a graph for any mod function, जैसे अगर mod x बनाना है, so mod x looks like this बेटा. हम x का सिर्फ absolute values लेते हैं. So when I take x as -1, absolute value 1 होगा. अगर x को मैं +1 लूँ या -1, absolute value will be 1. जब हमने x को -1 लिया तो भी I am getting answer as 1. जब हमने x को 1 लिया तो भी I am getting the answer as 1. ठीक है. So what we go ahead and what we basically notice is that the mod of x, जब हम x का mod लेते हैं, we always get a positive number, and therefore वो जो बन के आता है it actually looks like this. ठीक है. अब similarly अगर मुझे x minus 1 को प्लॉट करना है, so वो ऐसा ही दिखेगा, it will look like this only, but it will start at 1. Why at 1? Because only when x is 1, then mod of x minus 1 will be 0. है ना? So this will look like this. It will look like this. This is mod of x minus 1. And now the question says that I need that region. मुझे वो वाला point चाहिए where x square is less than or equal to x minus 1. Right? So if I go ahead and if I see that region, अगर मैं उस region की बात करूं, so you have to notice this कि ये जो है, this is mod of x minus 1. And ये जो है, this is y is equal to x square. And at these points, they're becoming equal. इस point पे ये equal हो रहे हैं. Right? And now I have to find those points where x square is या तो less, it's falling below x minus 1 या equal to it. Right? So therefore, we can go ahead and we can notice that the region will come out to be this. When you solve it, just in go, you have to find out the points where you equate और उससे नीचे का region, you will get the region to be this. Right?
सो वी हैव फाउंड आउट दैट रीजन, हमने वो वाला एक्स स्क्वायर का वैल्यूज निकाला है. वी हैव फाउंड आउट दोज एक्स स्क्वायर विच लाई बिलो द कर्व ऑफ x माइनस वन, माने जो मॉड ऑफ x माइनस वन से कम है, दोज वैल्यूज विच आर लेस देन x माइनस वन, वी फाउंड दोज वैल्यूज. सो यू सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस क्वेश्चन इज, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एंड दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ योर बेसिक्स, ये आपको आना जरूरी है, यू शुड नो दिस वे. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स कंटिन्यू. So now we go ahead and now we talk about the wavy curve method. And I would like to teach this wavy curve method through a question. इसको एक क्वेश्चन से हम करके देखेंगे. So I am given a function. इस फंक्शन को जरा देखो. What is the function? जो फंक्शन हमें दिया गया है f of x, this is given as x minus 3 into x plus 2 into x plus 5 upon x plus 1 into x minus 7. Right? What I have to do is I have to find those x such that fx is greater than 0. मुझे वो x's निकालने हैं such that fx is positive. अब बहुत ध्यान से देखना, listen to me very very carefully. X can be positive, function can be positive when two things happen. Both numerator and denominator are positive. Both numerator and denominator are negative. एक फंक्शन पॉजिटिव कब होगा? जब so 4/2 is also positive and -4/-2 is also positive. तो फंक्शन विल बी पॉजिटिव. एक फंक्शन तब पॉजिटिव होगा जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है. लेट्स फोकस ऑन द न्यूमरेटर. जो हमारा न्यूमरेटर है इट विल बी पॉजिटिव. न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव तब होता है बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी थिंग्स. व्हेन ऑल आर पॉजिटिव, जब सारे पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, या फिर बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये भी पॉजिटिव होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव हो जाता है. सो बेसिकली नाउ गिवन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हमें जब ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, वी हैव टू गो अहेड एंड वी हैव टू सॉल्व. हमें इसको सॉल्व करना है. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव कब होता है. इट्स अ बिग क्वेश्चन. तो इस बिग क्वेश्चन को मैम कैसे सॉल्व करें, हाउ डू वी सॉल्व इट? तो इसको बहुत सिंपल है सॉल्व करना. बेटा कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट गो अहेड एंड इक्वेट ऑल ऑफ देम टू जीरो. तो अगर हम इन सबको जीरो अलग अलग करें, सो वी विल गो अहेड एंड वी विल गेट x minus 3 equal to 0, x equal to 3, x plus 2 equal to 0, x equal to -2, x plus 5 equal to 0, x equal to -5, x plus 1 equal to 0, x equal to -1, x minus 7 equal to 0, x equal to 7. So I have gone ahead and I've got some values with me: -5, -2, -1, 3 and 7. I've got these 5 values. मेरे पास ये 5 values आ गया when I equated it to 0, जब मैंने उसको 0 से equate किया. Now what you will go ahead and do is that let me just put it like this. Now you will go ahead and you will draw a wavy curve. हमें एक wavy curve बताना है. ठीक है? And ma'am, how do we go ahead and how do we draw this wavy curve? So to draw the wavy curve, जो हमें ये wavy curve बनाना है, we draw a curve starting from right hand side, which changes its position at these points. हम एक कर्व बनाएंगे and which will change its position at these points. So we start like this
and we draw a curve. ऐसे. It has to pass through these points, beta. This is 3 here, huh? And where all the function will be positive? जहां पे ये ऊपर है. So between -5 to -2, between -1 to 3, after 7. देख लो after 7. So wherever the function is above, वहां पे it will be positive. Similarly, where will be the function negative? Less than -5. Then between -2 to -1. Then between 3 to 7. Here the function will be negative. So basically what we have gone ahead and done is we have told where the function will be positive and where the function will be negative. Using the very simple wavy curve method. जिसमें हमने कुछ नहीं किया. We equated each of them to 0. हमने हर एक को 0 से equate किया. And after equating each one of them to 0, सबको equate करने के बाद 0 से, we just got ahead and we plotted a curve. जहां जहां ऊपर it's positive, wherever it is down it's negative. ठीक है. Okay, now let's go ahead and talk about the factor theorem. Let's understand कि एक factor theorem क्या होती है. So whenever we go ahead and whenever we talk about factor theorem, एक factor theorem बहुत ही simple कहती है that if px is any polynomial, right, and to check if px is divisible by x minus alpha, तो what we will go ahead and do, हम क्या कर सकते हैं, we are basically going to go ahead and we are going to put this x minus alpha equal to 0, right? We will go ahead and get some value of alpha and we will put it back in this polynomial. If at that polynomial I get 0, then we will say that this x minus a is a factor of this polynomial. तो हम बोल सकते हैं कि x minus a divides the polynomial. एक example ले लेते हैं. Let's take an example. So it says check whether 3x minus 1 is a factor of 27x to the power 3 minus 9x square minus 6x plus 2. तो बहुत सिंपल है बेटा. What will we do? We will first put 3x minus 1 equal to 0. इसको 0 equate करेंगे. So I will get x is equal to 1 by 3. Put x equal to 1 by 3 in this. इसमें डाल दो. So I will get 27 1 by 3 to the power 3 minus 9 1 by 3 to the power 2 minus 6 1 by 3 plus 2. So 27 by 27 minus 9 by 9 minus 2 plus 2. I'm getting answer as 0. If I get answer as 0, अगर मुझे answer 0 मिले, then we can go ahead and we can say कि yes, this is a factor of this. ये इसका factor बनता है. We can go ahead and we can say that. Okay. Now, once we have gone ahead and understood the basics well, ये हम बाद में करेंगे. This was basically to help you understand what basics of maths are there. एकदम basic level हमने maths का आज शुरू किया. And we basically went ahead and we talked about certain basics of maths. Maths के basics को समझने के लिए you need to understand the number system, you need to understand logs, you need to understand कि हम basic inequalities को कैसे solve करते हैं, you need to understand modulus. Is this clear? If this is clear, I'll take a 10-15 minutes break and then we will go ahead and we will move in detail and we will start with set theory. हम सेट थ्योरी को डिटेल में एकदम पढ़ेंगे. वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अभी तो हमने बेसिक में किया है, बट नाउ वी विल गो एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज सेट थ्योरी, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट. We'll start with set theory. We have covered the basics of maths which are required to go ahead and understand any chapter. Okay, fine. So we'll take a 10-15 minutes break. Then we will catch up again and we will continue. Okay.
Okay, so let's now go ahead and begin with the chapter on set theory. Set theory से discussion हम आगे आज start करते हैं. So we have already defined what is a set. We understand कि एक set क्या होता है. We have already defined which are not a set and set को हम कैसे represent करते हैं. We have also defined कि natural number है तो it will be represented by n, integer by z, rational number by q, irrational number by q dash, real number by r, positive real number by r plus, negative real number by r minus, and complex number by c. Complex number are those number which are not real number. जो real number नहीं होते हैं वो complex number होते हैं. तो ये सब हमने already define कर दिया है. We have already defined all these things. अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की कि हाउ डू वी गो अहेड एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट. एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अ सेट कैन बेसिकली बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स. दो तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के. द फर्स्ट फॉर्म दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट अ सेट दैट इज कॉल्ड एज अ रोस्टर फॉर्म, जिसको हम एक टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैबुलर फॉर्म. अ रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म मीन्स जिसमें हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन टेल्स मी राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5. दीज आर द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. इस तरीके से if someone tells me write the set of first 10 even numbers, 10 even numbers हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऐसे करके. सो वेन एवर वी राइट इट इन कर्ली ब्रैकेट, जब हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड एज टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. उसको हम टैबुलर या रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं. जो हमारे पास दूसरा आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर और रूल मेथड. इसको हम सेट बिल्डर या रूल मेथड भी कहते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्चुअली उसको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी से दैट एक सेट ए इज 2x such that x belongs to natural number. इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यूज लेंगे हम वो नेचुरल नंबर होगा, बट हमारे सेट में वैल्यूज क्या आएंगी, दे विल बी 2x. दैट मीन्स 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 and so on and so forth. इस तरीके से सपोज इफ आई हैव टू राइट दिस सेट ए, तो मैं सेट ए को कैसे लिख सकती हूँ, x such that x is an odd number less than equal to 5. Set is all x such that x is an odd number less than equal to 5. तो जब हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, instead of writing like this 1 2 3 4 5, if I am writing x such that x is first 5 natural number, समझ रहे हो बात को? When I am going ahead and when I am writing it like this, then basically it is called as the other one which is the basically set builder form. इसको हम set builder form भी कहते हैं. Now we have two kind of sets. दो तरीके के हमारे पास सेट होते हैं. एक को हम बोल देते हैं फाइनाइट सेट और एक को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट. अ फाइनाइट सेट इज एनी सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं. जैसे अगर मैं सेट ऐसा लिख दूं 1 2 3 4, ये तो मुझे पता है ना that there are 4 elements in the set. Excuse me, I know कि इसमें 4 elements हैं. So when we know how many elements exist in the set, that is a finite set. Infinite set माने which cannot be counted, जो finite ना हो. जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि number of points on line, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, कैन यू काउंट दैट? ना, नो वन कैन काउंट इट. मैम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं पता वो कितने पॉइंट्स का बना. वी डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर. तो यस मैम, इसको हम बोल सकते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट सेट. ये एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. ठीक है. Now the next thing is basically called as cardinal number of finite set. Cardinality का क्या मीनिंग है? Cardinality basically goes ahead and asks how many elements are there in the set. तो जब हम number of elements को count करते हैं कि number of elements in set A, इसको हम cardinality बोलते हैं. This is called as cardinality of the set. तो suppose if I have a set A
विच इज 1 2 3 4, और कोई मुझे बोले कि कैलकुलेट द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, इस सेट का कार्डिनैलिटी बताओ, इट मीन्स आई हैव टू टेल व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और मुझे क्लियरली पता है दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 4, 1 2 3 4, तो द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट बिकम्स 4, हम बोल सकते हैं कि सेट का जो कार्डिनैलिटी है वो 4 होगा. Next, we basically have something which is called as equivalent set. Two sets are, अच्छा दो चीजें हैं, एक है equal set, एक है equivalent set. Two sets are equal if they have the same elements. उनके elements अगर same हैं then they are equal. जैसे element A में है set A है 1 2 3 and set B है 2 1 3. So they have the same number of elements and the same elements, number भी same है और elements भी same है. देखो 1 1 2 2 3 3. तो we can say that A and B are equal. But suppose if I tell you कि set A जो है वो है basically 1 2 3 और set B जो है वो है basically C D E. तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू वी सी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 3, बट ए एंड बी आर नॉट द सेम. ए और बी सेम नहीं है ना, दीज एलिमेंट्स आर सी डी ई, दीज एलिमेंट्स आर 1 2 3, तो एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स सेम नहीं है, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल. सो इस केस में व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल देन वी गो अहेड एंड वी कॉल देम एज इक्विवेलेंट सेट. तब हम उसको एक इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दैट एज इक्विवेलेंट सेट. सो इक्विवेलेंट सेट का क्या मीनिंग है, इक्विवेलेंट सेट मींस बेसिकली दो सेट्स व्हिच हैव द सेम कार्डिनल नंबर. अगर कार्डिनल नंबर सेम है, टू सेट्स हैव सेम कार्डिनैलिटी, देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से दैट दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स. But next we get some type of sets. जिसमें first type that we have that is called as a null set. A null set is basically an empty set which has no element. जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तभी तो वो ऑड है, सो इट विल बी अ एम्प्टी सेट. सिमिलरली अ सिंगलटन सेट इज एनी सेट व्हिच ओनली हैज वन एलिमेंट. अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड इफ आई रिप्रेजेंट अ सेट लाइक दिस 2 0, these only have one elements ना, तो इनको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं. The next is universal set. Universal set means all possible elements within discussion. जैसे अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ about some school students, तो all possible students in that school, जितने भी उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो सब मिला देंगे अगर हम, तो हम उसको सिंगलटन उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं. वी कैन कॉल दैट एज अ यूनिवर्सल सेट. ठीक है. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है पेयर सेट. पेयर सेट इज बेसिकली एनी सेट विच हैज टू पेयर्ड एलिमेंट्स, जैसे 1, 2, जैसे 3, 4, राइट. सो देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स, तो उसको हम पेयर सेट बोलते हैं. नेक्स्ट वी कॉल सेट ऑफ सेट्स. सेट ऑफ सेट्स माने कि देयर इज अ सेट, ये एक सेट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट है, ये एक और शायद कोई सेट है, और ये सब एक बड़े सेट के अंदर है. दे आर इन अ बिगर सेट. So there is a set inside a set. You notice this thing. This set is one of the elements of this bigger set. Right? So it is called as set of sets. इसको हम set of sets भी बोल सकते हैं. Okay. Now we have the concept of subset of a set. तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है if all elements that belong to A implies that they definitely belong to B. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सेट है A 1 2 3 और सेट B है 2 5 7 3 8 1, तो वी नोटिस दैट इफ X belongs to A it actually belongs to B. All X which belong to A belong to B. जो भी X A में आ रहे हैं वो B में हैं ही हैं. तो we can say that A is a subset of B. A B का सबसेट है. ठीक है. Now there is something which is a very important property, that every set is a subset of itself. A अपने आप का सबसेट होगा ही होगा. A will be a subset of itself. हर सेट अपना सबसेट होता ही होता है.
Similarly, empty set is a subset of every set. थर्ड, अगर A B का सबसेट है बट B भी A का सबसेट है, देन A विल बी इक्वल टू B. जैसे फॉर एग्जाम्पल A B का सबसेट मीन्स वॉट एवर बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B. B A subset means whatever belongs to B belongs to A. Now, if these two things are simultaneously satisfied, माने A and B must have the same x's. A और B में same x's ही होंगे. Only then it is possible. सिर्फ तब ये हो सकता है, right? So I will give you another example to understand this thing. Suppose if I tell you कि A is 1 2 3, B is 2 1 3. तो हमें यहाँ पे नोटिस होता है, वी गो एंड वी नोटिस दैट वॉट एवर बिलोंग्स टू ए, जो भी ए में है वो बी में है ही है, एंड वॉट एवर बिलोंग्स टू बी, जो भी बी में है वो ए में है ही है. एंड वी नोटिस दैट ए एंड बी आर एक्चुअली इक्वल ऑल्सो. हमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ए एंड बी आर इक्वल. So we can go ahead and we can say that in this case, if A is a subset of B and B is a subset of A, तो A and B will be equal to each other. A और B बराबर के होंगे. Now let's talk about proper subset of a set. Proper subset means if A is a subset of B and B is not a subset of A. Yeah, and A and B are not equal to each other. Then हम कह सकते हैं कि A is proper subset of B. फिर हम बोल सकते हैं कि A is a proper subset of B. एक एग्जाम्पल ले लो, जस्ट ट्राई टू टेक एन एग्जाम्पल इसको समझने के लिए. सो लेट्स गो एंड से कि A is basically 1 2 3 and B is 1 5 3 8 4 2. तो क्लियरली A is a subset of B. जो भी A में आ रहा है वो B में आ ही रहा है. But clearly A and B are not equal to each other. B has more elements. So then A will be called as a proper subset of B. उस केस में हम A को proper subset of B बोल सकते हैं. We can go ahead and say कि A is a proper subset of B. Is it clear? अच्छा, now we have superset. A set A is called to be superset of B if B is a subset of A. तो जब A जो है वो B का subset है, if A is subset of B, तो B is a superset of A. Automatically B super हो गया, bigger हो गया. B becomes a superset of A. अब हम बात करते हैं power set. Power set basically means that it's a family of all subsets of A. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ सेट A और ये सेट A है 1 2 3, तो इसके प्रॉपर सेट क्या होगा? प्रॉपर सेट मींस कि कौन कौन से ऐसे सेट है जो इस A के सबसेट हो सकते हैं. सो सपोज इफ आई हैव अ सेट B जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 है, B विल बी अ सबसेट ऑफ A. सपोज इफ आई टेल यू देयर इज अ सेट C जिसमें एलिमेंट 2 है, तो C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A. सपोज मैंने आपको बोला कि एक सेट है D विच इज हैविंग एलिमेंट 3, तो D इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A. सपोज इफ आई टेल यू कि देयर इज अ सेट E जिसमें 1 या 2 आ रहा है, तो क्लियरली वी अंडरस्टैंड E विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ A. तो ऑल दीज व्हेन आई राइट देम टुगेदर, जब मैं इनको एक जगह पे रिप्रेजेंट करती हूँ, कि ऑल दोज सेट्स व्हिच कैन बिकम अ सबसेट ऑफ A, दैट इज अ पावर सेट ऑफ A. ऑफ कोर्स नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये अभी हमने पढ़ा, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो नल और A तो अपने आप के सबसेट होंगे ही. यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, जब हम ऑल पॉसिबल सेट्स लिखते हैं विच आर सबसेट ऑफ द सेट, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट. एक पावर सेट का ये प्रॉपर्टी होता है दैट द पावर सेट हैज 2 to the power n एलिमेंट्स इन इट. एनी पावर सेट, कोई भी पावर सेट की अगर हम बात करें तो उसमें 2 to the power n एलिमेंट्स आते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट द वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं. सो वेन डायग्राम बेसिकली इज व्हेन वी गो अहेड एंड वी रिप्रेजेंट सेट्स यूजिंग अ डायग्राम. जब हम सेट्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज वेन डायग्राम. उनको हम वेन डायग्राम बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक सेट A है, तो सेट A में एलिमेंट x1 x2 x3 आ रहा है, दिस इज इट्स वेन डायग्राम.
नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दैट B is a A is a subset of B, माने A के जो भी एलिमेंट्स हैं दे हैव टू लाई विद इन B। तो अगर ये A है तो B इज बिगर। हाँ, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक टू दिस एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिखा था, बी कैन हैव सम अदर एलिमेंट्स लाइक 5, 8, 4 and some elements which are common like 1, 2, 3। तो when I will go ahead and when I will represent this thing, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये सेट B है, ये सेट A है। A has elements 1, 2, 3 जो B के अंदर भी of course they are falling, B में भी आ रहे हैं। And then there are elements 5, 8, 4 which are outside A but part of B। वो A के तो बाहर है but B का पार्ट है। So this is how you can represent it using a Venn diagram। इससे आप एक Venn diagram भी दिखा सकते हो। Now there are multiple examples of Venn diagrams। बेटा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं, राइट। यहाँ पे क्लियरली बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे ए एंड बी हैव नो कॉमन रीजन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो इनका कॉमन रीजन है वो 5 हो जाएगा। देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी। सो नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट। हम सेट्स के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। When we go ahead and when we talk about difference between two sets between A and B, so the difference between A and B can be represented very simply by all elements which are part of A but not a part of B। अगर मैं वो सारे elements दिखाऊं जो x का पार्ट a का पार्ट तो है एंड b का पार्ट नहीं है, विच डू नॉट बिलोंग टू b, सो दिस विल बी a माइनस b। इसको हम a माइनस b भी बोल सकते हैं, राइट। सो टू रिप्रेजेंट a माइनस b आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज माई a, दिस इज माई b। a में से मैंने b को रिमूव कर दिया, आई हैव रिमूव्ड b फ्रॉम a। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ a, जो हमारे पास a बाकी बच जाता है, I can go ahead and I can say that this will be a minus b। इसको हम a minus b भी बोल सकते हैं। Now the next concept that we have that is basically called as a complement of a set। एक set का complement क्या होता है? So complement of any set is nothing but universal minus that set। So for example, if I go ahead and I have this as the universe और ये set A है, so everything other than set A के अलावा जो भी हमारे पास पार्ट आ रहा है, all this, right, this will be basically called as A complement। इसको हम A का complement भी बोल सकते हैं। Then we have some algebraic laws। ये कुछ algebraic laws हैं which we have to do, जिसमें पहला algebraic law आता है which is called as associative law। Associative law basically says that when you do A union B and फिर उसका union C से करो, या first you do B union C और फिर उसका union A से करो, it means the same thing। The second one that we have that is basically called as commutative law। Commutative law basically goes ahead and says that whether you do A का intersection with B या B का intersection with A, it means the same thing। Then we basically have the idempotent law। idempotent law basically बोलता है कि intersection of set with itself, अगर A का A के साथ intersection करोगे तो A ही मिलेगा, union of set with itself, A का A के साथ union करोगे तो A ही मिलेगा। Then we have the law of union। अगर हम किसी भी सेट को यूनियन करेंगे with universal set, then I will get the universal set। और अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे विद द यूनिवर्सल सेट, देन विल गेट द सेट, राइट। देन वी हैव आइडेंटिटी लॉस। अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करेंगे विद द नल सेट, दो इट विल बी सेट, एंड किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया निकालेंगे विद द नल सेट, सो देयर इज नो कॉमन एरिया, it will be the null set because of course null set के साथ you cannot have any common area, you cannot have anything common। Then we have the distributive law और ये set theory का most important law है which all of you have to remember। This is the most important, these two, they are the most important rules of set theory। जो पहला आता है that is actually called as distributive law। Distributive law बोलता है कि if I have B union C and I find its intersection with A, तो it will be A intersection B and its union with A intersection C। तो आई हैव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन
over intersection. Distribution over intersection. So what we have done is कि ये जो intersection है, this is getting distributed with B and C. देखो, एक बारी we are finding intersection with B and एक बारी we are finding intersection with C. So now what has happened is that we have distributed the intersection. हमने intersection को distribute कर दिया है, right? Similarly, we can also go ahead and we can also distribute the union. हम union को भी distribute कर सकते हैं. Like if I have A union B intersection C, so I can distribute this union. मैं इसको distribute कर सकती हूँ and I will get A union B intersection A union C. This is the distributive law. इसको हम distributive law भी बोलते हैं. Now let's go ahead and talk about the De Morgan's law. De Morgan's law के बारे में एक बार हम देख लेते हैं. So for example, if I have A intersection B and I have to find its complement, तो ये हो जाएगा A complement union B complement. Similarly, suppose if I have A union B और इसका मुझे complement निकालना है, तो this will be A complement intersection B complement और इसको हम बोल सकते हैं the De Morgan's law. So De Morgan's law में ये जो intersection है it converts to union when you open the bracket और union जो है it converts to intersection when you open the bracket. जब आप brackets को खोलते हो intersection becomes union, union becomes intersection. Is it clear? ठीक है. अब हम आगे बात करेंगे and we are going to go ahead and we are going to talk about the complementary law, complement law. The complementary law basically goes ahead and says कि अगर हम A के complement के साथ common area निकालेंगे तो of course there is no common area क्योंकि if this is a universal set और ये A है, this is A, तो this is complement of A. This is A complement, है ना? So there is no common area. Common area is 5. Secondly, it goes ahead and says कि अगर हम A का union निकालेंगे A complement के साथ, माने A with A complement, the yellow region, with A complement, so we will get the universal set. अगर null set का complement निकालोगे, it will be universal, and अगर universal का complement निकालोगे, it will be null set. Then it goes ahead and says that whenever you have complement का complement, whenever you find A का complement निकाला और उसका दोबारा complement निकाला, you will get A itself. You're going to get A itself, आपको A ही मिल जाएगा. Now these are certain rules बेटा. ये कुछ रूल्स हैं जो हमें जानने जरूरी हैं, जिसमें फर्स्ट रूल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, हमने ये पहले कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सिमिलरली अगर हम पूछे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए union B, so it can also be number of elements in A plus number of elements in B minus A. ठीक है. सो ये कुछ रूल्स हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग रूल्स. आप हर एक को अपने वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो. यू कैन वेरीफाई ईच ऑफ दीज रूल्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन फॉर यू. रिमेनिंग जस्ट रीड देम डाउन फ्रॉम दिस फाइल. ठीक है. आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट सम क्वेश्चंस. ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक बारी. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. In a group of 70 people, 37 like coffee. So coffee, number of people liking coffee is 37. 52 like tea. Number of people liking tea is 52. And each person likes at least one of the two drinks. तो या तो कॉफी पसंद है या तो चाय पसंद है. How many people like both tea and coffee? माने हमें निकालना है tea and coffee का intersection. Both tea and coffee. So we know कि number of people liking both will be coffee plus tea minus union. Coffee is 37, tea is 52, this is 70. So 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 minus 70 and answer will be 19. So the correct answer to this question is 19.
ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर ये देखो, लेट A has 3 elements and B has 6 elements. What can be the minimum number of elements in A union B? Minimum number of elements. Minimum तब होते हैं, सबसे कम elements A और B में तब होते हैं when one is completely a subset of other. तो अगर A B का completely अंदर चला जाएगा, it will be a subset of the other, तो उनका जो union होगा, so just think about it. बेटा suppose this is A और this is B. तो A union B में ये सारा elements आ रहा है. Now, when we go ahead and when we say कि A is this and B is this, तो A union B is this, right? तो ये extra नहीं रहा. This has come within this. हाँ, so A union B is only B, right? So number of elements in A union B पूछ रहा है ना, so it will become 6. That will be the B. Union बोले. यही they would have asked number of elements in A intersection B. तो minimum number of elements in A intersection B, बेटा वो तो 0 भी हो सकते हैं. There can be nothing common between A and B. ये रहा A और ये रहा B. So that can be 0. ठीक है, ओके जी. ट्राई दीज क्वेश्चन, इनको ट्राई करना है. हाँ, अब हम बात करते हैं अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अ कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली गोज अहेड एंड मीन्स कि हम A क्रॉस B करते हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अभी आई विल शो यू कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझना है, दैट इज बेसिकली दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड B एंड A का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट द सेम थिंग. आई विल शो यू थ्रू एन एग्जाम्पल व्हाट इज द मीनिंग. तो सपोज A है हमारे पास 2,5 और B है हमारे पास 3, 4, 7. So Cartesian product of A cross B means you pick the first element of A, take it with this element of B, pick the element of A, take it with element of B, pick the element of A, take it with element of B, pick element of A, take it with B, pick element of A, take it with B, pick element of A, take it with B. ये हो गया A क्रॉस B. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B. ठीक है, नाउ सपोज इफ समवन टेल्स मी कि नहीं, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, तो नाउ थिंग्स विल रिवर्स. अब चीजें रिवर्स हो जाएंगी. सो यू पिक द एलिमेंट ऑफ B, टेक इट विद A, पिक एलिमेंट ऑफ B, टेक इट विद A, पिक एलिमेंट ऑफ B, take it with A, pick element of B, take it with element of A, element of B with A, element of B with A. तो यू आर एबल टू सी द डिफरेंस. ये जो आंसर आया व्हेन यू टुक A क्रॉस B और ये जो आंसर आया व्हेन यू टुक B क्रॉस A, दीज आर नॉट द सेम. दे आर वेरी डिफरेंट. बहुत अलग आंसर आ रहा है. हाँ, नंबर आर सेम. यहां पे यू सी 6 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे भी you also see 6 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number is the same. Number तो same आ रहा है, but they are not the same. Same नहीं. Okay, clear? Making sense? ठीक है. So with this, we come to an end of your set theory. Set theory हमारा पूरा रिवाइज हो चुका है. I hope all of you will go ahead and all of you will do set theory thoroughly. अच्छे से set theory को कर लेना. Especially few questions जो every year they get repeated. कुछ questions बहुत common questions हैं जो हर साल repeat होते हैं. I want all of you to go ahead and try those questions. जैसे ये वाला. This one. Question number 13. Most commonly asked question. And same here. Question number 12. Most commonly asked question. So do these two things. ठीक है.
Okay, so we have covered set theory. Now we should go ahead and begin with functions. Give me a minute. I will open the PDF of functions. Okay, so as all of you are requesting in the chat window, we'll take a quick break of 10 minutes and then we'll start with functions.
Okay, so now let's continue with the next chapter and let's go ahead and talk about the relations and functions. First, let's talk about relations. A relation can be defined as any, so as the word suggests here, relating, right? So when we go ahead and when we bring any relationship from one set to another, when we connect one set to another, then we can go ahead and we can say like it's a relation. In other words, we've already learned right now what is a Cartesian product. So when we do A cross B, जब हम ऐसा कुछ निकालते हैं, this can be called as a relation. So let's take an example. So suppose if I have a set A and it has elements 1, 2, and 3. And I have a set B and it has elements A and B. And I am connecting 1 to A and 2 to B, and I'm trying to form some relationship. There is some C, 3 to C. Then this, when I go ahead and when I relate one element of A to one element of B, then this can be called as a relation. Another thing which we have to go ahead and which we have to understand is called domain and range. Domain basically goes ahead and tells what are the elements in the first set. What are the elements in this set? Elements here. That basically goes ahead and becomes your domain. And when we talk about and when we mention the range, range is basically all elements which are here. Right? All elements which are here, which are related to the elements of A. जो भी elements B में है, which are getting related to the elements of A, that becomes your range. Right? Now, it is possible that there will be some elements in B which may not be related to the elements of A. जैसे there may be a D, there may be some E. Then in that case, all elements together, जो भी B में elements आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारा elements together, these elements together can actually be called as codomain. So when I talk about the codomain, it is going to be A, B, C, D, and E. But when I talk about the range specifically, they are those which are related. So it will be A, B, and C. Okay. Okay. Now let's go ahead and let's talk about the representation of any relation. So how can we go ahead and how can we really show it? कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे हम उसको represent कर सकते हैं? So representation wise, the first one that we have that is called as a roster form. उसको हम बोल देते हैं एक roster form. In a roster form, we go ahead. So suppose I have linked -1 to 1. I have linked 1 to 1. I have linked 2 to 4. So these relations that I have, when I write them in form of a set, जब मैं उनको ऐसे set के अंदर डालती हूँ, ordered pairs को, that is basically the roster form. This is called as the roster form. The second one that we have that is basically called as a set builder form. Set builder form is where I go ahead and I write it like this, that my relationship looks like elements of A and B such that A belongs to the set A, B belongs to the set B, and I have a relationship that A minus B should give me -1. So when we just define it like this, but we do not specifically mention the elements, हम elements को mention नहीं कर रहे हैं, rather we are just defining what is the relationship between the elements. How are these two related with each other? क्या relationship है A और B के बीच में? A और B कैसे related है एक दूसरे से? Then that can be called as a relationship. उसको हम एक set builder form relation बोल सकते हैं. Now, we also have something which is known as an arrow diagram. Arrow diagram. कुछ नहीं है, it's just showing the linkage that which element is getting linked to which element is getting linked to which element is getting linked to which element. So when we go ahead and when we link, जब हम ये linkage show करते हैं that this element to this element to this element to this, that is your arrow diagram. Now, there is also something which is called as the lattice method, very rarely used, but you can just understand this thing.
सो आई एम लिंकिंग वन विद वन ना, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया. इफ आई एम लिंकिंग वन विद टू, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया. इफ आई एम लिंकिंग टू with 2, तो here I have made a circle. So whatever 1 with 1, 1 with 2, 2 with 2, wherever these linkages are there, wherever x is being linked to y, all those places I am putting a circle, and that will be called as the lattice method. Okay, now the question sometimes come in exam ki what are the total number of relations, कितने होते हैं total number of relationships. So supposedly if A has p number of elements and B has q number of elements, so the relations, maximum relations which can be created will be 2 to the power, so पहले relation की बात करते हैं, sorry, it will be p into q. And the number of subsets, आपको याद है number of subset was 2 to the power n. तो अगर यहाँ पे इतने elements create हो रहे हैं p q, the number of subsets will become 2 to the power p q. So these are going to be your total number of subsets. एक example ले लेते हैं. So if I suppose go ahead and tell you that there is A, and A is represented with 1, 2, and there is B, and B is represented with 3, 4, 5. So how many relations can I create? The number of relationships I can create will be 2 into 3, that means 6. Right? And how many number of subsets which can be created? Because ये तो, these are the number of elements in A cross B. It's like a number of elements in Cartesian product of A cross B. ठीक है, तो how many subsets can be created? It is going to be 2 to the power 6. That means 64. So if someone asks me how many number of elements can be created, वो हो जाएगा 64. Are you understanding? So दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है. Hello everyone. So the first thing that you have to understand is that first we find the number of Cartesian products. उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट विल बी p इंटू क्यू. अगर A में p एलिमेंट्स हैं और B में q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में p इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे. And now if I tell you the relation, so relation का definition क्या है? What's the definition of relation? That the number of subsets which can be created from the Cartesian product. वही तो हमने बोला था, wasn't it? So we said that subset of A cross B, that was defined as this relation. So now we have to find the subset. हमें वो subset तो निकालना पड़ेगा. So how can we find the number of elements in the subset? हमें पता है formula है 2 to the power n. So in this case 2 to the power pq. वही हमने यहाँ पे वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट एग्जैक्टली. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. अ यूनिवर्सल रिलेशन मींस अ रिलेशन इज कॉल्ड टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन ओनली इफ रिलेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर उसका एक सबसेट ना होके हम ऑल पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रिलेशन. तो हम उसको एक यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं. राइट? Okay, now I want to go ahead and I want to talk about three things. We want to talk about three important things today. सबसे पहले हम बोलते हैं reflexive, then we talk about symmetric, then we talk about transitive. First thing is reflexive बेटा. Reflexive basically ये कहता है that anything is reflexive if A belongs to R. मतलब अगर मेरा जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है, इट हैज एलिमेंट्स लाइक 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3, तो दीज आर रिफ्लेक्सिव इन नेचर. तो ये रिफ्लेक्सिव हैं. सो इफ आई हैव अ सेट ए और ये सेट ए है 1 2 3, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव सेट क्रिएट होगा दैट विल बी 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3. Similarly, suppose if someone goes ahead and if tells me find out the symmetric relation. Symmetric relation का मतलब है कि if AB belongs to the relation, then BA should also belong to the relationship. मतलब अगर मैंने अपना relation ऐसे define किया है that 1, 2 is an element, मतलब जो 1 है वो 2 से link हो रहा है and 2 is getting linked to 1. So 2, 1 is also an element.
then we will go ahead and say that it is symmetric. So for it to be symmetric, if 1, 2 is an element, अगर ये एक element है, then this should also be an element. 2, 1 should also be an element. If this happens, अगर ऐसा है, then we can go ahead and we can say that it is symmetric in nature. Clear? Okay. The third one that we have is transitive. Transitive बोलता है that if A, B belongs to the relation, B, C belongs to that relation, then A, C should also be belonging to the relation. मतलब suppose if I create a relationship 1 to एक element है उसमें 2 1 भी element है और 1 1 भी element है, so then we can say that this is transitive. ये transitive है because 1 is linked to 2, then 2 is linked to 1, so 1 should be linked to 1. और ये relation symmetric भी है because if 1 2 is there तो 2 1 is also there. और ये relation जो है वो reflexive भी है because 1 with 1 is also there, but 2 with 2 is not there, mind you, है ना. तो 1 में तो reflexivity we can see, but 2 with 2 में मेरे को reflexivity नहीं दिख रही है. So I hope the three definitions are clear to you. So reflexive बोलता है that I have to have these elements 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3. Symmetric बोलता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 should also be there. Transitive बोलता है कि अगर 1 3 है and 3 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए, then it is transitive. The next one that we have is called as antisymmetric relationship. Antisymmetric relationship is any relationship that if AB belongs to R and BA belongs to R, then this implies that A and B are same. जैसे for example, if I go ahead and if I see the relationship R1, so 1 2 belongs to R, ठीक है, then 1 3 also belongs to R, ठीक है, AB belongs to R. तो the question is that if AB belongs to R, then and BA belongs to R, ये भी belong करे, then A and B should be equal, right? तो जैसे यहाँ पर in this case we can see that एक और definition के through आपको मैं explain करती हूँ that it is antisymmetric then AB and BA cannot belong to R. या तो अगर ए बी बिलोंग करे और बी ए बिलोंग करे तो आपका ए एंड बी शुड बी इक्वल, ठीक है, या फिर अगर ए बी बिलोंग करे तो बी ए बिलोंग ना करे. सो आई विल एक्सप्लेन दिस. देखो यहाँ पे 1 2 तो बिलोंग करता है बट 2 1 बिलोंग करता है नहीं, सो दिस इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है. अब यहाँ पे 1 1 तो बिलोंग करता है तो उसका ऑपोजिट भी 1 1 है. जब व्हेन आई रिवर्स इट इज 1 1, बट बोथ ऑफ देम आर इक्वल. एक ही बात है 1 1 को, तो आप रिवर्स करोगे यू विल गेट द सेम. Still it follows the property of antisymmetric. So this is the two things which has to be satisfied. कि if AB belongs to R and BA belongs to R, तो actually A and B should be equal only, जैसे यहाँ पे है. Otherwise, if AB belongs to R, तो BA should not belong to R. अगर ये property satisfied है, then it is antisymmetric. ठीक है. So बहुत simple है. Basically, when I reverse, वो element belong नहीं करना चाहिए unless the two elements are same. Unless the two elements are same. अब जैसे ये देखो 1 2 बिलोंग करे 2 1 भी बिलोंग करे, सो दिस इज सिमेट्रिक. ये तो सिमेट्रिक हो गया, नॉट एंटीसिमेट्रिक, राइट. सो R3 इज सिमेट्रिक इन नेचर बट R3 इज नॉट एंटीसिमेट्रिक. क्लियर? ओके. नाउ वी टॉक अबाउट something which is called as, so now I want to, the other things are not important. अब हम एक important aspect पे चलते हैं which is called as functions. I hope all of you have understood कि एक relation क्या है, what is a relation. And now we want to go ahead and we want to talk about what are functions. Okay. So try to understand. See, a function is a special
kind of relation. एक फंक्शन क्या होता है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप. एंड व्हाट इज स्पेशल इन दिस केस? वेल, व्हाई दिस इज स्पेशल is because यहाँ पे I am going ahead and I am saying when y is a function of x, जब हम ऐसे लिखते हैं कि y is a function of x, it means that as x changes, y will change. जो हमारा y है, it basically depends on x. y x पे dependent है. Let me give you some example. जैसे if I say y is equal to x plus 5, मैंने लिख दिया y is equal to x plus 5. So माने as this x will change, जैसे से x change होगा, the value of y will also change, है ना? So let's take a very simple example. Let's say x is equal to 1, right? So when x is 1, so y will be 1 plus 5, 6. Let's say x is 2. So y will be 2 plus 5, 7. माने as x is changing, जैसे जैसे x change हो रहा है, y भी change हो रहा है, then that is a function. अब function को define करने के लिए, to define function, it is very important to understand that anything can be called as a function when we go ahead and we have each value of x linked to single y. Each value of x linked to a single y. मतलब, suppose this is x1, this is y1. So x1 has to be linked to a single y. If x1 is linked to two y's, अगर x1 दो y से linked है, then this is not a function. तो ये एक function नहीं है. तो टू फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड अ फंक्शन, अगर मुझे किसी को फंक्शन बुलाना है, सपोज ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 से लिंक्ड है, x2 y2 से लिंक्ड है, x3 y3 से लिंक्ड है, सो यस दिस इज अ फंक्शन. सपोज आई हैव x1 y1, x2 y2, x1 y1 से लिंक्ड है, x2 y2 से लिंक्ड है, y1 से लिंक्ड है, x3 y2 से लिंक्ड है, सो यस दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. क्यों? Because you notice कि x1 is only linked to one y1 ना, x2 is also linked to one, x1 तो एक ही y वैल्यू से लिंक्ड है, राइट? इट्स नॉट लिंक्ड टू टू y's. 2x कैन बी लिंक टू सेम y, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट x कैन नॉट बी लिंक टू टू y's. एक x दो y से लिंक नहीं होना चाहिए, दो x एक y से लिंक हो सकता है, दैट्स फाइन. बट नाउ इफ आई लुक एट दिस x1, x2, y1, y2, y3 and x linked to two y's. So now this is not a function. अब ये एक फंक्शन नहीं है. नाउ दिस इज नॉट अ फंक्शन. सो आई होप यू आर क्लियर एज टू व्हाट इज अ फंक्शन. किसी भी चीज को हम फंक्शन कब बुलाएंगे, दैट इज मेकिंग सेंस विद ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ once we have understood when will something be called a function, the next thing is the types of function. ठीक है? To understand the type of function, basically there are two type of functions: one to one, many to one, right? And on to. ये तीन चीजों को हमें समझना है, right? The one-to-one function that we actually go ahead and have,
That is basically a function when each value of x is linked to each value of y. So for example, when I go ahead and when I say 1x to 1y, 1x to 1y, 1x to 1y, then this is 1 to 1. The many to 1 function is when many x's are linked to 1y. So many x to 1y. Then it becomes a many to 1 function. ठीक है. अब इस फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, जो मैंने आपको पहले बताया था, that there is a difference between codomain and range. Codomain is all values which are there in B. अगर ये A to B जा रहा है relation, so codomain is all values in B. But range are those values of B which have a pre-image, जो A से linked है, right? तो जो values हमारी B की A से linked है, सिर्फ वो होंगी part of the range, right? So you have to understand that there is a difference, एक difference है between the codomain and range. जैसे for example 1 2 3 1 2 3 4, right? I am saying this 1 is linked to 1. I am saying this 2 is linked to 2 and 3 is linked to 3. But this doesn't have any pre-image. इसके साथ तो कोई linkage नहीं है. No, nothing is linked to this. In this case, when this is not linked to anything, जब इसका किसी भी चीज से linkage नहीं है, then we can go ahead and we can say that the codomain is 1 2 3 4, but the range is only 1 to 3. The range is only 1 to 3, right? Now what we are going ahead and saying in this case, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, that the moment we have the codomain and range to be the same, अगर यहाँ पे जितने भी हैं everything has a pre-image, then that will be called as an onto function. So if codomain is equal to range, अगर ये दोनों equal हैं, then onto, तब हम उसको एक onto function बोल सकते हैं, right? Then we can go ahead and call it as an onto function. Okay. Now, सबसे पहले there is something called as a function test. A function test basically goes ahead and says that this is a vertical line test. Anything is called a function. किसी भी चीज को हम function तब बोलते हैं when we draw a vertical line and it cuts exactly once. So suppose if I plot, suppose मैंने मेरा function ये है, I am drawing vertical lines and it is cutting exactly once. This is a function. Similarly, suppose ये है, I am drawing vertical lines and it is cutting exactly once. So this is a function. But suppose ये है, I am drawing vertical lines and it is cutting more than once. So this is not a function. ये function नहीं है, right?
Suppose circle. I am drawing vertical lines. It is cutting more than once, not a function. Is it clear? अब हम बात करते हैं वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन की. The definition of a one-to-one function says that if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2, मतलब हर x unique y से linked है, then we can go ahead and we can say that it is a one-to-one function. तो हम उसको एक one-to-one function बोल सकते हैं. We can go ahead and we can call that as a one-to-one function, right? So let's represent this using some example. Just if I go ahead and if I tell you that my function is 2x plus 3. So f of x1 हो जाएगा 2x1 plus 3. f of x2 हो जाएगा 2x2 plus 3. So if 2x1 plus 3 equal to 2x2 plus 3, 2x1 equal to 2x2, x1 equal to x2. So we began with this. We began with f of x1 equal to f of x2. And we got the relationship that x1 should be equal to x2. यहाँ तक आ गए ना हम? So we can say that yes, this is a one-to-one function. This is a one-to-one function. ठीक है? Now let's take another example. Suppose if I tell you f of x is equal to, बहुत simple, we take it always x square. ठीक है? So x1 square equal to x2 square. Does this mean x1 should be equal to x2? No. It does not imply x1 equal to x2. कैसे? जैसे if x1 is minus 2, x2 is 2. So x1 square is 4, x2 square is also 4. But x1 is not equal to x2, na? So we notice that x1 square is equal to x2 square. F of x1 is equal to f of x2. But we notice that x1 is not equal to x2. Then we can go ahead and say that this is not a one-to-one function. एक वन टू वन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. सो एक फंक्शन को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से काटें एंड इट कट्स मोर देन वंस, तो इट इज मेनी टू वन. बट अगर एक फंक्शन है जैसे log x, जिसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काटें एंड इट कट्स एग्जैक्टली वंस, तो इट इज वन टू वन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हमने ऐसे प्लॉट किया. सो आई एम कटिंग इट horizontally, it is cutting exactly once, so it means it is a one-to-one function. अच्छा, what about this? Is this a one-to-one function? अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं, ऐसा कर्व बनाऊं, is this one-to-one? Is this one-to-one function? Answer this. क्या एक one-to-one function है? No, because this is not a function. तो function ही नहीं है. It fails the vertical line test. So अगर ये function ही नहीं है, तो how can it be a one-to-one function? It's not a function only. Are you understanding? Is it making some sense? So we can go ahead and we can say it is not a function. ये एक function ही नहीं है. Leave along the one-to-one function. Okay. Now, let us go ahead and let us take some examples and let's see if we are able to understand. अच्छा, एक और term है हाँ. Anything which is one-to-one and onto, it's called as a bijective function. इसको हम एक bijective function बोलते हैं. Anything which is a bijective function has the property that its inverse will exist. एक ऐसा function जो एक bijective function है, उसका inverse definitely exist करेगा ही करेगा. Its inverse will exist. Is it clear? ठीक है. Okay, so let's take one full-fledged question.
on bijection and your inverse. ठीक है. So supposedly I tell you, पूरा एक क्वेश्चन लेंगे हम, full fledged, to wrap up functions. fx is equal to 2x plus 3 upon x plus 1. ये मेरा फंक्शन है. First, find domain of the function. Second, check if it is 1 to 1 or not. Third, check if it is onto or not. Fourth, check if it is bijective or not. Fifth, if it is bijective, अगर ये bijective है, so I'm also saying x, for x not equal to 1, of course, then find its inverse. ठीक है. And sixth, if you're able to find the inverse, तो find f of inverse. ठीक है. So it's a full-fledged question जो हमें करना है. Let's begin with the domain first. So domain बहुत simple है because it is in the p by q form. So this implies that this q should not be equal to 0. And हम domain का बात करें, so which means we are talking about the values of x. So q not equal to 0 means x plus 1 should not be equal to 0. So it means that x should not be equal to minus 1. We have solved for it. So we are saying that when we have to write the answer, तो बहुत simple है. X can take any value between minus infinity to infinity, but it cannot take the value of minus 1. And this is the answer to this question. ठीक है. Now, in order to go ahead and in order to prove that this is a one-to-one function or not, so we start by taking f of x1 is equal to f of x2. यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. So it means that 2x1 plus 3 upon x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 3 upon x2 plus 1. So let's start solving this. So 2x1 plus 3 into x2 plus 1 is equal to 2x2 plus 3 into x1 plus 1. चलिए solve कीजिए. So you will get 2x1 x2 plus 2x1 plus 3x2 plus 3 is equal to 2x2 x1 plus 2x2 plus 3x1 plus 3. So we will notice that this will cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 plus 3x2 is equal to 2x2 plus 3x1. Take x1 term on one side and x2 on the other side. तो हमारे पास आ जाएगा x2 is equal to x1. So we began by saying f of x1 equal to f of x2, and हमारे पास आ गया x1 equal to x2. So we can go ahead and we can say that yes, this is a one-to-one function. ये एक one-to-one function है. Now to check onto function, what we can go ahead and what we can do is कि we can go ahead and we can check what is going to happen to this function. ये कैसा act करेगा function. ठीक है. So very simple. To go ahead and to check if this function is onto or not, we have to check what values y can take. Y कौन सा value ले सकता है. So we have to find out the values that y can go ahead and take. In a way, we have to find the inverse of the function. और वो कैसे निकालते हैं? So if we have y is equal to 2x plus 3 upon x plus 1, we go ahead and we solve for the value of x. माने x को एक साइड पे करके we write everything of y on the other side. कैसे? Just see this. So I can take this here and I will get y into x plus y is equal to 2x plus 3. Right? And now what will happen is that I can go ahead and I bring all x terms on one side. So yx minus 2x is equal to 3 minus y. Take x common. Y minus 2 is equal to 3 minus y. And x will be 3 minus y upon y minus 2. So we understand that y will have all real numbers, but
not 2 except 2. Y सारा real number लेगा, and we know x will also take all real number. So it means that all real numbers of x can be connected to all real numbers of y. ठीक है. So the only thing which is not possible यहाँ पे is that y equal to 2 कभी नहीं होगा. Y will never be 2, right? And other than that, we can go ahead and we can see that all other values will be generated. तो suppose एक बात बताओ मुझे. Suppose the question goes ahead and says that the codomain is all real numbers. मतलब ये मेरा x था and ये मेरा y है and y is all real numbers. तो what will be the range बेटा? Range will be all real numbers minus 2. Minus 2 means 2 wala value will never be there as part of the range because y will never take the value 2. Are you understanding this? Right? So we can go ahead and we can say that yes, the function is not onto. क्योंकि हमें जो कोडोमेन दिया गया, the codomain we are given in the question, suppose if it is all real number, तो हमारा जो रेंज आया है दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ y बीइंग 2. y वैल्यू 2 नहीं ले सकता है, y कैन नॉट टेक द वैल्यू 2. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, तो हाउ टू प्रोसीड. सो नाउ समटाइम्स टू प्रूफ द बाइजेक्शन, अगर हमें बाइजेक्शन करना है तो क्वेश्चन आपको दिया ही ऐसा जाएगा. सो क्वेश्चन विल से दैट कंसिडर द डोमेन ऑफ x एज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and consider that the codomain of x's of y function is all real numbers except 2. तो the moment they remove 2 from the codomain also, अगर वो codomain को ही without 2 define कर देते हैं, तो all other values y can take, मतलब हर चीज अब y में भी है, range में भी है, codomain में भी है. So now the two become equal. अब ये दोनों इक्वल हो गए. नाउ दे हैव बिकम इक्वल टू ईच अदर. सो इफ दे हैव बिकम इक्वल टू ईच अदर, अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं, सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से दैट यस, नाउ इफ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये गिवन है, देन इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. इट इज 1 1 and on 2. And we can find inverse, which I already did. Inverse is nothing but writing it like this. When we write x as a function of y, इसको हम inverse बोलते हैं. So the inverse of the function f inverse x will be, जो भी यहाँ पे right hand side पे लिखा है, you write this. So 3 minus x upon, just replace y with x, upon x minus 2. This will be inverse of the function. ये आपके function का inverse आ गया. Now, once you have found the inverse, question कह रहा है कि put inverse back in the function. तो मेरा function क्या था? What was my function? The function I was given was 2x plus 3 upon x plus 1. So now I will be putting this back in my function. And what will I get? 2. X की जगह पे I will put 3 minus x upon x minus 2 plus 3 upon 3 minus x upon x minus 2 plus 1. So what will I get? I will get 6 minus 2x plus 3x minus 6 upon x minus 2 upon 3 minus x plus x minus 2 upon x minus 2. So you will get x upon 1. That means you will get the answer as x. तो वी हैव प्रूव्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम f इनवर्स x को वी प्लग इट बैक इन द फंक्शन, वी विल गेट बैक x. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. ऑल ऑफ यू हैव टू गो अहेड एंड रिमेंबर दिस थिंग. ये बात समझ में आती है? इज देयर एनी डाउट इन दिस? एनीवन? आर वी क्लियर? Okay. Now I'm making a table
and you have to go ahead and write it as it is. इसको as it is note down कर लो पूरी टेबल. Domain and range of different functions. So first of all, please write down that whenever you have anything in the P by Q form, so इसका domain में Q cannot be equal to 0. Q cannot be equal to 0. These are your domain restriction. ठीक है, जैसे for example, if I have x minus 2 upon x plus 4, so x plus 4 cannot be equal to 0, माने x cannot be equal to minus 4. ये आपका पहला restriction है. The second restriction which you have, which is on the super root. So it says if anything is under the root, so that has to be strictly positive or greater equal to 0. It cannot be negative. The third is on your log. So if I am finding log of x, then this x has to be positive, right? If we have any even root, जैसे मैं gx का even root निकाल रही हूँ, ठीक है, जैसे for example root निकाल रही हूँ, then we have to make sure that expression will always be greater than equal to 0. ठीक है, whenever we have any polynomial number, then that polynomial number is defined for all real numbers. The polynomial number is defined for all real numbers. Clear हुआ ये बात? ठीक है. So you take a question, try to solve it. So you are given log of x minus 2 and you're asked to find the domain. बहुत simple है कि ये जो x minus 2 है, this has to be strictly positive, माने x has to be greater than 2. X has to be greater than 2, so from 2 to infinity. This will become the domain. Clear? Okay. Then whenever we talk about sine x, x can take any value. But the answer, the range of a sine function is always between -1 to 1. Right? Similarly, when we talk about cos x, x can take any value, but the answer will always be between -1 to 1. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू रिमेंबर दैम. Is it clear? Okay, so we will stop here for now. We'll take a break, and when we come back, we'll talk about the matrix and determinants. Okay, we'll take a 15-20 minutes break.
Okay, hello everyone. Now let us go ahead and let us begin by talking about matrices. Matrices. Okay, so we have already gone ahead and we have already talked about सेट थ्योरी. हमने पढ़ लिया फंक्शंस क्या होता है. अब हम बात करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स, डेटरमिनेंट्स एंड वेक्टर थ्योरी की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की. तो देखिए बेटा, व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इज एनीथिंग व्हिच इज ऑफ द फॉर्म m क्रॉस n, जहां पे m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो अहेड एंड आई राइट दिस एज अ मैट्रिक्स, तो ये हमारा रोज है एंड दीज आर अवर कॉलम्स. सो आई एम सेइंग कि देयर आर m rows हैं, and there are n columns हैं. So I can go ahead and call this as a matrix. इसको हम matrix बोल सकते हैं, right? अच्छा, each element in this has a meaning. जैसे element A11, it means first row, first column का element है ये. If I say A12, it means first row, second column. If I say A32, it means third row, second column. तो जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं, व्हेनेवर वी गो एंड व्हेनेवर वी राइट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का कुछ इंप्लीकेशन है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं है. व्हेन वी राइट m क्रॉस n, तो यही एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है, राइट? सो suppose if I say 3 cross 2, this is the order of the matrix. इसमें this means कि there will be 3 rows and there will be 2 columns. ठीक है. अच्छा, नाउ सपोज बेटा ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल है, दैट वी नोटिस दैट इन मेरठ कॉलेज देयर आर 35 प्लेयर्स, 5 टेबल टेनिस, 11 हॉकी, 5 बैडमिंटन, 6 टेनिस, 8 बास्केटबॉल, ऐसे करके प्लेयर्स दिए हुए हैं. सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दीज प्लेयर्स इन अ मैट्रिक्स? देयर आर, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे बोलूंगी टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, टेनिस, एंड लास्ट वन क्या है बेटा? दैट इज बास्केटबॉल. एंड यहाँ पे आई विल राइट द नेम ऑफ द कॉलेज, मेरिट कॉलेज, एंड देन वॉट एवर अदर कॉलेज आर गिवन टू यू. दूसरा कॉलेज क्या दिया हुआ है? नानक चंद कॉलेज, देवनागरी कॉलेज, एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको कॉलेजेस दिए हैं. सो नाउ दिस, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, दिस एलिमेंट, दिस विल मीन मेरठ कॉलेज में टेबल टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं. दिस विल मीन हाउ मेनी पीपल इन मेरठ कॉलेज प्ले टेबल टेनिस, एंड दैट नंबर इज गिवन टू मी एज 5. Similarly, suppose if I have to fill this number, तो ये क्या होगा? In नानक चंद कॉलेज how many students play hockey? तो there are 13 people who play hockey. तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा, this will be 13. Are you understanding ये मैट्रिक्स कैसे फिलअप होगा? राइट. सो दैट इज एग्जैक्टली जो यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया. दिस इज द एग्जाम्पल दैट दे हैव गिवन यू. नाउ लेट अस गो अहेड एंड टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस दैट वी हैव. The first kind of matrix that we have, उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स means that there is only one row. जैसे 1 2 3 5 7, ये एक रो मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स means that there is only one column. 4 5 7 9, ये सिर्फ एक कॉलम है. So this is a column matrix. The next that we have, उसको बोला जाता है बेटा square matrix. Square matrix is a matrix where rows and columns are equal to each other. जितना रो है उतना ही अगर कॉलम है, then that is called as a square matrix. जैसे for example, if I tell you that there is a matrix which has 3 rows and 3 columns, so it will be a square matrix. 5 6 8 2 1 4 7 7 5, ऐसे करके. So number of rows and number of columns are equal, तो वो हो गया एक square matrix. Null matrix या zero matrix is a matrix where all elements are zero. माने instead of this 5 6 8 2 1 4 7 7 5,
अगर सारा एलिमेंट्स जीरो है, if all elements are zero, then it is a null matrix. डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं. सो इफ देयर इज अ मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, 5, 1, 10, and non-diagonal elements are 0, that is a diagonal matrix. उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज बेसिकली एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स व्हिच लुक्स लाइक दिस, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और जब हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद सम स्केलर, जैसे स्केलर सपोज 10 है, सो व्हाट विल हैपन, सो आई विल गेट 10 0 0 0 10 0 0 0 10, और इसको हम बोल सकते हैं अ स्केलर मैट्रिक्स. तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल दे आर द सेम ही नंबर आता है. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, which I have already gone ahead and explained to you. Now the next one which we actually go ahead and have, that is called as a negative of a matrix. Negative of a matrix means it is basically minus of A. तो जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स विल मीन कि हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट, एंड दिस विल बी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. The next thing we have is called as equality of matrix. Matrix are equal to each other जब हम हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से इक्वल करते हैं. So suppose if I have A, B, C, D, E, F, G, H. So matrix are equal when each element is equated to the corresponding element. माने when A will be equal to E, B will be equal to F, C will be equal to G, and D will be equal to H. अगर ऐसा हो रहा है, if this is happening, that element with element, element with element, element with element, and element with element, अगर ऐसा है, then we can go ahead and say कि it is an equal matrix. अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. तो अगेन एलिमेंट टू एलिमेंट हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो सपोज इफ दिस इज अ क्वेश्चन कि दिस इज मैट्रिक्स ए एंड बी, तो व्हाट विल बी ए प्लस बी एलिमेंट विद एलिमेंट, माने 1 विद 7, 2 विल बी एडेड टू 3, 4 को ऐड करोगे 2 से, 0 विल बी एडेड टू 5, 5 विल बी एडेड विद 1, 3 को ऐड करोगे 9 से. सो व्हेन यू विल ऐड एलिमेंट विद एलिमेंट, दैट विल बी योर एडिशन. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में एलिमेंट सब्ट्रैक्शन विद एलिमेंट सब्ट्रैक्शन, माने 1 minus 7, 2 minus 3, 4 minus 2, 0 minus 5, 5 minus 1, 3 minus 9. सो एलिमेंट टू एलिमेंट अगर करोगे देन दैट विल बी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन, उसको आप एलिमेंट सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो. इज इट मेकिंग सेंस? अब हम आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स पे. तो प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल. वेदर यू ऐड ए विद बी या बी विद ए, इट इज इक्वल. Whether you go ahead and add B with C and then A, yeah, you go ahead and add A and B first and then C, it is the same. अगर कोई स्केलर है which you are multiplying with A plus B, अगर पहले you are adding A with B and उसको आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, so it is same as getting the scalar multiplied separately. आप स्केलर को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो. Then property number 4 basically goes ahead and says that if there is a zero matrix जिसको आपने A में add किया, it is same as 0 plus A, it is nothing but A. Zero matrix को add करने से the matrix remains the same. And property number last says that if I have A plus B, दो matrix हैं A plus B, and if this is equal to A plus C, then this means कि B and C must be the same matrix. B और C equal matrix होंगे. Now let's talk about the multiplication of the matrices. So when we talk about the multiplication of matrix, suppose K1 कोई एक स्केलर नंबर है, K2 भी कोई एक स्केलर नंबर है, ठीक है. तो K1 प्लस K2 दो नंबर्स को ऐड करके A से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू K1 को A से मल्टीप्लाई किया प्लस K2 को A से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली K1 को K2 से मल्टीप्लाई करके फिर A से मल्टीप्लाई किया, इट इज सेम एज फर्स्ट K2 को A से मल्टीप्लाई किया एंड देन K1 से मल्टीप्लाई किया.
इट इज द सेम एज फर्स्ट k1 को a से मल्टीप्लाई किया एंड देन k2 को मल्टीप्लाई किया. So this is what these two properties are going ahead and saying. ठीक है. If I have minus k multiplied to a, I can very well multiply k with a and then multiply them with minus 1. This is also the same as multiplying minus 1 with a and then multiplying k. ठीक है. ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, जिसमें मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज. तो जैसे इफ ए इज अ मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ए जो है, दिस इज ए बी सी डी, सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 × 2, राइट? या कोई एक जनरल मैट्रिक्स है विच इज ऑफ द ऑर्डर m × n. सो इफ आई मल्टीप्लाई इट विद सम मैट्रिक्स b, तो यहां पे जितना नंबर ऑफ कॉलम्स ए का है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. माने इफ दिस इज n, अगर ये यहां n आ रहा है, इफ आई सी n हियर, आई मस्ट सी n हियर, दिस मस्ट बी द सेम. Right? So if I have a matrix A जिसका order 3 × 2 है and another matrix B जिसका order 2 × 5 है, तो this multiplication is possible. But if I have a matrix A जिसका order 3 × 3 है and another matrix B जिसका order 5 × 3 है, then this is not possible. So the number of rows of B and column of A दोनों equal होना चाहिए for A into B to take place. अच्छा, अब AB का ऑर्डर क्या होगा? What will be order of AB? So order of AB will be इसका number of rows into इसका number of columns. So the order of AB will be 3 × 5. ठीक है. Now what we have to go ahead and what we have to do is we can just solve one multiplication. एक multiplication देख लेते हैं. That is going to be really helpful for us. तो जैसे for example, if there is A which is 2 1 1 3 1 2, तो you get 3 rows 2 columns, and there is B which is 2 rows 1 column, suppose 4 and 1. तो बेटा A × B देखो, A is 3 rows 2 columns, B is 2 rows 1 column, तो AB will be 3 row 1 column. कर देते हैं multiply, we'll get 2 1 1 3 1 2 with 4 1. So what will happen in this case, beta? First row gets multiplied with first column, right? So 2 into 4 plus 1 into 1. ठीक है, ऑर्डर देखो, what is the order coming? 3 × 1, माने there will be 3 rows, just 1 column. Then beta second row will get multiplied with the first column. तो 1 × 4 plus 3 × 1. Then beta third row will be multiplied with first column. So 1 into 4 plus 2 into 1. Beta 8 plus 1, 4 plus 3, 4 plus 2. Beta 9, 7, 6 is the answer. So देख सकते हो there are 3 rows, 1 column. ठीक है. So this is how you can go ahead and perform multiplication of AB. A is called as prefactor, याद रखना, and B is called as post factor. ठीक है. Okay. अब देखो, if A and B are matrix such that AB and A plus B are defined, both that A and B are square matrix of the same order. So if A plus B has to take place, अगर A और B को add करना है, it means order of A must be equal to order of B, तभी तो addition possible हो पाएगा. So it means that if A's order is P × Q, then B's order will also be P × Q. अभी कह रहे हैं A and B is possible, so that means A का ऑर्डर अगर P × Q है,
एंड बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, फॉर ए इंटू बी टू टेक प्लेस ये दोनों इक्वल होने जरूरी है, सो क्यू शुड बी इक्वल टू पी. So it means if P and Q are equal, the order of A will be P cross P and P cross P. That means rows and columns are same. है ना? तो हम बोल सकते हैं that therefore it is a square matrix. We can say that it is going to be a square matrix. ये बात समझ में आती है? Is it clear? ठीक है. अब देखो, these are some properties of matrix multiplication. Matrix multiplication का कुछ properties है. A into B plus C is A into B plus A into C. A into B into C is A into B into C. But A into B is not equal to B into A. ठीक है? And A into 0, 0 matrix is always 0. अब हम बात करते हैं matrix transpose की. We will go ahead and talk about the transpose of the matrix. The transpose of the matrix means आप उसके रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बना रहे हो. सो whenever you go ahead and whenever you do that, जब आप रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बना देते हो, that is basically called as the transpose of the matrix. को matrix transpose बोलते हैं. So let's take an example. जैसे if A is a matrix 1 2 3 4 5 6, तो ट्रांसपोज ऑफ ए विल बिकम कि इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो जो है दैट विल बिकम सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. सो वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ये ए का ट्रांसपोज कहलाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ये बात समझ में आई? Okay, now there are some properties of the transpose. The properties of the transpose are कि अगर A का transpose निकाला जाए, it will be A itself. If we have A multiplied with scalar and we find its transpose, it is that you can first find transpose and fill multiply it with the scalar. If we have A plus minus B का transpose, then this is nothing but A का transpose plus minus B का transpose. A B transpose can be written as B transpose into A transpose. Okay, these are some important properties of transpose. इसके बाद we have something which is called as conjugate of the matrix. Conjugate of the matrix is represented by A bar. Conjugate में क्या करते हैं हम हर एलिमेंट को उसके conjugate एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं. राइट नाउ मैम, व्हाट इज कॉन्जुगेट एलिमेंट? कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ कॉन्जुगेट एलिमेंट? अ कॉन्जुगेट एलिमेंट बेसिकली, बहुत सिंपली बात की जाए, सो कॉन्जुगेट एलिमेंट इज नथिंग बट एन एलिमेंट वेयर यू गो अहेड एंड चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन दैट बिकम्स अ कॉन्जुगेट एलिमेंट. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वेरी सिंपली आई टेल यू कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट जो होगा वो a माइनस आयोटा b हो जाएगा. द कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी a माइनस आयोटा b. सो व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, जब हम उसको ऐसे लिखते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द conjugate. इसको हम conjugate बोल सकते हैं. Right? So you only change the sign of the imaginary part, that is called as conjugate of the matrix. So suppose एक matrix है which has an element 1 plus 4 iota among other elements. तो इसका conjugate जब मुझे लिखना होगा, it will become 1 minus 4 iota. Right? Then that will be conjugate of the element. Okay. Now we talk about the minor of any element of the matrix. किसी भी matrix का उसका minor क्या होता है? So minor, जैसे for example, just consider this matrix. ठीक है, and I ask you find the minor of A21. A21 के corresponding उसका minor निकालो. Minor of 21. So minor of 21 means minor of second row and first column. So what you will do is you will remove second row, you will remove second column, first column,
एंड यू विल राइट अदर एलिमेंट्स। तो आपको मिल जाएगा A12, A13, A32, A33, ये मिल गया। नाउ यू विल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। सो हाउ डू वी फाइंड द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? diagonal multiplied minus off diagonal multiplied. So you'll get A12 into A33 minus A32 into A13. Similarly, if someone tells you find the minor of 3 M32, so that means third row and second column will be gone. तो जब M32 हट गया, so you will be left up with A11, A21, A13, A23 का determinant. So again, this minus this. So A11 into A23 minus A21 into A13. Now we go ahead and we talk about the cofactor of any matrix. The cofactor is nothing but minor multiplied with minus 1 to the power I plus j. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने निकाला माइनर ऑफ A12 कुछ वैल्यू आया, so cofactor of A12 will be minus 1 to the power 3, क्योंकि ये सम 3 है ना, multiplied with this value, जो भी यहाँ पे वैल्यू आया है, ठीक है। So minus 1 to the power 3 means minus 1. Similarly, suppose someone tells me find the minor of A33. So find the cofactor of A33. So it will be minus 1 to the power 6 M33. Because even power it will just be 1, so it will be M33. So it is simply going to be C33 will be nothing but M33. C33 सिर्फ M33 ही होगा. Is it making some sense? So we can go ahead and say that whenever we have to find the cofactor of any matrix, अगर किसी भी matrix का cofactor निकालना है, so this will be the formula. Now let us go ahead and let us talk about the determinant of the matrix. So the determinant of any matrix, suppose it's a 3 वाला matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब इसका मुझे क्या निकालना है? I have to find its determinant. मुझे इसका determinant निकालना है. So we can expand along any row or any column. So I am expanding along row 1. मैंने row 1 के along इसको expand किया. So what will I get? A11 into A22, A23, A31, A32. So row 1 के around expand करने में you take this element. जैसे you take the first element, you hide first row and first column, and जो भी आता है you write that. ठीक है? Then what you will do next is you will see the second element now, because I'm expanding around row 1 ना, तो मैंने second element देखा. And the second element sum is 3, which is odd. So I will put a negative sign. And now I will hide second row and first row and second column. So I will get A21, A31, A23, A32. ठीक है? And then plus A13. अब मैंने third के around करना है. So I will hide the first row and third column. And A21, A22, A31, A32. This is how you can write the determinant. अच्छा, notice करो that this is nothing but the minor. इसका minor अगर मैं बोलूँ find minor of M11, तो you will hide first row and first column and you will get this का determinant ना. Similarly, if I ask you find the minor of M12, so you will hide first row, second column and find the determinant of remaining. So you can very well notice that the determinant can also be written as A11 minor of A11 minus A12 minor of A12 plus A13 minor of A13. And you can notice that this is nothing but A11 into cofactor A11 plus A12 cofactor A12. क्योंकि negative of minor, क्योंकि ये odd number था sum, so negative of minor is just cofactor ना. So plus
A13 into C13. So we can say that this is the formula of the determinant of a 3x3 matrix. तो अगर मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट हम को फैक्टर के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं. एंड अभी आई हैव एक्सपैंडेड अलोंग रो 1, बट आप किसी भी रो के अराउंड एक्सपैंड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट दिस इज व्हेन यू एक्सपैंड अराउंड रो 1. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया. अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में दे गो एंड आस्क यू इज टू फाइंड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. The trace of the matrix is the sum of the elements lying along the principal diagonal. तो अगर हम उसका principal diagonal ले ले, this is called as principal diagonal बेटा. और इनके एलिमेंट्स को एड अप कर दे. इफ आई ऐड देम a11, a22, a33, if I add the elements जो principal diagonal में आ रहे हैं, then that is called as the trace of the matrix. Now there are multiple type of matrix. बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं matrix के. These are the definitions of those. जैसे symmetric matrix is a matrix where A and A transpose are equal. Skew symmetric is a matrix where A is equal to minus A transpose. ठीक है. So I want all of you, जैसे Hermitian matrix is a matrix where A is equal to conjugate of A. ठीक है. जैसे skew Hermitian is A is equal to minus conjugate of A. Orthogonal matrix is a matrix where A transpose into A is equal to identity matrix. And unitary matrix is a matrix where A theta into A is equal to identity matrix. Right? So you can go ahead and you can just read these definitions. Idempotent matrix वो matrix है जहाँ पे square of A is A itself. Nilpotent matrix वो matrix है where A to the power K is 0. Involuntary matrix is that matrix where A square is equal to identity matrix. So ये बहुत important definition है on the type of matrix and all of you have to go ahead and do them. ठीक है. So we will take one question. ये ले लेते हैं बेटा. It says 3A is equal to 1, 2, 2, 2, 1 minus 2, x 2 y. And A into A transpose is identity matrix. Then find x plus y. तो A transpose निकालते हैं. Find A transpose बेटा. Go ahead. And then find x plus y. Take a minute, write the answer in the chat window. लिखिए. तो देखो, एक तो इसको करने का थोड़ा डिफिकल्ट तरीका हो सकता है कि 3A इज गिवन, तो आप A निकालो, फिर उसको A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो एंड देन यू सॉल्व इट. देयर कैन बी वन वे विच कैन बी दिस. दूसरा मेथड, द अदर मेथड कैन बी that we know that A into A transpose is given to us as orthogonal matrix. ठीक है. उसको उन्होंने बता दिया गया है कि इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. सो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है मैम? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? सो नंबर 1, A इंटू A ट्रांसपोज जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है.
अभी हमें नहीं पता, आई विल जस्ट टेल यू इन अ मिनट, बट इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, तो यूजुअली we know that when we multiply anything with its inverse we should get 1. बहुत basic terms में देखो, if I have 4 and उसका inverse है 1, by 4 if I multiply I'll get 1. If I have 8, I multiply it with its inverse, I'll get 1. So similarly, whenever I multiply any matrix with its inverse, so I get identity matrix. This is always true. And this is true because हमें question में दिया गया है. So from this, I get an important conclusion that A transpose should be equal to A inverse. This is a very, very important conclusion that A transpose and A inverse will be equal to each other. Okay. Now, whenever A transpose is equal to A inverse, तो एक और property आ जाती है that in such cases the determinant of these properties is plus minus 1. जब भी हम इन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, सच मैट्रिसेस, द डिटरमिनेंट ऑफ दीज मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1. ठीक है. सो इफ दिस इज ट्रू, अगर इसके डिटरमिनेंट का अगर इफ यू फाइंड द डिटरमिनेंट इट इज प्लस माइनस 1, सो देखो जरा ध्यान से, come back to the question. So determinant of A should be plus minus 1. So what should be the determinant of 3A beta? Determinant of 3A क्या होना चाहिए? So अब यहाँ पे I need to make you understand the determinant properties, right? So we want to just go to the chapter of determinants for a minute. I will come back. हम बाकी की बात अभी करेंगे adjoint and इन सब की, but I want to go to the chapter of determinant. फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे. हाँ जी. तो हमें पता चल गया कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे. वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट हाउ टू फाइंड माइनर, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट. ठीक है. नाउ आई वांट टू डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स फर्स्ट, देन वी विल मूव बैक टू दैट चैप्टर. अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहता है दैट व्हेनेवर यू इंटरचेंज एनी टू रोज, then always whenever any rows or columns are interchanged, then the sign will change. जैसे सपोज मेरे पास अगर एक है A1 A2 B1 B2, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला, एंड नाउ आई इंटरचेंज, आई मेक द फर्स्ट रो सेकंड एंड सेकंड रो फर्स्ट. माने मैंने B1 B2 को ऊपर कर दिया एंड A1 A2 को नीचे कर दिया. व्हेन आई इंटरचेंज द रोज, then the determinant will be multiplied with the minus 1 sign, right? So that's the first property, that whenever you if two rows and determinants are interchanged, the sign of the determinant will change. The second property is that if the number in one row is added m times the number in the second row, then the value of the determinant will remain unaltered. मतलब कि supposedly यहाँ पे मेरे पास है 1 1 4 3, and now if I go ahead and I add 1 plus sometimes the second row, 1 plus sometimes the second row, and if I find इसका determinant, तो it will be same as the original determinant. Same ही आएगा. The third thing that we have here, right, is that no, not yet. The applications are not open, beta. The third thing that we have here is that if row and column are interchanged, the value of the determinant remains unaltered. मतलब कि if I go ahead and if I bring a transpose of the matrix, चाहे मैं A का determinant निकालूं या transpose का determinant निकालूं, both of them are the same. Both of them are equal, right? The next property that हाँ लेंगे बेटा, we'll take all questions, don't worry. जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ऑल द नंबर्स इन एनी रो आर जीरो, अगर कोई भी डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं जिसमें से एक रो ऑल जीरोस का है या एक कॉलम ऑल जीरोस का है, तो द डिटरमिनेंट विल बी जीरो. डिटरमिनेंट उसका जीरो हो जाएगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं, माने सपोजिटली
फर्स्ट रो 1 2 3 है और दूसरा रो भी 1 2 3 है, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट विल बिकम 0, उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड विद m तो डिटर्मिनेंट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद m। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 1 2 3 1 1 0 4 5 3 का, अब अगर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इफ आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विथ 4 तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विथ 4, वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वेन एवर आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 या एनी नंबर, द न्यू डिटर्मिनेंट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इन चीजों को देखते हुए। लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व अ क्वेश्चन। देखो ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव कि इसका डिटर्मिनेंट ये आता है। सो लेट्स ट्राई टू गो अहेड एंड डू दिस। बहुत ही सिंपल है। आई कैन क्लियरली नोटिस दैट रो 2 रो 1 कैन बी रिटन एज रो 1 माइनस रो 2। अगर मैं ऐसा करती हूं आई गेट 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, बी बी स्क्वायर 1, सी सी स्क्वायर। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, आई नो दैट दिस मीन्स आई कैन राइट इट एज 0 a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और रो 2 को हम लिख सकते हैं 1 बी बी स्क्वायर, और रो 3 को हम लिख सकते हैं 1 सी सी स्क्वायर। एंड रो 1 में से मैं a माइनस बी कॉमन आउट कर सकती हूँ, सो आई विल गेट 0 1 a प्लस बी 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं ना कि रो 2 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3, तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 a प्लस बी 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। और फिर से हम वही करेंगे दैट रो 2 में ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है इसको मैं लिख दूंगी बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एंड आई विल टेक बी माइनस सी आउट, तो यह जगह ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये जगह 0 1 ए प्लस बी 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। अब बस आप एक्सपैंड कर लो अलोंग कॉलम 1, तो ये तो एलिमेंट 0 है, सो यू विल गेट a माइनस बी माइनस सी, सिर्फ लास्ट एलिमेंट ही बचेगा, अदर आर 0। तो जब आप इसके अराउंड एक्सपैंड करोगे यू विल गेट 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और बी कैंसिल हो जाएगा, सो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रही है? इज इट मेकिंग सम सेंस? है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो और प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसमें पहली आ जाती है सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सम ऑफ डिटर्मिनेंट बोलता है कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स, आई हैव अ मैट्रिक्स, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और आया D1। आई हैव अनदर मैट्रिक्स, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला एंड आई गॉट D2। सो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द, सपोज ये मैट्रिक्स 1 हो गया जिसका डिटर्मिनेंट D1 आया, मैट्रिक्स 2 जिसका डिटर्मिनेंट D2 आ गया। सो व्हाट विल हैपन टू द मैट्रिक्स D1 प्लस D2? इसको क्या होगा? आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 1 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है 4 1 0 1। बेटा व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस? 0 माइनस 2 माइनस 2। व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस? 4 माइनस 0 4, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल डिटर्मिनेंट? -2 + 4 माने +2।
अच्छा एक बात बताओ, इफ आई सम दीज टू मैट्रिक्स टुगेदर तो क्या आएगा? 1+4, 2+1, 1+0, 0+1, सो 5, 3, 1, 1। और अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट आई विल गेट? 5 - 3 माने 2। तो इट मीन्स दैट जब मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया एंड इसका डिटर्मिनेंट निकाला, एंड व्हेन आई फर्स्ट फाउंड आउट द डिटर्मिनेंट एंड देन आई एडेड, एम आई गेटिंग द सेम आंसर? क्या मुझे आंसर सेम मिल रहा है? यस, आई एम गेटिंग द सेम आंसर, राइट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे प्रूफ की है, राइट? अब बेस्ड ऑन दैट कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी गो अहेड एंड वी कैन गेट नोट्स? यस, नोट्स विल बी गिवन, डोंट वरी। तो ये किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी गो अहेड एंड गेट? कुछ ऐसा, you will be given a matrix and they will ask you prove that summation ak is 0। ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, all of you will go ahead and try this question, ठीक है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊंगी। जैसे मैट्रिक्स ए है, ये है 1, 1, 0, 2, और एक मैट्रिक्स है 2 टाइम्स ए, सो आई मल्टीप्लाई इट विद 2, मेरे को मिलेगा 2, 2, 0, 4। एंड आई आस्क यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप बोलोगे मैम 2 - 0 दैट मीन्स 2। एंड फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो आप बोलोगे मैम 8 - 0 दैट मीन्स 8। बेटा कैन आई राइट a एज 4 × 2? यस मैम, लिख सकते हैं। एंड कैन आई राइट 4 एज 2 to the power 2 × 2? लिख सकते हैं मैम। कैन आई राइट दिस एज 2 to the power 2 into द डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट 2 था? यस मैम। तो अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 2 to the power 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बेटा ये जो 2 यहां है, दिस 2, दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, बिकॉज दिस वॉज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, दो रो था, दो कॉलम था, दैट इज वाई यू हैव पावर 2। रिमेंबर, डिटर्मिनेंट हम निकाल ही सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कर सकते हैं, वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए वी कैन गो अहेड एंड वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। बट अब हम ये बोल रहे हैं कि व्हेन वी गो अहेड, सपोज इट वुड हैव बीन अ 3 × 3 मैट्रिक्स, और मैं आपको बोलती फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो आप बोलते हैं मैम इट विल बी 2 to the power 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट मीन्स 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। आई यू अंडरस्टैंडिंग? की बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब और आगे देखते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इनसाइड अ मैट्रिक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, यू एक्स, ऐसे करके एक फंक्शन दिया हुआ है, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग अहेड एंड सेइंग कि इफ आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है एफ एक्स का, सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स बेटा? स्मॉल एफ एक्स इंटू यू एक्स माइनस एच एक्स इंटू जी एक्स। आई कैन राइट द डिटर्मिनेंट लाइक दिस। मैं वेरी वेल डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये बात समझ में आती है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ और बहुत ध्यान से सोच के बताओ बेटा, सपोज मैं आपको बोलूं कि फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स निकालना है। सो हाउ विल यू गो अहेड एंड हाउ विल यू फाइंड एफ डैश एक्स? हम एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकते हैं?
एक चीज जो हमें समझनी होगी कि लेट्स से मेरा जो फंक्शन है, सपोज आई गिव यू द फंक्शन एज एफ एक्स इंटू यू एक्स माइनस एच एक्स इंटू जी एक्स। सपोज आपको ये फंक्शन दे दो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? we'll have to use product rule. So differentiation of first function, second as it is, minus plus differentiation of second function, first as it is. फिर से differentiation of first function, second as it is. Differentiation of second function, first as it is. ऐसे ही हम डिफरेंट, ऐसे ही we can find ना. So this will be f dash x ux, u dash x fx, h dash x gx, g dash x hx. ठीक है, दिस विल बी माई डिफरेंशिएशन। यही होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस डिफरेंशिएशन को इफ आई गो अहेड एंड इफ आई हैव टू थिंक अबाउट दिस डिफरेंशिएशन, अगर मुझे इस डिफरेंशिएशन पे थोड़ा और ध्यान देना पड़े, सो आई कैन राइट इट लाइक f dash x ux minus g dash x hx plus u dash x fx minus h dash x gx। ऐसा करके लिख सकते हैं इसको। एंड इफ यू विल नोटिस, तो इस चीज को आई कैन गो अहेड एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस, f dash x ux, क्योंकि डायगोनल्स मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस g dash x hx। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यू विल गेट दिस, प्लस fx gx u dash x h dash x। यही तो होगा, isn't it? So again, if you find the determinant of the second matrix, तो आपको ये मिलेगा u dash x into fx minus h dash x into gx. Won't you get the second one? So you can notice, ये थोड़ा सा interesting aspect है। You can go ahead and you can notice कि जब हमने एक function को differentiate किया, f dash x निकाला, तो it is the sum of two determinants। ये दो determinants का सम आता है, जिसमें से the first one is obtained by differentiating the first row, keeping second as it is, and plus the second one is obtained by differentiating the second row and keeping first as it is. Is it making sense? तो जो मेरा फंक्शन fx है, उसका डिफरेंशिएशन कैन बी सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, जिसमें फर्स्ट में वी डिफरेंशिएट द टॉप रो एंड सेकेंड में डिफरेंशिएट द सेकेंड रो। इट्स अ गुड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब दैट दिस इज डन, नाउ आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे। सो नाउ देखो, आई नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दैट शुड बी प्लस और माइनस वन। इज इट क्लियर? ये तो होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए जो होगा, बिकॉज देर आर थ्री रोज इन इट, सो इट विल बी 3 to the power 3 determinant of A. That means it will be 27 determinant of A. So that means it should be plus minus 27. अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स का? अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो व्हाट विल बी इट? सो 1 1 minus 2 2y minus 2, so second row and second column will be gone, 2x minus 2y plus 2 2x 1 2। यही होगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 1 y minus minus 2, so y plus 4 minus 2
2y minus 2x, so plus 2x plus 2, 4 minus x. तो ये हो जाएगा y plus 4 minus 4y minus 4x plus 8 minus 2x. तो बेटा this will be 8 plus 4, 12 minus 6x minus 3y. And this should be plus minus 27. This should be plus minus 27. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती है, इतना समझ में आता है. So now you can use this to find जो भी आपको निकालना था, find x plus y. ये I am leaving you as a homework to try. ठीक है? You can give it a try and you can find the value of x plus y. ठीक है? Answer should be minus 3. Okay. अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जब हम सारे कोफैक्टर्स मैट्रिक्स के निकाल लेते हैं तो उससे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाते हैं. और जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाते हैं तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1, तो पहले तो हमने निकाला M11 M12 M21 M22. M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो यू गेट 1. M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दो सो यू गेट 3. M21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो सो यू गेट 2. एंड M22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दो सो यू गेट 1. दीज आर योर माइनर्स, ये आपके माइनर्स हैं. To find the cofactors, you will change the sign. So 1 का 1 रहेगा, 3 का -3 बन जाएगा, 2 का -2 and 1 का 1. Now, usually it is M11, M12, M21, M22 ऐसे ही आता है. But its transpose will be M11, M12, M21, M22. Even in terms of cofactors, जब हम transpose निकालेंगे, so rows will become column and column will become row. तो जब हम इसका cofactor निकालेंगे, it will give me 1, -3, -2 and 1. This is called as adjoint of the matrix. तो matrix का adjoint basically कुछ नहीं होता है, but the adjoint of the matrix is basically when you go ahead and when you find the transpose of the cofactor matrix, उसको हम adjoint बोलते हैं. 2 cross 2 matrix में you will always notice that these two change position. Diagonals अपना position change करते हैं, off diagonal अपना sign change करते हैं. You will always notice that. So you will notice that these two change their position and these two change their sign. तो मतलब अगर मेरे पास 1 5 7 9 है, so इसका adjoint will become 9 1. ये दो अपना position बदलेंगे और ये दो अपना sign बदलेंगे, so -5 -7. You will always notice कि ऐसा ही हो रहा है. This is what is going to happen. Now let us go ahead and talk about the inverse of the matrix. तो सबसे पहले inverse of matrix के लिए it is important कि वो एक square matrix हो, क्योंकि एक square matrix ही ऐसा matrix है जिसका determinant can be found out, जिसका आप determinant निकाल सकते हो. अब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट रूल ये है कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. क्यों? बिकॉज द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट. सो व्हेनेवर एनीथिंग कम्स इन द डिनोमिनेटर, अगर डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो एनीथिंग इन p by q फॉर्म बट q नॉट इक्वल टू 0. सो डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता है, it cannot be equal to 0. So which means automatically that we are saying that the inverse of the matrix will exist only if the determinant is non-zero. ये बात समझ में आती है? Now we have certain properties, कुछ properties हैं जो आपको समझनी होंगी. That a b का inverse is b inverse a inverse, right? Similarly a के transpose का inverse
इज ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, राइट? सिमिलरली ए इनवर्स का कॉन्जुगेट इज फर्स्ट कॉन्जुगेट एंड देन इनवर्स, ठीक है? दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू रिमेंबर। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और ये डेफिनेशन है रिलेटेड टू द सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if the determinant of the matrix is zero। अगर determinant किसी matrix का zero है, if the determinant of the matrix is zero, then that matrix is called as a singular matrix। उसको हम एक singular matrix बोलते हैं, right? So now what happens is that we have to go ahead and learn some elementary transformations on the matrix। I'll teach you that through one example। So suppose it says how to find inverse using elementary ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन? ध्यान से समझना। सो सपोज इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। दिस इज द मैट्रिक्स दैट आई हैव, और मेरा एम क्या है? व्हाट इज माय एम? कि आई हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स। सो आई नो कि A into A inverse gives me identity matrix, right? So what I am going to do is कि simultaneously I will write an identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। and मेरा aim क्या रहेगा? what will be my aim? कि to find the inverse of this matrix I will go ahead and perform some row operation या column operation on this matrix। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी इस तरीके से, सच दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिक्स, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इट कन्वर्ट्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड इन द प्रोसेस टू डू सो, जब मैं ये कर रही होंगी, जो भी मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द इनवर्स। उसको मैं अपने मैट्रिक्स का इनवर्स बोल दूंगी। इज इट मेकिंग सेंस? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफॉर्म करते करते, लेफ्ट हैंड साइड को अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते बनाते, राइट हैंड साइड में मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। यस, खाया। आई होप आपने भी खाया। ओके, सो जो मेरा राइट हैंड साइड में चेंजेस आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल इन दिस केस। तो देखो क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने लिखना है R2 goes to R2 minus R1, right? So what we are going to go ahead and what we are going to do is that we are going to go ahead and we are going to do some transformations। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान रहेंगी। पहले हमने लिखना है R3 goes to R3 minus R3 से शुरू करते हैं, 3 times R2। तो ये हो गया 0 1 2 1 2 3 3 minus 3 बेटा 0 1 minus 3 times 2, so 1 minus 6 minus 5 1 minus 3 times 3, so 1 minus 9 minus 8। और जब मैंने यही सेम यहां पे परफॉर्म किया, सो आई गेट 1 0 0 0 1 0 0 minus 3 times 0 0 1 minus 3 times 1 minus 3 1 minus 0 1। बात समझ में? आई एम परफॉर्मिंग ऑन बोथ। जो लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे वही राइट हैंड साइड पे करोगे, बट द एजेंडा इज दैट द लेफ्ट हैंड साइड, जो ये वाला साइड है,
it converts into an identity matrix. That is what my agenda is, that this should become identity. Clear? Achha, now what we can do is we can say that R3 goes to R3 divided by माइनस, अच्छा बाद में कर सकते हैं ये, आई डोंट वांट टू डू अ कॉम्प्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे ना कि वी कैन से आई वांट टू मेक दिस ऑल्सो this 2, I want to make this 2 into 1. So I can say R2 goes to R2 minus R1. So 0, 1, 2, 1, 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 0, minus 5 minus 8, 1, 0, 0, 0 minus 1 minus 1, 1, 0, 0 minus 3, 1. ठीक है, अब हमें फिर से कुछ करना पड़ेगा, बट अब मुश्किल है बिकॉज आई कैन नॉट मेक दिस 0, कुछ है ही नहीं 0 बनाने के लिए आसपास. सो आई विल जस्ट interchange. So R2 and R1 I will interchange. And I will get 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, minus 5 minus 8, minus 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, minus 3, 1. ठीक है, अब फिर से कर सकते हैं कि ओके R, अब देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आई एम गेटिंग 1. I have to make this 0. So R1 goes to R1 minus R2. So 1, 0, 1 minus 2 minus 1, 0, 1, 2, 0, minus 5 minus 8. ठीक है, now what I have to do is कि I have to make this 0. So I can say R3 goes to R3 plus 5 times R2. So 1, 0, minus 1, 0, 1, 2, 0, minus 5 plus 5, 0, and minus 8 plus 10, 2. Or right hand side you can solve later. Maybe left hand side पे focused हूँ. So R3 goes to R3 divided by 2. तो 1, 0, minus 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. And now R1 goes to R1 plus R3. So 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. And finally R2 goes to R2 minus 2 times R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So left hand side finally has been converted to identity matrix. ठीक है, after performing all these operation left hand side has been converted to identity matrix. अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो गई, अब राइट हैंड साइड में वो सारा परफॉर्म कर दो ऑपरेशन. सो R1 माइनस R2 माने माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, minus 3, 1. उसके बाद R3 goes to R3 plus 5 times R2. So minus 2, 1, 0, 0 plus 5, 5, minus 3 plus 0, minus 3, 1, 1, 0, 0. फिर R3 by 2. तो minus 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5 by 2, minus 3 by 2, 1 by 2. Plus R1 plus R3. तो minus 2, 5 by 2 is 2.5 ना, तो minus 2 plus 2.5 माने 0.5. This is minus 1.5. तो 1 plus minus 1.5 minus 0.5 and 0.5. तो 1, 0, 0, 2.5 minus 1.5 and 0.5. अब आता है R2 goes to R2 minus 2 times R3. तो 0.5 minus 0.5, 0.5. 1 minus 2 times 2.5 बेटा. 1 minus 5 minus 4. 0 minus 2 times minus 1.5
तो ये हो गया 3, ठीक है, एंड 0 - 2 टाइम्स 0.5, सो -1, 2.5 -1.5, 0.5, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। सो ऐसे करके व्हेन यू विल परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस, यू विल गेट दिस एज द आंसर, जो भी हमारा है। कैन यू चेक दिस? यू विल गेट दिस एज द आंसर, एंड दिस विल बी योर इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसमें ऑपरेशंस में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, व्हाट वी गो ahead and do, क्या करने की कोशिश करते हैं हम? वी बेसिकली गो अहेड एंड वी कन्वर्ट ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो ऑपरेशन करने के प्रोसेस में जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आता है, दैट इज कॉल्ड एज योर ए इनवर्स। ठीक है, इट्स अ लेंदी मेथड, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस आई हैव डन वन क्वेश्चन ऑन इट। गिव मी अ मिनट, लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग एज वेल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। The rank of any matrix is basically that matrix, highest order matrix, जिसका determinant is नॉन जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका determinant नॉन जीरो है, that is called as the rank of the matrix। माने सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है which is 3 by 3, एंड जब हमने इसका determinant निकाला that is नॉन जीरो, then rank of the matrix is 3। But suppose if I have a matrix which is 3 × 3 and I find its determinant और वो जीरो आ जाए, तो फिर then I will look into all 2 × 2 matrix within it। ठीक है, and the rank will then be 2 अगर 2 × 2 matrix का determinant नॉन जीरो होता है। So to take you through an example, जैसे determinant, जैसे A is a matrix, और ये matrix A है 1 2 1 2 4 2 1 0 0। अब यू विल नोटिस कि जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे दैट विल बी जीरो। ठीक है, सो इट इज जीरो। आपने जब डिटरमिनेंट निकाला क्योंकि वो जीरो आ रहा है, तो नाउ यू विल पिक 2 × 2 matrices, सब मैट्रिक्स निकालोगे आप, एंड यू विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट सब मैट्रिक्स। आप उस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, एंड व्हेन वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, वी फाइंड दैट दैट इज कमिंग आउट टू बी नॉन जीरो। सो इट मीन्स दैट द रैंक विल बी 2। 3 तो नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। So then you find out the determinant of 2 × 2 matrix, और अगर वो नॉन जीरो आ जाएंगे, so that will become the determinant, that will become the order of the matrix, actually the rank of the matrix, right? That will be the rank of the matrix। ठीक है, अब हम बात करते हैं homogeneous system of equations की। If I have a system of equations such as ax is equal to 0, अगर मेरा right hand side जो है वो जीरो है, then that is called as homogeneous linear equation। उसको हम homogeneous system of equation या homogeneous linear equation भी बोलते हैं, right? Now whenever I have homogeneous linear equation या homogeneous system of equation, माने ax is equal to 0 हो जाता है, then we have two cases। if determinant of a is 0, then this system of equation has infinite solution, and if determinant of a is non-zero, then it has only one solution, which is the zero solution, and this is called as a trivial solution। इसको हम एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सपोज मैं आपको बोलूं, पहले एक बेसिक एग्जांपल समझो, दैट x + 2y = 4, सॉरी = 0। 2x + y = 0। तो आप बोलोगे मुझे कि मैम राइट हैंड साइड जीरो है ना, तो एक फिक्स सॉल्यूशन तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि x एंड y आर बोथ जीरो। दिस विल ऑलवेज सॉल्व दिस।
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इजंट इट ट्रू? आप x को 0 पुट करो, आप y को 0 प्लग इन करो. When you will plug x as 0 and when you will be plugging y as 0, you will notice कि it will always go ahead and always solve. वो हमेशा आपको सॉल्व करके ही देगा, राइट? जस्ट पुट 0 प्लस 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 0 प्लस 0 0. माने x 0 and y 0 is always a solution. But क्या इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन? दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग. So we are saying that if the determinant of the matrix is non-zero, then this is the only solution. सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका कि x equal to 0 and y equal to 0, right? But if, thank you beta, thank you so much. But if we go ahead and if we say that determinant of a जो है वो 0 है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल रहे हैं that there can be more solutions. इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं. समझ रहे हो बात को? सो यहां पे अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है. व्हाट्स द क्वेश्चन बेटा? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0. 7x प्लस 10y प्लस 12z इज इक्वल टू 0. एंड आई एम टेलिंग यू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस वन. तो आप बोलोगे मैम दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या तो फिर इसका देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन. और मैम अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो x y एंड z को 0 वैल्यू लेना जरूरी है. सम ऑफ 0 0 0 ही तो 0 होता है मैम, 0 होना जरूरी है. तो मैं पूछ रही हूँ मैम व्हेन विल दिस हैपन, ये कब होगा और ये कब होगा? सो यू विल टेल मी मैम ऐसा करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और मैट्रिक्स बनेगा इसके कोएफिशिएंट से. सो 1 2 3 3 4 4 7 10 12. बेटा ये मैट्रिक्स बन गया और इसका हम मैम निकाल लेते हैं डेटरमिनेंट. ठीक है बेटा, डेटरमिनेंट निकाल लो. सो डेटरमिनेंट विल बी 1. 1 को ब्लॉक किया तो 4 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 10. फिर हमने लिखा -2. सो -2 हमने किया तो ये वाला ब्लॉक करेंगे. 3 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 4 और +3. 3 किया तो ये ब्लॉक करेंगे बेटा. सो वी विल गेट 30 माइनस 28. So what will we go ahead and what will we get? 12, 24, 36, 48 minus 40 minus 2. 12, 24, 36 minus 28 plus 3 into 2. तो you will get बेटा 8 minus 2, ये हो गया 8 plus 6. अगर ये 0 आता है, if this determinant is 0, तो then we can say that there will be infinite solution. हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. और अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो उस केस में वी आर सेइंग कि देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये मैं आपको छोड़ती हूं कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और मुझे बताओ कि क्या ये 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है. अगर नॉन जीरो आएगा तो सिंपली एग्जाम में आप लिख देना कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है? तो इस केस में क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आ रहा है, तो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो सिंपली हम एग्जाम में मार्क कर देंगे x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. फाइनली अब हम आज बात करने वाले हैं बेटा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस इक्वेशंस की.
होमोजेनस इक्वेशन क्या थी? जिसमें हमारा राइट हैंड साइड जीरो था, जिसमें हमने किया था कि ax इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड जीरो थी। इसमें वी सॉ दैट देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, दो ही पॉसिबिलिटीज है। इफ डेटर्मिनेंट वाज जीरो तो देयर वर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। एंड इफ डिटर्मिनेंट वाज नॉन जीरो तो एक यूनिक सॉल्यूशन था, और वो यूनिक सॉल्यूशन को हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला था। मतलब एक्स और वाई का एक ही वैल्यू रहेगा विच विल बी जीरो। दिस वॉज पॉसिबल, ये ट्रू तब हुआ जब हमने बात किया विद होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बट अब हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। और नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें द राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो। मतलब ऐसा कुछ, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तब हम उसको नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। अब अगर नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो तीन चीजें पॉसिबल हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन माने ऐसा कुछ बेटा कि मेरे पास दो लाइंस हैं और वो यूनिकली एक पॉइंट पे मीट करती हैं और यही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है। बेटा दूसरा हमारे पास आ जाता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास दो लाइंस हैं और वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, दे विल नेवर मीट, मतलब दे आर पैरेलल लाइंस, इन विच केस देर विल बी नो सॉल्यूशन क्योंकि देर इज नो इंटरसेक्शन। बेटा तीसरा हमारे पास आ जाता है इन विच वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं when the lines coincide with each other, ए और बी मिक्स हो गए, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है हमारे पास, दे हैव कोइंसाइडेड विद ईच अदर। जैसे ऐसा कुछ कि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एट। अब आप देखोगे इन दिस केस दैट दीज आर द सेम लाइंस ओनली, ये एक ही लाइन है। क्योंकि सेकेंड लाइन में अगर मैं टू कॉमन ले लूं और टू को दूसरा साइड पे ले जाऊं, सो आई विल गेट बैक द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन एक ही चीज है, देयर इज ओनली वन लाइन। और जब एक ही लाइन है और दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का तो बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है ना। देखो अगर मैं एक्स को वन रखूंगी और वाई को 1.5 रखूंगी तो भी फोर आंसर आएगा, राइट। 1.5 इंटू टू थ्री होता है, थ्री प्लस वन फोर होता है। अगर मैं एक्स को जीरो रखूंगी, वाई को टू रखूंगी तो भी सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। अगर मैं एक्स को फोर रखूंगी, वाई को जीरो रखूंगी तो भी इक्वेशन सॉल्व होगा। सो इट मीन्स देयर विल बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इनफाइनाइट एक्स और वाई हो सकते हैं, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक्स को -100 रख दूंगी, हाँ, और बाय को 104/2 क्या होता है 52 रख दूंगी तो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सो देर आर मल्टीपल वैल्यूज, एक्स और वाई का इनफाइनाइट वैल्यूज है, बहुत सारा वैल्यूज है विच विल सॉल्व दिस इक्वेशन। क्योंकि देर इज ओनली वन इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन तो रिडंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है दूसरा इक्वेशन का। द सेकेंड इक्वेशन कैन वेरी वेल बी रिटर्न एज फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो एक ही इक्वेशन है, वन इक्वेशन टू वेरिएबल, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब तीन कंडीशंस आ जाती हैं फॉर अवर दिस केस, जब हमारे पास ये है नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सो देयर आर इनफाइनाइट थिंग्स व्हिच कैन हैपन, राइट। उन्हीं इनफाइनाइट चीजों में, अमंग द इनफाइनाइट थिंग्स व्हिच कैन हैपन, ये एक हो जाता है दैट देयर कैन बी थ्री काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये तीन सॉल्यूशन जो हैं, इन सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं मैम, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट देम? तो अगर नंबर वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। नंबर टू, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन।
ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा। तो अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो बनता है, तो हमारे पास दो केसेस आते हैं जिसको हम बोल देते हैं यूनिक, नो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो मैम अब इस केस में हम कैसे सॉल्व करें? हाउ डू वी गो एंड नो कि कौन सा आंसर होगा? तो उसमें हम निकालते हैं एक नई चीज जिसको हम बोल देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वी गो अहेड एंड वी कॉल दिस एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखो, ये लास्ट टॉपिक है इसका, हाँ, सो पूरा का पूरा अटेंशन देके पेशेंटली इसको समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? हम 1 2 के साथ साथ यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड 2 4 के साथ साथ यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, सो 1 2 के साथ मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 2 4 के साथ यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, और हम कुछ रो ऑपरेशंस करेंगे। सो आई परफॉर्म द रो ऑपरेशन R2 गोज टू R2 माइनस R1, और मेरे पास रो ऑपरेशन में आ जाएगा 1 2 4 माइनस 2 टाइम्स R1 करो तो 2 माइनस 2 हो जाता है 0, 4 माइनस 4 हो जाता है 0, 8 माइनस 8 हो जाता है 0। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 होने पे right hand side is also 0, so we can say that there will be infinite solution. There will be infinite solution. इस उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। फिर से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, 1 2 2 4 4 9। फिर से मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 1 2 4, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 बेटा 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 टाइम्स 2 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 8 1। माने यहां पे तो जीरोस हैं परफॉर्म करके ऑपरेशन, बट यहां पे नॉन जीरो है। इफ इट हैपेंस दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल जीरोस, यहां पे ऑल जीरोस आ रहे हैं, बट द राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो, यहां नॉन जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं दैट दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। तो एक बार ही सबसे पहले आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या आता है यहाँ पे बच्चे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स माने लेफ्ट हैंड साइड से डिटर्मिनेंट बनाया हमने, डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 2 4 का। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो हमें क्लियर है कि आप यूनिक सॉल्यूशन है सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, जैसे इन दिस केस इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो फिर इन दैट केस वी विल फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो फिर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, राइट। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आफ्टर मेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने चेक किया दैट आर द लेफ्ट हैंड साइड जीरोस फॉलोड बाय राइट हैंड साइड जीरो, या लेफ्ट हैंड साइड जीरो फॉलोड बाय राइट हैंड साइड नॉन जीरो। अगर यहां जीरोस है और यहां पे भी जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर यहां पे जीरोस है और यहां पे नॉन जीरो है सो नो सॉल्यूशन। अब मैम इसको फॉर्मली कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट दिस फॉर्मली? सो फॉर्मली वी गो अहेड एंड वी से इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। हम इसको फॉर्मली रैंक की टर्म्स में अच्छे से समझा सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। रैंक्स के टर्म्स में कैसे समझा सकते हैं मैम? इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक क्या था?
कि कौन सा वो डेटरमिनेंट होगा जो नॉन जीरो होगा, किस ऑर्डर के मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखना एक बारी बेटा, वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बना है वो बना है 1 2 2 4 4 8। ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए गिवन बी। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इट्स रैंक, तो आप बोलोगे मैम वी विल फाइंड ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस इसमें। तो ये मैट्रिक्स ले लो एक 2 by 2 का, इसका डिटरमिनेंट निकालो, यू गेट जीरो। फिर मैम ठीक है, अब ये 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, यूल गेट जीरो। आप जितना 2 by 2 मैट्रिक्स लोगे यू विल गेट द डिटरमिनेंट एज जीरो, मतलब रैंक कैन नॉट बी टू। तो आप मुझे बोल दोगे कि मैम रैंक हो गई 1, क्योंकि सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। अब मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ओनली ए, ए का डिटरमिनेंट निकालो। तो आप बोलोगे मैम ए का डिटरमिनेंट तो जीरो है, तो मैं बोलूंगी बेटा व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। तो आप बोलोगे रैंक ऑफ ए भी 1 है मैम। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए दोनों ही इक्वल हैं। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया था, वहां पे हमारा मैट्रिक्स ए जो था, द मैट्रिक्स ए दैट वी हैड राइट, यहां पे देखो इट वाज 1 2 2 4। तो मैट्रिक्स ए था 1 2 2 4। और जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था ए गिवन बी बेटा, वो था 1 2 2 4। और राइट हैंड साइड क्या थी बच्चे, 4 9। अब मुझे बताओ कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, मतलब रैंक कैन नॉट बी टू, रैंक दो तो नहीं हो सकता है। तो इसका जो रैंक आएगा वो सिंगल एलिमेंट की वजह से आएगा कि सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो है, ये एलिमेंट्स नॉन जीरो है सिंगल एलिमेंट, इसलिए रैंक विल बी 1। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, चेक हियर। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स, अगर मैं इस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट चेक करूं, इफ आई चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 2 4 4 9, तो इसका नेट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। चेक करो, 18 - 16 2 आ रहा है, माने क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो इसकी रैंक हो गई 2, इसकी रैंक है 1। सो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कम आ रही है, इट इज कमिंग लेस। Then we can go ahead and we can say that this is inconsistent. ये बात समझ में आती है? So I hope this concept, inconsistent माने no solution। हाँ, इसके साथ we have wrapped up everything related to system of equation। तो अब आप क्या करोगे ना, इसको you will read, screenshot लो, everyone take a screenshot, read this, everyone will read this thing। ठीक है, और based on that ये homework question है, do it, everyone will do this question। ठीक है, okay, so with this we come to the end of matrix and determinants। अब एक चीज रह गई है, I want to show you a question on how to solve using the method of determinants using Kramer's rule। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन ले लो एंड मैं बोल रही हूं कि टू सॉल्व दिस। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा, x + 4y + 4z is 7, 3x + 2y + 2z is 6,
9x plus 6y plus 2z is 14 and solve for x, y and z. सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। तो देखो करके देखते हैं कैसे होगा ये। सो व्हाट वी कैन डू, डिटरमिनेंट का मेथड यूज करना है। पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट का, 1 4 4 3 2 2 9 6 2। बेटा यहाँ बनेगा एक्स वाई एंड जेड और ये हो जाएगी 7 6 एंड 14। आई एम शोइंग यू वन, बाकी आप खुद निकालोगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, you will replace first column with this। तो मतलब आप लिखोगे यहाँ पे 7 6 14 4 2 6 4 2 2। इसका निकालोगे डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय इसका एक्चुअल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 3 9 4 2 6 4 2 2। ये एक्स हो गया। डिटरमिनेंट तो निकालना आता है, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द डिटरमिनेंट। Similarly, suppose if I tell you कि find the value of y, तो y के लिए आप क्या करोगे ना, if I have to find y, आप सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करोगे with this। So you will get 1 3 9 7 6 14 4 2 2 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट एक्चुअल, माने 1 3 9 4 2 6 4 2 2। ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड z, तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे विद दिस। सो 1 3 9 4 2 2 4 2 6 सॉरी एंड 7 6 14 डिवाइडेड बाय 1 3 9 4 2 6 4 2 2। ठीक है जी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड x, y एंड z। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज कॉल्ड एज क्रेमर्स रूल, इसको हम बोल देते हैं क्रेमर्स रूल। ठीक है जी। ओके, वी हैव आई हैव टॉट यू दिस। होमवर्क, आई एम zooming, all of you will do this as homework। give this question a try। ठीक है। so with this we come to an end of matrices and determinants। ठीक है। we'll take a break of half an hour, उसके बाद we will do limit and continuity। okay बेटा।
Hi, good afternoon, everyone. Today, we are going to go ahead and talk about limit, continuity, and derivatives. ठीक है, ये तीन चीजें we are going to go ahead and we are going to aim to finish them today. Let us begin by talking about what are limits, right? So, whenever we have to talk about limit basically is the foundation of calculus. कुछ भी पढ़ना है लाइफ में कैलकुलस रिलेटेड, तो उसका फाउंडेशन आता है लिमिट से। लिमिट के ऊपर ही वी डेवलप और हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो बेसिकली आता है लिमिट्स के थ्रू। अब लिमिट का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? So the meaning of limit basically is that limit x approaches a fx। अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो इसका मतलब है that x is approaching a, x is approaching a। अब x approaching a का क्या मतलब है? x approaching a का मतलब ये नहीं है कि x is equal to a, ना, that is a different thing। x approaching a का मतलब ये है that x is going close and close and close to a। x a के closer जा रहा है, but a के equal नहीं है, it's not equal to a। जैसे for example, if I go ahead and if I tell you that ये एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे I go ahead and I make a diagram which goes ahead and which shows something like this, that let's say that I have a here। नाउ व्हेन आई से x इज अप्रोचिंग ए, जब मैं बोलती हूँ कि x a को अप्रोच हो रहा है, इट बेसिकली गोज अहेड एंड इट मींस दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स ए, हम a की तरफ जा रहे हैं, राइट? सो a की तरफ हम कहीं से भी जा सकते हैं। आई कैन टेक अ नंबर लेस देन ए एंड गो टुवर्ड्स ए। सो आई कैन बी लेसर देन ए यहां से एंड गो टुवर्ड्स ए, एंड आई कैन बी मोर देन ए एंड गो टुवर्ड्स ए। मैं यहाँ कहीं से भी ए की तरफ जा सकती हूँ। सो एक्स अप्रोचिंग ए का मीनिंग हो गया दैट आई एम गोइंग टूवर्ड्स ए, मैं ए की तरफ जा रही हूँ। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट आई कैन गो टू ए फ्रॉम टू साइड्स। एक हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं ए की कम वैल्यू से ए की तरफ जाऊं, सो इट बिकम्स लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड आई कैन गो फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑल्सो, सो इट बिकम्स right hand limit। So we can have left hand limit also and we can have right hand limit also। ठीक है, so please understand यहाँ पे कि ये मैं I want to emphasize here कि it does not mean that x is equal to a। मैं a पे evaluate नहीं कर रही हूँ, I'm not putting x equal to a, I am just going towards a from both sides। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट ए। ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि ए पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दिस इज पॉसिबल। अब हम एक फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं लिमिट का। लेट अस अंडरस्टैंड अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सो व्हेन वी से लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसको हम फॉर्मली क्या लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या ऐसे कर सकते हैं दैट, लेट्स चेंज इट। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा greater than 0 such that when x minus a mod is less than delta, it implies fx minus l mod is less than epsilon। तो ध्यान से समझो व्हाट वी आर सेइंग। हम बोल रहे हैं कि ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है, ये बहुत छोटे 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 नंबर हैं। तो जब x और a के बीच का गैप बहुत ही कम हो जाता है, when the gap between x and a falls, x और a का गैप जो है वो बहुत कम हो जा रहा है, this is notice here। So we are saying when gap between x and a it falls,
to a very less number. Number is delta. जैसे if I say ma'am delta is 0.001, that means that the gap between x and a is less than 0.001. माने there is no gap only. Gap है ही नहीं, gap बहुत कम है x और a के बीच में. So we are saying when the gap between x and a is very less number, माने x is going towards a, तभी तो x और a के बीच का gap बहुत कम है, right? That is why the gap between x and a is less, because x is approaching a. So we are saying कि when x is going towards a, जब x a की तरफ जाता है, from both side कैसे represent किया? By taking absolute value. ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट गैप लेते हैं, सो गैप ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव. तो चाहे x इज मोर देन ए या लेस देन ए, बट x इज गोइंग टूवर्ड्स ए एंड दैट गैप इज वेरी स्मॉल, उनके बीच का गैप बहुत कम है, राइट? देन दिस इंप्लाइज दैट द गैप बिटवीन fx एंड l इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. तो जो हमारा फंक्शन है वो किसी l को अप्रोच कर रहा है. फंक्शन और l के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है. The gap between the function and L is very small. So if I just go back to this diagram, अगर हम इस diagram की तरफ आए एक बारी, so you notice that अगर हमें limits को explain करना है, that when we go towards any number from both side, जैसे यहाँ पे मेरा my a can be 6, a 6 है, and I am trying to go towards 6 from both side, तो मेरा जो फंक्शन है वो 0 की तरफ जा रहा है from both side. It is cutting the x-axis. So when my x is going towards a particular number, my function is going towards a particular number. मेरा function भी एक number की तरफ जा रहा है. When that happens, then we can go ahead and we can say that that is the limit of the function. उसी को हम limit बोल सकते हैं. ठीक है. Now there are two kind of limits. किसी भी function की दो limits होती है. The first limit that we have, that is called as left hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया that we are approaching the number a, but we are actually going ahead and approaching it from the left hand side. माने हम x जो है वो a की तरफ तो जा रहा है, but it is going from lesser values. वो less values से जा रहा है. Like for example, let's say my a is 4. So x is going towards 4, but values of x are less than 4. जैसे x का वैल्यू हो सकता है 3.99, 3.999, 3.99999. It is all closer to 4. 4 के बहुत पास है, but it is less than 4. So that is called as my left hand limit. The second one that I go ahead and I can have, that is called as my right hand limit. Right hand limit is basically limit x tends to a plus fx. Limit x tends to a plus fx. माने we are going towards the function. हम a की तरफ तो जा रहे हैं. We are going towards a, but we are taking all values more than a. So for example, again, if I have to approach 4, अगर मुझे 4 को approach करना है, so I'll take all values more. So I can take the value 4.01, 4.0001, 4.0001, 4.00001, and so on and so forth. माने मैंने सारा values more than 4 लिया. Although I am going towards 4, but I am taking values more than 4, then that is called as the right hand limit. अब when is the condition for limit to exist? एक किसी भी function का limit कब exist करता है? So the function limit exists. Limit तब exist करता है when limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx. तो जब ये दोनों equal हो जाएं, when limit x tends to a minus is equal to x tends to a plus, दोनों तरफ से function का same answer आए, then limit of the function exists. So if left hand limit is equal to right hand limit, then limit exists. And if left hand limit is not equal to right hand limit, then limit doesn't exist. तो फिर limit exist नहीं करेगी. ठीक
ठीक है। देयर आर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, बट इट इज गुड इफ यू ऑल्सो रिमेंबर दोज लिमिट्स। अगर आप उन लिमिट्स को याद कर लोगे सो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। सो द फर्स्ट वन इज लिमिट x approaches 0 sin x by x, this is 1. Limit x approaches 0 1 minus cos x by x is 0. Limit x approaches 0 1 minus cos x by x square is half. Limit x approaches 0 e to the power x minus 1 by x is also 1. So ये कुछ लिमिट्स हैं which are good and you can remember them. I will tell you ये कैसे आ रही हैं किसी एक को सॉल्व करके, but as of now you can just remember limit ln 1 plus x by x is 1 and limit x approaches 0 a to the power x minus 1 by x is 0. Is ln a. सो ये कुछ लिमिट्स हैं विच इट इज गुड, आपके लिए हैंडी रहेगा एग्जाम में इफ यू जस्ट रिमेंबर देम। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ लिमिट। सो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 को हम बोल देते हैं मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। Method of direct substitution basically बोलता है that let's take a function and let this function be x square plus 3 and I have to approach limit x tends to 2 fx. In such cases जब आपका फंक्शन एक बेसिक सा फंक्शन हो, हाँ, तो उस केस में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के यू कैन सिंपली प्लग द वैल्यू ऑफ x एज 2। आप सिंपली x इक्वल टू 2 प्लग इन कर सकते हो, राइट। सो लेट अस जस्ट गो अहेड एंड जस्ट प्लग इन x इक्वल टू 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 7 एंड दैट इज इट। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। यू हैव जस्ट सॉल्व्ड इट बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा सेकंड आता है लिमिट में विच इज नोन एज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन वहां यूज करते हैं वेयर यू आर एक्चुअली गिवन दैट देयर इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, p by q फॉर्म में दिया हुआ है एंड व्हेन यू डायरेक्टली पुट यू विल नॉट गेट एन आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है एंड दिस इज कॉल्ड एज लिमिट्स में I think I've written it somewhere. It's called as removable limits. ठीक है, I think I've mentioned it somewhere in the notes. एक बार ही देख लेना. So I will just show you an example. So suppose if I say you limit x tends to 2, x square minus 4 upon x minus 2. अब you will notice कि अगर मैं इसमें directly 2 plug in करूँ, if I plug 2 directly, तो it will be 2 square minus 4 upon 2 minus 2 माने 4 minus 4 upon 2 minus 2 माने 0 by 0. राइट। सो इसमें व्हाट वी डू इज वी फॉलो द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइज कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी गो अहेड एंड हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। सो व्हाट वी कैन डू इज कि जो हमारा न्यूमरेटर है यू विल नोटिस दैट इट कैन बी फैक्टराइज्ड। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 2 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 2 कैन बी कैंसिल्ड एंड वी विल बी लेफ्ट अप विद x प्लस 2। अब हम लिमिट में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो व्हेन आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग x मुझे मिल जाएगा 2 प्लस 2 माने आई विल गेट द आंसर एज 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा आता है बेटा मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 को बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। A method of rationalization basically goes ahead and means कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, we will go ahead and we will multiply by something which is called as a conjugate. Conjugate multiplication का मीनिंग ये है कि हम साइन को चेंज करके we will alter the sign and then we will multiply, उसके बाद हम multiply करेंगे। जैसे देखो, so if I ask you limit x tends to 0 1 plus x under root minus 1 by x, तो आप देखोगे 1 plus 0 minus 1 by 0, this will be 0 by 0 form.
तो इसको अब हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं. To solve by method of rationalization, what we will go ahead and what we will be doing is that we will multiply with the conjugate of this. और इसका conjugate का क्या मीनिंग हो गया कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 से. और अब हम देखेंगे दैट दिस इज a माइनस बी and this is nothing but a plus b. So a minus b into a plus b basically a square minus b square देगा. So it will be 1 plus x under root whole square minus 1 whole square upon x 1 plus x under root plus 1. तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 plus x minus 1 upon x 1 plus x under root plus 1. एंड यू विल नोटिस दैट अब न्यूमरेटर जो हो गया है वो x बचा है. सो x अपॉन x 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1. x and x कैंसल आउट एंड दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1. अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे. लिमिट x अप्रोचेस 0. सो आई विल गो अहेड एंड गेट 1 अपॉन 1 प्लस 0 अंडर रूट प्लस 1. दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 1. दैट मीन्स हाफ. दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन. मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं बाय गोइंग अहेड एंड मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट. नाउ द नेक्स्ट मेथड व्हिच वी हैव, इट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ लॉपितल. इसको हम बोल देते हैं मेथड ऑफ लॉपितल. लॉपितल रूल बेसिकली कहता है कि whenever you have indeterminate form, indeterminate form माने या 0/0 या infinity by infinity. Whenever you have indeterminate form, so limit fx by gx can be written as limit f dash x by g dash x. इसी से मैं आपको ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू प्रूव दिस वन यूजिंग दिस मेथड. तो जैसे अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट लगाऊं तो ये हो जाएगा साइन 0/0 एंड साइन 0 का वैल्यू 0 होता है. सो 0/0 फॉर्म हमें आंसर में यहाँ पे मिल रहा है. वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म. तो इस चीज को आप सॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड सॉल्व दिस, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो अहेड एंड वी कैन यूज लॉपितल. तो जब मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स and differentiation of x will be 1. Numerator and denominator को हमने separately किया and I just do limit x tends to 0. तो ये हो जाएगा cos 0 and cos 0 is just 1 and that will be the answer to this question. तो लॉपितल लगा के भी हम इसको solve कर सकते हैं. अब इसी से एक interesting fact आता है which is called as that once we know certain standard limits, तो by using the standard limits we can also do the solving. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय x निकालो. अब हमें पता है दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की जगह मैं थीटा लिखना चाहूंगी. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1. माने जो एंगल यहां है, इफ वी हैव द सेम एंगल हियर एंड एंगल गोज टू 0 तो आंसर 1 आता है. सो यहां पर वी नोटिस दैट द एंगल इज 5x. तो हमें पता है दैट द डिनोमिनेटर ऑल्सो नीड्स टू बी 5x. मेरे को डिनोमिनेटर को भी 5x करना होगा तभी वो 1 पे जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5. एंड नाउ व्हाट वी विल नोटिस इज दैट दिस थिंग, this will give you the answer as 1, right? So now what will happen is that this will become 1 into 5, which means answer will be 5. Right? So this is how you can use your standard limits. आप अपनी standard limit को use करके आगे solve कर सकते हो. Okay. Now the next one that we have, next method that we have, उस method को बोल देते हैं limit at infinity, जिसमें हम highest power से divide करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3. तो वी आर नोटिसिंग कि हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे.
और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि आई विल गेट 1/1 + x² अपॉन 1 - 3/x², x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि एनीथिंग बाय इन्फिनिटी विल बी 0, so we will get 1 + 0 upon 1 - 0, that means I will get the answer as 1. So that will be the answer to this question. इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट algebraic, there are some important algebraic, I can say results also, कुछ important algebraic results भी होते हैं लिमिट के, जिसमें से सबसे important algebraic result that we have, that is basically कि limit of f plus g plus या minus, it can be simply written as limit of the first function plus minus limit of the second function. Similarly, limit of the product can be written as limit of the first into limit of the second. Similarly, limit of the ratio can be written as limit of the top upon limit of the second. ठीक है, there is another thing जो limit में आता है, this is called as squeeze theorem. बेटा ये इतना ही फास्ट लेक्चर होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम विच यू नीड टू कवर, इतना ही वेटेज है इन टॉपिक्स का, राइट? सो स्क्वीज थ्योरम बोलता है कि लेट्स हैव अ फंक्शन विच इज स्क्वीज्ड बिटवीन gx एंड hx, और जब हमने लिमिट gx लगाया एंड जब हमने लिमिट hx लगाया, व्हेन वी प्लग लिमिट gx एंड लिमिट hx, both of them give you the same answer L. Then limit of fx will also give you L. Limit fx will also give you L. ठीक है, so I want all of you to go ahead and use this squeeze theorem for limit in one of the question. ठीक है, so let's say I give you a question. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्वीज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बाय द वे, स्टैंडर्ड सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin 1/x। जस्ट ट्राई दिस, गिव इट अ ट्राई ऑल ऑफ यू, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हमें पता है कि साइन एंगल जो होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 1 and -1। Sin theta is always between 1 and -1. Now, if I multiply with x on all sides, so I will get that ये जो हमारा फंक्शन हमें दिया गया है, that is between minus x and x। तो माने if I just compare it, ये जो हमारा फंक्शन है, which is given to us, this is going to exist between gx and hx, and when we apply limit x tends to 0 on -x, I get 0, and when I apply limit on x tends to 0x, I get 0। तो माने ये जो फंक्शन है, this will also go towards 0, ये भी 0 की तरफ ही जाएगा, hence proved। So we have gone ahead and proved that this function is also going to approach 0। ठीक है, okay, so this is your limits। नोट्स पे वापस आते हैं, लेट्स सी इफ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम लिमिट साइड। सो वी हैव कवर्ड वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमने कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है। वी हैव डन द सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, राइट? नाउ एज अ होमवर्क I want you to try all these questions. ठीक है, so just as of now take a minute and solve this. Then we will move on to continuity. Just try and solve this question.
Okay, so what is going to be the answer to this one, all of you? Let's just put the value. What will we go ahead and what will we get? Just put 2. So you will get 2 plus 2 upon 2 square plus 5 into 2 plus 6. That means 4 upon 4 plus 10 plus 6. 4 by 20, 2 by 10. That's the answer to this question. So you see how simple this was. Kitna simple tha. You just had to substitute, right? Okay. So then we have done this. Homework, do it yourself. Done, do it yourself. Conjugate method I have done, do it yourself. Formal definition I have explained you, do it yourself. L'Hopital I have explained you, do it yourself. Okay, now this is interesting. So now we want to go ahead and we want to focus on so yes, the notes are usually uploaded on the portal after we do a lecture. So because I prepare them by the end of the like just on time, I get them prepared. So because I've now prepared them, it will be uploaded on the portal. Okay. Acha. So now we want to go ahead and we want to talk about something which is called as asymptotes. So what are these? ये क्या होते हैं? We want to understand them. In order to understand these, the best thing which you can go ahead and which you can do is to see a graph of the asymptotes. So usually a graph of an asymptote appears something like this. So let's say that when you go ahead and when you visit, just give me a minute. I think there is a तो asymptote को समझने के लिए the best thing which you can go ahead and do is learn two kind of asymptotes. The one is called as vertical asymptote and the other one is called as a horizontal asymptote. Vertical asymptote means that there is a line at x equal to a, right? And this basically translates definition in terms of limits. कैसे ये translate होता है? That x tends to a, fx, it goes towards plus minus infinity. जैसे for example, very simple. Let's say कि मेरा जो function है, it is 1 by x, right? And now I approach 0. So when I go towards 0, I know 1 by 0 will be infinity, isn't it? So I know that if I were to go ahead and if I were to plot this function 1 by x, my function would look like this. Notice very carefully. जैसे अगर मैं x को डाल देती हूँ 1, so 1 by 1 is 1. अगर x को 2 डालते हैं तो 1 by 2, that means 0.5. x को 3 डालते हैं तो 1 by 3, that means 0.33. माने as x is increasing, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, value of the function is falling. ठीक है? तो जब x 1 है तो ये 1 है, x2 है तो ये हाफ है, x3 है तो ये 0.33 है. The function is falling. But what happens when x goes towards 0? The function will go towards infinity. Right? So it means that there is a vertical asymptote. When you go towards infinity or minus infinity, it's a asymptote. Similarly, take negative values. So when x is minus 1, then 1 by minus 1 is minus 1. When x is minus 2, then 1 by minus 2 is minus 0.5. When x is minus 3, then minus 0.33. It means that you will have values minus 1,
and then this, and then this. So it will be going, as you go towards 0 यहाँ से, you will notice that you will be going towards minus infinity. So first of all, ये एक important question है, that does limit of function exist at x equal to 0? क्या यहाँ पे function पे limit exist करती भी है या नहीं करती? Does the limit of the function exist or not? And answer is no, because you notice that from one side you're going towards plus infinity and from the other side you're going towards minus infinity. Right? They're not converging towards the same thing. They're going towards different things. Huh. If I would have gone ahead and if I would have taken a mod, कि मेरा function is this. So whether I put x negative or x positive, I always get a positive answer. So then we would have noticed that instead of this, यहाँ से मेरा function ऐसा बन के आता. Because even when I would have put negative x's, तो मेरा answer positive रहता. Y का value, function का value. So then in that case, there would have been still a vertical asymptote. Why asymptote? Because you're not cutting the axis. आप किसी की तरफ जा रहे हो, but you're not cutting it. You're not cutting the y-axis, right? So there would have been an asymptote. Asymptote का माने you're not cutting the y-axis. You're going towards infinity, but because you're going towards the same value from both the sides, plus infinity, so we would have said that yes, limit exists. Yes, the limit of the function exists, right? So vertical asymptote can be defined like this. A line x equal to a is vertical asymptote if limit x tends to a, fx is equal to plus minus infinite. Okay. Now let us go ahead and talk about the horizontal asymptote. So a line y equal to L is horizontal asymptote if limit x tends to infinity, fx is equal to L. So horizontal के लिए we need like this. यहाँ कहीं लाइन हो. Vertical के लिए we need like this. कि यहाँ कहीं लाइन हो या यहाँ कहीं लाइन हो. Right? So we'll take two more examples to explain this concept. So let's say that your function is x plus 1 upon x minus 2. This is your function. And I'm asking you to go ahead and solve for the asymptotes in this function. इस function में हमें asymptote के लिए solve करना है. How will we go ahead and how will we solve this? Very simple. We understand that when x is 2, then anything by 0 approaches infinity. That means that we will have a vertical asymptote at x equal to 2. So when I will be plotting this function, then the function will never exist at x equal to 2. यही तो है p by q form, q not equal to 0. So function will never exist at x equal to 2, but it will approach some number. So there will be an asymptote here, right? Now let us go ahead and now let us think about the horizontal asymptote. To understand the horizontal asymptote, what we can go ahead and we can do is we can take another example where I go ahead and I say that the function is x squared by plus 1 upon x squared plus 3. Okay. Notice that if I were to go ahead and I were to solve this, suppose if I ask you that go ahead and solve this function, how will you solve it? What will be the limit of the function? To find the limit of the function, you will be dividing numerator and denominator by x square limit x tends to infinity. ठीक है, यही तो करेंगे हम. And when you will do this, you will get 1 plus 1 by x square upon 1 plus 3 by x square limit x tends to infinity. 1 plus anything by infinity is 0. 1 plus anything by infinity is 0, 1. So you are approaching 1. You are approaching 1.
right? So we can go ahead and say that when will you go towards when will the function go towards 1? The function will go towards 1 only when x is infinite. Infinity does not exist. It's not a number on the axis. It's infinity. So only when x is infinite, right? जब x infinity पे होगा, then you will be going towards 1, right? You will be going towards 1. So horizontal asymptote basically goes ahead and tells what happens when x is towards infinity. Vertical asymptote basically goes ahead and tells x is not at infinity, but y, the function, goes towards infinity. Function अपने आप में infinity की तरफ जा रहा है. Is it making sense? So if I have to show both of those things in the same diagram, अगर मुझे दोनों को किसी एक diagram में दिखाना है, so note like this. Suppose if I tell you that this is 4, and suppose if I tell you that this is 3, and I draw a graph like this. So when x is going towards infinity, the function is going towards 3. As x is going towards infinity. This is your horizontal asymptote. And when x is going towards 4, not infinity, x एक number की तरफ जा रहा है, then the function is going towards infinity. This is vertical asymptote. तो vertical में the function will go towards infinity. And horizontal में the value of x should go towards infinity, function will go towards a number, right? So this is how you can go ahead and you can understand this thing. Is it clear? So let's go back to the notes. We have done this. We have done this. Okay, this is your homework now. All is your homework. So I hope you are clear with the concept of limits today. It is absolutely clear in your mind. How do we go about finding the limits? Any doubt in this? Anything? Begin by talking about differentiation. We have already done limits and continuity. And आज का ये aim रहेगा that we go ahead and we begin with differentiation. अब एक बार हम पहले differentiation का जो basic definition है, right? In terms of language, कैसे उसको लिख सकते हैं? First, we will try and understand that, and उसके बाद we will go ahead and begin with the chapter of differentiation. ठीक है? देखो, what is differentiation? Differentiation is nothing but it tells us the rate of change, कि कोई भी चीज किस rate से change होती है. जब हम वो समझने का कोशिश करते हैं, then that is called as differentiation of the function. So for example, let's say that I have y as a function of x. y x का एक function है. Then dy by dx tells us how y changes as x changes. y कैसे change होगा जब x change होगा? How y changes as x changes, उसको हम बोल देंगे differentiation of the function या derivative of the function. And this is also represented as f dash x. इसको हम f dash x से भी represent करते हैं. This f dash x, जब हमें इसको f dash x को लिखना होता है, तो this f dash x can be written as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. इसका ये भी definition होता है. This is also a way of writing it. This is called as the first principle definition. First principle definition. इसको हम first principle definition भी बोलते हैं. ठीक है? Now, let us try to understand the geometrical meaning of this. कि इसका geometrically meaning क्या है?
To understand the geometrical meaning of this, please try to understand कि f dash x is called as the slope of the function. इसको हम slope बोलते हैं. f dash x को हम slope बोलते हैं किसी भी फंक्शन का. एंड इफ f dash x is greater than 0, माने वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इफ f dash x is less than 0, माने वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. एंड इफ f dash x is equal to 0, माने वो फंक्शन जो है उस पर उसका एक स्टेशनरी पॉइंट है. उस पॉइंट पे उसका एक स्टेशनरी पॉइंट है. Let's try to understand the economic interpretation behind it. So in order to understand the economic interpretation, please try and understand कि economically we go ahead and we say that अगर हमें economic interpretation समझना है, I can help you understand with the help of some function. So let's say कि I go ahead and I tell you that there is a cost function. हमें पता है cost is a function of output, right? Then we can go ahead and say that dc by dq, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, this becomes my marginal cost. Marginal cost basically बताता है how cost changes as output changes. Similarly, if I tell you that there is a revenue function, revenue as a function of output, तो dr by dq ये बताएगा marginal revenue, माने how revenue changes as output changes. revenue कैसे change होता है जब output change होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोलूं यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यूटिलिटी मुझे दो कंपोनेंट से मिल रही है, तो डेल यू बाय डेल एक्स मुझे बताता है हाउ यूटिलिटी चेंजेस एज कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स चेंजेस. और इसको हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स. ठीक है. अच्छा, यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिकॉज आई हैव गॉन अहेड एंड आई हैव रिटन यूटिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जब हमारे पास यूटिलिटी दो वेरिएबल का फंक्शन बनती है तो उस केस में हम एक बार यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक बार यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है. एंड व्हेन वी हैव टू वेरिएबल्स, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वी आर डिफरेंशिएटिंग यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी आर गोइंग अहेड एंड वी आर होल्डिंग y constant. And when we are differentiating with respect to y, तो we are holding x constant. तो यहाँ पर this is called as partial derivative with respect to x. और यहाँ पे ये हो जाता है partial derivative with respect to y. तो एक हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. ये बात क्लियर हुई? इज इट मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. सो नाउ वी गो अहेड एंड वी लुक एट सम बेसिक डेरिवेटिव रूल्स. कुछ बेसिक डेरिवेटिव रूल समझ लेते हैं. नंबर वन, whenever we differentiate any constant, so we get 0. Whenever we differentiate x to the power n comes down, x to the power n minus 1. Whenever we go ahead and whenever we differentiate constant with a function, the constant can come out and function का differentiation हो जाएगा. Whenever we differentiate sum of two functions, तो individual functions को हम differentiate कर सकते हैं. Whenever we differentiate product of two functions, दो के product को differentiate करना है, so differentiation of first, second as it is, differentiation of second, first as it is. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास quotient rule. So suppose I have to go ahead and I have to differentiate f by g. So ये हो जाएगा differentiation of the first function, differentiation of the numerator, ठीक है, into denominator as it is, minus
differentiation of the denominator into numerator as it is upon denominator whole square, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वी गो अहेड एंड वी गेट द चेन रूल। तो चेन रूल में बेसिकली क्या आ जाता है, इन चेन रूल वी गो अहेड एंड वी गेट, सपोज बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ gx एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y डबल फंक्शन लग रहा है, एक ये है फंक्शन, फंक्शन ऑफ f एंड f इज अ फंक्शन ऑफ g। तो व्हेन वी विल अप्लाई चेन रूल dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी f डैश gx इनटू g डैश x। इसको हम f डैश gx इनटू g डैश x भी लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन राइट इट। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज इफ आई टेल यू, हर एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इफ आई गो अहेड एंड इफ आई टेल यू दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट y is equal to x square into e to the power x, इसका you have to find dy by dx। बहुत सिंपल है, differentiate the first function, second as it is, differentiate the second function first as it is। ठीक है, अब यहाँ पे I have used the rule that differentiation of e to the power x with respect to x is e to the power x itself। जब हम एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट द एक्सपोनेंट इटसेल्फ, हमें एक्सपोनेंट ही मिल जाता है। इज इट फाइन? Now let's go to the quotient rule. So suppose if I go ahead and I tell you that y is equal to x square upon x plus 1 and I tell you find dy by dx, तो बहुत simple है, nothing बेटा, differentiate the numerator, x square का differentiation will be 2x into denominator as it is minus differentiate the denominator, x का differentiation 1, constant का differentiation 0, ये एंड ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, सो x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सो यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बात? ये बात समझ में आती है? अब हम चेन रूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो सपोज इफ आई गो अहेड एंड इफ आई टेल यू दैट y is equal to say 3x square plus 1 to the power 5 and I ask you find dy by dx। तो बेटा चेन रूल मीन्स दैट फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट द पावर। पावर का क्या डिफरेंस, क्या रहता है पावर का रूल, दैट पावर कम्स डाउन एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1 इनटू, अब हम फंक्शन जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इफ आई गो बैक, first we differentiated this f dash ane power into whatever was the inside function, we differentiated that, तो function coming inside is this, ये वाला function अंदर आ रहा है। so into differentiation of this, so this is going to be 3 into 2x, right? So this is going to give us 15 into 2 30x 3x square plus 1 to the power 4। Is it clear? Okay, now there are some standard rules जो आपको याद रखने हैं। There are some standard rules. Standard rule number 1, that differentiation of e to the power x is e to the power x. Rule number 2, differentiation of any constant to the power x is a to the power x ln a, right? Rule number 3, differentiation of ln x is 1 by x. Rule number 4, differentiation of log x to the base a, देखो इसका base was e बेटा, this is to the base a, this will be 1 by x ln a। ठीक है, then there are some trigonometric functions जो आपको याद रखने हैं which you can remember। differentiation of sin x
will be cos x. Differentiation of cos x will be minus sin x. Differentiation of tan x will be sec square x. ठीक है. Now sometimes what happens is कि आपको जो equation दी गई होगी, the equation which will be given to you will not be an explicit equation. Instead जो equation आपको दी गई होगी that will be an implicit equation. आपको एक implicit equation दी होगी, माने x और y same side पे होगा. जैसे for example, if I go ahead and if I tell you कि x square plus y square is equal to 25, ठीक है, एंड आई टेल यू कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ dy by dx. तो अब हम क्या करेंगे ना, दैट इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो आई विल डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x. ठीक है, y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करना है, सो y स्क्वायर विल बिकम 2 इंटू y का डिफरेंशिएशन विल बी dy by dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0. Are you understanding this? ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो यू कैन डू अ टोटल डिफरेंशिएशन, माने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और क्योंकि यहाँ x है तो dx लगा दो. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y, और क्योंकि यहाँ y है तो dy लगा दो. एंड 25 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, और अब थ्रू आउट डिवाइड कर दो dx से, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y dy by dx is equal to 0. So you will go ahead and you will get 2x equal to minus 2y dy by dx. Right? तो यहां से आपके पास dy by dx जो होगा that will come out as minus 2x by 2y minus x by y. तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, you will get this answer. This is going to be minus x by y. ठीक है. Now what we can go ahead and what we can do is we can also talk about the higher order derivatives. जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, whenever we talk about the higher order derivative, it means we are differentiating the function 2 times, 3 times and so on and so forth. For example, अगर मेरा एक function है that y is equal to x to the power 3, तो dy by dx माने I differentiated it once, तो power comes down and power reduces by 1. और अगर मेरे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना होगा, माने आई हैव टू अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर कम्स डाउन, पावर रिड्यूसेस बाय 1, तो ये हो जाएगा 6x. सो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, आप एक से ज्यादा बारी उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, देन दैट विल बी अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ लेट अस गो अहेड एंड लुक एट इट्स इंटरप्रिटेशन. इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी इट्स इंटरप्रिटेशन. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी. इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है बेटा. इफ द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, एंड इफ द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव फंक्शन. इसी पे हम वापस जाते हैं. सपोज इफ आई टेल यू कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड आई टेल यू कि बेटा प्लॉट दिस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा दिखेगा, तो आप बोलोगे मैम हमें इस फंक्शन का कुछ चीजें बहुत क्लियर है कि अगर हम सिर्फ y dy by dx देखते हैं, इफ आई लुक एट dy by dx, तो ये 3y स्क्वायर दे रहा है, एंड 3y स्क्वायर इज क्लियरली ग्रेटर देन 0, बिकॉज सिंस x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर, तो 3x स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. माने ये जो स्लोप रहने वाला है, ये स्लोप नॉन नेगेटिव रहने वाला है. मतलब ये फंक्शन जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ये हमें एक बात क्लियर होती है दैट द फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन रहेगा. अब हमें समझना है कि क्या ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा. सो व्हाट इज कॉनकेव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स बेटा. अ कॉन्वेक्स फंक्शन इज एनी फंक्शन जिसमें इट इज बोर्ड लाइक दिस. जैसे दिस इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, इसमें जब भी हम इसकी लाइन को ज्वाइन करेंगे तो लाइन विल लाई अबव द कर्व.
तो वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। What will be a concave function? A concave function will look like this. माने जब भी हम will draw a line, तो जो हमारा line होगा, line will lie below the curve. Line will lie below the curve. तो एक में the line will lie above the curve and एक में line will lie below the curve. तो अब एक बारी मुझे जरा यहाँ पे बताओ, tell me this thing. Suppose if I draw something like this. So is it concave or convex? You draw a line. Line is lying above the curve. So it will be convex. Suppose if I go ahead and if I draw like this, you draw a line. Line is lying below the curve. So it will be concave. समझ में आया? But this is decreasing. देखो नीचे की तरफ जा रहा है. And this is increasing. देखो, it's increasing. This is decreasing. नीचे जा रहा है. It's falling. And this is increasing. ऊपर की तरफ जा रहा है. So we know that first of all, अगर हम इस function को plot करने की बात करें, if I have to plot x cube, it is an upward sloping function. इसका slope non-negative है. It means that या तो इसका shape ऐसा रहेगा, either the shape will be like this or this. Sorry, either it will be this or this. Yes, increase करेगा, right? Here also it's increasing. You see ना line, अगर मैं इससे एक line pass करूँ, it's an upward sloping line. And here also it's increasing, right? Here it is decreasing. And here it is decreasing, right? So first thing is it is increasing. अब दूसरा चीज जो हमें समझ में आता है that we have to see whether this is going to be concave or convex. तो उसके लिए we find out the double order derivative. हम इसका double order derivative निकालते हैं. And when we find the double order derivative for this function, जब हम इसको double differentiate करते हैं, what do we go ahead and what do we find out? We find out कि इसका double order derivative 6x आ रहा है. And this 6x, it will be greater than 0. जब तक x पॉजिटिव होगा 6x भी पॉजिटिव होगा. So for all positive values, this function is going to be convex. And ये जो 6x है, it will be less than 0 if x is less than 0. अगर x negative है तो 6x भी negative होगा. So it is going to be concave. तो ये concave हो जाएगा. And when x is 0, तो 6x भी 0 होगा. So it means कि ये ना concave है ना convex है. It means that it will be at that point changing its slope. ये concave से convex का जो shift लेगा, that will happen at 6x when x is 0. इसको बोल देंगे हम point of inflection. तो अगर हम ये सारे information को combine करें, if I combine all of this information, then when x is negative, जब x negative है, we see that the function is going to take concave shape. माने the function will look like this. And x equal to 0 पे it's a point of inflection. यहाँ पे the curve will change its slope after this. और इसके बाद the curve is going to become convex. माने convex बनेगा. So convex means it will become like this. So it will become like this. And throughout it will be upward sloping. Upward sloping means increasing means कि as x will increase, the value of y should increase. यही तो increasing function होता है. When x increases, y should increase. What is a decreasing function? A decreasing function is that as x increases, y decreases. As x decreases, y increases. माने they move in opposite direction. तब वो एक decreasing function है. But एक increasing function माने as x increases, y increases. Right? So we can go ahead and we can now make the complete shape of the function with the curvatures of the function. अब यहीं से हमारे पास concept आ जाता है, the concept of maxima and minima. The concept of maxima and minima. और ये concept maxima and minima का, what does this concept of maxima and minima suggest? The concept of maxima and minima goes ahead and suggests that if the double order derivative is greater than 0, that means at that x star you have minima. And if the double order derivative is less than 0, then at that x star you have maxima. और ये maxima minima का point कैसे निकलेगा? By putting f dash x equal to 0.
Let's take a question. Suppose if I go ahead and if I tell you that find maxima, minima for the function, and मैं आपको फंक्शन दे देती हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2. तो सबसे पहले वी फाइंड द एफ डैश एक्स विल बी 3x² माइनस 6x, इसको इक्वल टू 0 करते हैं. I take 3x कॉमन, x minus 2 equal to 0. I get x equal to 0 and x equal to 2. दो पॉइंट्स मेरे पास आ जाते हैं. Now I find the double derivative of the function f double dash x निकालते हैं. So if I differentiate this again, I get 6x minus if I differentiate this, I get 6. Now we will evaluate the double order derivative at 0. तो 6 into 0 minus 6 मतलब minus 6 less than 0. So it becomes a maximum. Now I evaluate a double order derivative at 2. So 6 into 2 minus 6 minus 12 minus 6 which is positive, so minimum. So we find that at x equal to 0 the function has attained a maxima and at x equal to 2 the function has attained a minima. बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव की. So when we go ahead and when we talk about partial derivative, जब हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, सो बेसिकली इट मींस दैट वी आर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन फंक्शन. हम एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं होल्डिंग द अदर फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए. For example, suppose if I go ahead and if I tell you that z is a function of x and y. So if I have to find out del z by del x, it means कि y will be held constant. And if I have to find del z by del y, it means x will be held constant. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे suppose if I tell you कि there is a utility function और utility function है x to the power 0.5, y to the power 0.5. So when I have to differentiate with respect to x, अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y वाला वेरिएबल विल बी अ कांस्टेंट. सो y to the power 0.5 को मैं कांस्टेंट रखूंगी and I will differentiate this. तो differentiation simple है, power comes down, power reduces by 1, तो -1 subtract कर दो and you will get half. 0.5 is nothing but half and y to the power 0.5, and because ये power negative है तो it will come in the denominator, so it will be x to the power 0.5 माने 1 by 2 y by x under root. Similarly, if I have to differentiate with respect to y, suppose if I tell you, हमें पता है इसको हम बोल देते हैं marginal utility of x. Similarly, if I have to differentiate with respect to y, माने I have to hold x constant, मुझे x को constant रखना है, so I will hold this constant, मैं इसको constant रखूंगी and I will differentiate this, so power will come down and power will reduce by 1. तो ये हो जाएगा 0.5 x to the power 0.5 y to the power minus 0.5, तो 0.5 x by y to the power 0.5. ठीक है, तो इस तरीके से we can go ahead and we can find the partial derivative of the function. Partial derivative का meaning हो गया that you are differentiating with respect to one, होल्डिंग द अदर फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए आप एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट टोटल डिफरेंशिएशन. जब हम टोटल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सो टोटल डिफरेंशिएशन बेसिकली गोज अहेड एंड मीन्स दैट suppose let's take an example. Suppose if I tell you z is a function of x and y और मैं कह रही हूं कि फाइंड आउट dz. dz का मीनिंग हो गया कि यू आर फाइंडिंग टोटल डेरिवेटिव. तो dz का मतलब हो जाएगा कि यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x dx
and plus differentiating the function with respect to y dy. When we go ahead and when we write it like this, तो ये हो जाता है total derivative of the function. ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आ जाती हैं बच्चे. पहला थ्योरम आ जाता है होमोजेनस फंक्शन एंड ऑयलर्स थ्योरम. होमोजेनस फंक्शन एंड ऑयलर्स थ्योरम ये बोलता है कि इफ वी हैव अ फंक्शन विच इज होमोजेनस ऑफ डिग्री n, then we can go ahead and we can write something like this. So अब होमोजेनस क्या होता है? सो अ होमोजेनस फंक्शन इज एनी फंक्शन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट f of tx comma ty is t to the power n f of xy. माने अगर हम t को कॉमन आउट करके बाहर निकाल पाए, if I can take the t factor out, then it is a homogeneous function. And whatever is the power, that becomes the degree of homogeneity. जैसे for example, if I go ahead and if I tell you कि जो मेरा फंक्शन है f of xy, this is x to the power 0.7, y to the power 0.3. ये मेरा फंक्शन है. Now, if I just take t, so I will get tx to the power 0.7, ty to the power 0.3. So this will be t to the power 0.7, x to the power 0.7, t to the power 0.3, y to the power 0.3. When base is same, power can be added. Y to the power 0.3, t to the power 1, x to the power 0.7, y to the power 0.3, t, and this is my original function f of xy. So we notice that the degree of homogeneity in this case is actually 1 because the power is coming out to be 1. इसका power 1 आ रहा है ना, तो degree of homogeneity 1 हो गया. Now the Euler's theorem goes ahead and says that whenever you have a homogeneous function, जब भी आपके पास एक homogeneous function होगा of degree n, then you can say x partial derivative with respect to x plus y partial derivative with respect to y is equal to n times the function, is equal to n times the function. जब हम ऐसे लिखते हैं when we go ahead and when we write it like this, तो हम उस केस में बोल सकते हैं that this is basically the Euler's theorem. इसी को हम Euler's theorem बोलते हैं. Is it clear? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फंक्शन. अब अगर इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट विल आई गेट? पावर कम्स डाउन, पावर रिड्यूसेस बाय 1, y to the power 0.3. If I differentiate this with respect to y, so what will happen? Power comes down, power reduces by 1, and x remains as it is. Y के रिस्पेक्ट में करें ना. Now this is going to be x, and with respect to x, what will I get? 0.7, x to the power minus 0.3, y to the power 0
जब बेस इज सेम तो so इसका power is 1, इसका है minus 0.3, so I'll get 0.7, x to the power 0.7, y to the power 0.3. Similarly, when base is same, power can be added. तो इसका power है 1 और इसका है minus 0.7, so plus 0.3, y to the power 0.3, x to the power 0.7. और जब हम इसको when we will take x to the power 0.7, y to the power 0.3 common, I'll get 0.7 plus 0.3, माने I will get 1 into this. तो जो मेरा n का वैल्यू होगा, what my n is going to be, that is basically this one. Because ये function था, right? This was the function. And we noticed कि actually इसका degree of homogeneity 1 था. So it is matching what we mentioned. It is matching with what we had said, right? So this is what it actually goes ahead and means. ये बात समझ में आती है? Now let's talk about the elasticity using derivatives. So when we talk about the elasticity using derivative, basically the elasticity of any function is dq by dp into p by q. इसमें I am finding elasticity of quantity with respect to price. This is very, very important. तो अगर suppose for example, you have to find elasticity of cost with respect to output. तो ये क्या हो जाएगा? How cost changes as output changes into output by cost. ये लिख सकते हैं. अच्छा, now notice कि how cost changes as output changes, इस चीज को microeconomics में we call as marginal cost. So I can say that this is marginal cost into Q by C. And also हमें पता है that cost by output is called average cost, है ना? तो ये Q by C है, मतलब ये उल्टा है. So Q by C will be 1 by AC. तो ये जो हमारा यहाँ पे Q by C आ रहा है, what Q by C I am getting, इसको I can replace it with 1 by AC. तो ये क्या हो जाएगा? Marginal cost into 1 by AC. So this will be marginal cost by average cost. देख रहे हो how beautifully the equation has come. तो हम बोल सकते हैं कि elasticity of cost with respect to output is nothing but marginal cost by average cost. अब हम इसके आगे भी बात कर सकते हैं इसमें. So suppose if I go ahead and if I draw the graph microeconomics का, तो हमें पता है कि ये marginal cost curve है और हमें पता है कि ये average cost curve है. और हमें पता है that in phase 1, we know that in phase 1 जो हमारा average cost है, that is coming well above the marginal cost, right? So we know that average cost is more than marginal cost in phase 1. माने we know that marginal cost by average cost is less than 1. 1 is more than this. माने ये तो elasticity of output with respect, elasticity of cost with respect to output था. यही तो इसका फॉर्मूला था. So this is less than 1. So माने in this phase 1, ये जो हम microeconomics में बनाते हैं, in this phase 1, we can go ahead and we can say, हम बोल सकते हैं that elasticity of cost with respect to output is less than 1. Cost with respect to output is less than 1. Similarly, यहाँ पर marginal cost and average cost equal हो रहे हैं because it is a point of intersection. तो if they're equal, तो MC by AC, क्योंकि वो दोनों equal हैं, will be 1. माने यहाँ पे that elasticity is exactly 1. और अगर हम यहाँ की बात करें, if we talk about this phase, तो हमें दिख रहा है that marginal cost is above average cost. So marginal cost by average cost will be more than 1. तो इस phase में elasticity of cost with respect to output will be more than 1. Clear? Is it clear to everyone? ठीक है. Now we'll talk about something important जिसको हम बोल देते हैं Taylor's expansion. टेलर्स एक्सपेंशन बोलता है कि a function f of x plus h
can be written as f of x plus h f dash x plus x square by 2 f double dash x and so on and so forth. ये बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में, स्पेशली इफ you have ever seen a model which is taught in Delhi School of Economics, मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल्स में, ऑप्टिमाइजेशन में, अप्रोक्सीमेशन में टेलर्स एक्सपेंशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट? So let us go ahead and take an example of Taylor's expansion. So basic idea क्या है Taylor's expansion का? That suppose you know the value of the function at a point x. x पे मुझे function का value पता है. And I want to estimate the value near a point x plus h. x plus h के आसपास मुझे value जानना है. Then this formula can be used. This is 2 factorial. This is 1 factorial. ठीक है? So to go ahead and explain, जब हम सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज करते हैं, then this is called as first order Taylor approximation. जब हम यहां तक जाते हैं, then this is known as second order Taylor approximation. जब हम और आगे तक जाते हैं, it is called as third order Taylor approximation. फर्स्ट ऑर्डर टेलर approximation को हम लीनियर approximation भी बोलते हैं. It is also called as linear approximation. ठीक है? Is it clear? Then there is also something called as Maclaurin series. Maclaurin series is a special case जब हम ये Taylor expansion around 0 निकालते हैं. So if I have to find f of x at around 0, it will be f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 and so on. इसको हम टेलर्स एक्सपेंशन का स्पेशल केस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज मैक्लॉरिन सीरीज. मैक्लॉरिन सीरीज के ही कुछ स्पेशल एग्जांपल्स आते हैं, कुछ स्पेशल एक्सपेंशंस आती हैं, जिसमें द फर्स्ट एक्सपेंशन दैट वी हैव दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन. एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन है इन विच वी जस्ट एक्सपैंड e to the power x as 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. नेक्स्ट आता है log का एक्सपेंशन ln x plus 1 या 1 plus x. इसका एक्सपेंशन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस कैन बी एक्सपेंडेड एज x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x square by 4 and so on and so forth, right? Then we have another expansion which is the sin expansion. ये तीन expansion you have to remember. Sin x का expansion is x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial and so on and so forth. ठीक है? Why is Taylor expansion useful? क्यों है Taylor expansion इतना useful? Because number one, it converts very very complicated formulas, जो आपके बहुत complicated functions होते हैं, उनको बहुत simple बना देता है, polynomial बना देता है. पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना आसान है, इंटीग्रेट करना आसान है, अप्रोक्सीमेशन आसान है. तो शायद मेरे लिए e टू द पावर x को एनालाइज करना मुश्किल है, बट 1 प्लस x को एनालाइज करना आसान है अगर मैं इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन देखूं, राइट? सिमिलरली इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज ln 1 plus x, बट इट इज इजी टू एनालाइज दिस पॉलिनोमियल फंक्शन. इसीलिए टेलर अप्रोक्सीमेशन यूजफुल रहता है. नाउ वी विल गो बैक टू द नोट्स बेटा. ये सारे डिफरेंशिएशन है. आई एम लीविंग इट टू यू टू रिवाइज. रूल्स वी हैव डन, मीनिंग आई हैव डन, composite functions I have done. This is optional for you to do if you want to do. Implicit I have done, parametric I have done, log I have told you. This is optional क्योंकि इतना ट्रिगो नहीं आता है. Only if you want to do you can do it. These are important for you to learn. इनको as it is learn कर लो. ठीक है? This also learn. Partial I have told you.
Higher partial I have told you, Euler I have told you, implication of Euler I have told you. So it's done, right? So this is all about differentiation, and I hope that you have understood this differentiation well. Now I'm going to post a lecture after today's lecture, which is going to be on optimization. And as a part of, so you would know it's a hybrid. Hi. With this, we come to an end of differentiation. We have covered differentiation now. Now, the topics which are left for us to cover are single and multivariable optimization. And the most important one, which is also left, is integration, and uh, is also left is your LPP. ये तीन important topics and that are still left. So we are going to take a 20-minute break. All of you can go, can rest, come back, and then it will be about 1.5 hour session, which is going to be there on your single and multivariable optimization. I hope all of you will join back after 20 minutes. I hope to see all of you, and I hope that we will go ahead and we will wrap up the course today if you have been in this journey since the morning. So I hope that by tonight the entire maths will be revised, right? So the next session that will be there will be on single and multivariable optimization, and it's going to start in another 20 minutes. We'll take a 20 minutes break, then we'll start. Okay, thank you.
No. Today, we are going to go ahead and we are going to do both single and multiple variable optimization. Now, you will see that the concept of single and multivariable optimization. Okay, last assignment I have to see beta what I don't remember where I will have put the last assignment. Let me check if I can find it. Is it this one? Just give me a yes or no. Okay, good. So this says there is a matrix A and the matrix A is given to you like this and it has an eigenvalue of 4 with the corresponding eigenvector of this. So you need to find out A to the power 5 into X. Okay, so this is very simple. We have used the property yesterday now that whenever you have A, so if you need to find out A to the power lambda into X, जब भी ऐसा करते हैं A to the power M into X, whenever we have A to the power M, तो जो इसका eigen value होगा, that will be lambda to the power M. So if I have a matrix A and इस matrix A का जो eigen value है वो 4 है, so if I have to do A to the power 5, तो इसका जो eigen value होगा वो 4 to the power 5 हो जाएगा. Whenever you need to go ahead and you need to find the eigenvalue, in case of eigenvalue, जितने power को हम matrix को raise करेंगे, the same you will raise the eigen value also. So this has become 4 to the power 5. Now the question is asking, find out A to the power 5 into X. So the property of eigenvector is that Ax is nothing but it is equal to lambda x. Eigenvector का ये property है कि x is the eigenvector, lambda is the eigenvalue, और this follows the property that Ax should be equal to lambda x. क्योंकि हमने इसको rewrite किया था ना that a minus lambda I into x equal to 0. तो अगर मैं इसको इस side ले जाऊंगी I will get this. So if I were to go ahead and find a to the power 5 into x, it will simply be equal to lambda to the power 5 into x. और lambda का value हमें 4 given है यहाँ पे. So this is going to be nothing but 4 to the power 5 into x. और x दिया हुआ है minus 4.5, minus 4 and 1. So this is just scalar multiplication. ठीक है? तो 4 to the power 5, 4 into 4, 16 into 464 into 16 कर लो. Whatever answer you get here, just multiply that everywhere with this. Right? So इसको हम just, I can rewrite this thing as 4 to the power 5 into minus 4.5, 4 to the power 5 into minus 4, 4 to the power 5 into 1. And that will be the answer to this question. So just use the basic property of eigenvalue and eigenvector कि कोई भी eigenvector, if lambda is an eigenvalue and x is eigenvector, so it satisfies the equation that a into x should be equal to lambda into x. तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि a to the power 5 into x क्या हो जाएगा, तो it will be lambda to the power 5 into x. ये x, this is given to you. ये lambda, this is given to you. Lambda is given as 4, so you will do 4 to the power 5. X is given to you as minus 4.5, minus 4 and 1. Just multiply it and that will be the answer. ये यहाँ पर we have done this. Right? So this is just the definition of eigenvalue and vector that we used in this assignment. Should I progress? Okay. Give me a second. I need to look for today's assignment. Oh, yeah. Okay. So now, we will start with single and multiple variable optimization. So whenever we talk about single and multivariable optimization,
देखो concept is the same, the definitions are also the same. What is critical value, what is stationary point, ये सारे definitions are the same. The only thing जो बहुत ज्यादा differ करेगी between single and multivariable optimization, that is basically going to be the second order condition. So that second order condition, that will differ drastically. जब हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल में और जब हम बात करेंगे मल्टीपल वेरिएबल में, द सेकंड ऑर्डर कंडीशन विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. तो हमें बस एक बार उस चीज को बहुत ध्यान से देखना है. Otherwise, the concept of optimization is going to be very, very similar. So let me just start. So see that the first point is saying what is local minima and local maxima. Simply, maximum means that at that point, जो भी point पे maxima achieve हो रहा है, the value of the function at that point, it should be greater than the value of the function at any other point. So हम ये कह देते हैं that x star, it will be a local maxima if the value of the function at that point is going to be more than the value of function at other points. Then it will be called as local maximum of the function. Similarly, whenever we talk about local minima, again, minima means it should have the least value. यही minimum का मतलब है. So when we talk about local minima, it basically goes ahead and means that the value of the function at that point, उस x star पे जो function की value होगी, it should be less than equal to the value of the function at any other point. तो if this condition is satisfied, उसे हम बोल देंगे local maxima, and if this condition is satisfied, उसे हम बोल देंगे local minima. These are local minimas and maximas. अब एक डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें और थोड़ी और चीजें धीरे धीरे we will realize. If I look at this diagram, you see that here it is maximum value. So if I just compare it in the vicinity, मतलब मैं इसके आसपास के एक्सेस को देखूं, यहाँ वाले एक्सेस देखूं, यहाँ वाले एक्सेस देखूं, I will realize that at this x I am getting the highest value. So we can call this as the local maxima. मैक्सिमा होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्राफिकली अगर हम देखें. सो ट्राई टू सी दैट इफ आई लुक इनटू दिस ग्राफ, यू विल नोटिस दैट फर्स्ट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड देन यू विल नोटिस दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. फिर फंक्शन गिर रहा है. तो देन द फंक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, जब वो इंक्रीज होता है and then the function decreases, वो गिरता है, then at this point there is a maxima that you have achieved. मतलब यहाँ पे ऊपर highest point आया ना, then it started falling. And when is a function increasing? कब एक function increase होता है? Whenever its slope is positive. कोई भी function increase कब करता है? When is a function increasing function? It is called an increasing function whenever the slope of the function is positive. और slope क्या होता है function का? If I have a function fx, then its slope is f dash x. And positive का मतलब हो गया greater than 0. Then it is an increasing function. So we can say that the function is increasing when f dash x is positive. और function decreasing means the slope should be negative. Slope क्या है? f dash x. So function negative means f dash x less than 0. तब ये यहाँ पे negative हो गया. Right? So in between, just notice, I am going from f dash x less than 0 towards f dash x greater than 0. It means that in between there must have been a point, ऐसा एक point आया होगा such that my f dash x would have been equal to 0. And that is exactly what is happening at this maxima point or the minima point. So इस maximum point पे the slope is not changing. It is neither increasing nor decreasing. ना positive है ना negative है. The slope is stable. The f dash x value is equal to 0. Right? So this therefore becomes the definition of a maxima. अब इसे हम लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? Why are we calling it local? Global क्यों नहीं बोल रहे?
because there may be multiple maximas in a function. जैसे for example, मेरा function ऐसा कुछ हो सकता है. So you see here my function goes from increasing to decreasing. ये भी maxima है. Here my function goes from increasing to decreasing. ये भी maxima है. Here my function goes from increasing to decreasing. ये भी maxima है. Wherever your function goes from increasing to decreasing, increasing to decreasing, increasing to decreasing, all those points are local maxima. So what is a global maxima then? A global maxima is any point which is maximum of these maximas. तो हमने क्या किया ना कि हर पॉइंट पे हमने इस मैक्सिमम वैल्यू को चेक किया. सो वी चेक द वैल्यू एट x0. वी चेक कि ठीक है फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है. At x1 we check कि okay function का क्या value आ रहा है. At x2 we check okay function का क्या value आ रहा है. So among these local maximas, जो भी ये maximum points हैं, we will check the value of the function, and after checking the value of the function, we will see कि okay इन सब में से maximum function का value कहाँ पे आ रहा है. Where can I see the maximum value of the function? And wherever that will happen, that will better become the global maxima. So broadly speaking, any maxima condition, कहीं पे भी जहां पे भी हमें maximum achieve हो रहा है, we will go ahead and see that we will go from increasing to decreasing. Now the reverse will happen when we talk about the local minimas. Minima में क्या हो रहा है देखो, we are going from decreasing to increasing. हमने decrease किया और increase किया, so we hit the minimum point, we started decreasing, hit the minimum point, started increasing. So sometimes what we can do is that we can use a sign test. Sign test मतलब क्या? When I will see that f dash x goes from decreasing to increasing, it means I must have attained minima. When we see f dash x goes from increasing to decreasing, मतलब it goes from being positive sloped to being negative downward sloping, decreasing, we must have achieved a maximum. So we use such sign test also. Now take an example. Just if I tell you that my function, it is x square. So what do I get? I will get f dash x is equal to 2x. So I know that this f dash x will be positive as long as my x is positive. जब तक यहाँ पे मैं positive number डालती हूँ, so 2 into x, ये भी positive होगा, so f dash x will be positive as long as my x is positive. And I can say that my f dash x will be negative if my x is negative. अगर यहाँ पे negative number डलेगा तो ये पूरा भी negative हो जाएगा. So we can say that okay, and you can clearly see that when x is 0, we have our f dash x also 0. So we can clearly go ahead and say कि x 0 पे तो f dash x 0 है, but जब तक x positive है, the slope is increasing. X positive, the slope is increasing. और जब तक x negative है, the slope is decreasing. So x is negative, the slope is decreasing. तो माने at this point I have attained a minima ना. I am going from f dash x less than 0, decreasing slope, to f dash x greater than 0, increasing slope. So decreasing to increasing. So I have attained a minima in this function. ठीक है, तो ये part हो जाता है where we do it for single variable, a very basic thing where we are just trying to see what is the local maxima and local minima of the function. Okay. Now what we want to go ahead and do is define the concept of stationary and critical points. अब ये दो चीजें क्या हैं? A stationary point is any point such that your f dash x is equal to 0. जब भी हम f dash x को 0 plug in करते हैं, we call it as a stationary point. But what is a critical point? Sometimes, कभी-कभी ऐसा होगा that you may not be able to get any x such that f dash x is 0.
So if that happens, अगर आपको कोई ऐसा x नहीं मिल रहा such that f dash x is 0, then it will be called as a critical point. तो एक बारी example देख लेते हैं. So I am saying any stationary point is a point that x star such that f dash x star is 0. जैसे if I tell you fx is equal to x square plus 2x minus 1, तो बेटा f dash x will be what? 2x plus 2. I equated it to 0, तो x आ गया minus 2 by 2 मतलब minus 1. So this minus 1 becomes the stationary point of the function. ऐसा एक x exist करता है such that your f dash x is 0. Right? So that is the stationary point. Now let us talk about critical point. अब ये critical point कैसे different है? A critical point is any point such that the derivative does not exist at that point by equating it to 0. An example of that can be beta this function fx is equal to 2 by 3. तो देखो अगर x to the power 2 by 3. So if I go ahead and I find f dash x, क्या होगा? Power comes down, power reduces by 1. So this will be 2 by 3 into 1 by x to the power 1 by 3. Can I equate it to 0? No, because this is coming in the denominator. And for this to approach 0, यहाँ पर it should be infinity. 1 by infinity will give you 0, na? And वो भी limit terms में, right? So which means that there is no x star such that f dash x is equal to 0. ऐसा कोई x star नहीं exist करता such that f dash x is equal to 0. Clear? So whenever we talk about any function, जब भी हम किसी भी function की बात करेंगे, there are two things possible. Either that function will have a stationary point, मतलब there will exist an x star such that f of x star will be 0. उसका stationary point exist करेगा. Or that function will have a critical point. Critical point means there will be no x star such that f of x star equal to 0. मतलब f of x star will never be 0. ऐसा कोई x star exist करता ही नहीं. There doesn't exist any x star such that this is equal to 0. f of x star equal to 0. तो ये हमारा difference हो जाता है between stationary and critical point. Now, usually whenever we talk about discontinuous functions, जैसे देखो any function which has a king, such functions will not have any stationary point. They have critical points. So this is a continuous function. See here, when a function is a continuous function, completely defined है आपका, then this will have f dash x equal to 0. But if a function is kinged, अगर वो discontinuous function, it is not a continuous function. So you see here, यहाँ तक function चला, it achieved a kink and then it goes here. जैसे mod x. This is discontinuous at x equal to 0, right? जब हम why it is discontinuous? Because whenever you will plug in any x very close to the value of 0, but a little less than 0, your function will take different value, and a little more than 0, your function will go towards different value. At the king, the function is going to be discontinuous. यहाँ पे. And I've already told you that pencil test, कि you start drawing, and if you have to take out your pencil, then also the functions are discontinuous. So the point is, whenever you have a kinged function, then in that case, इस point को हम stationary point नहीं बोलेंगे. This will be called as a critical, right? So this is the first derivative rule. You go ahead, you have a function, you differentiate the function, you equate it to 0, right? If the function goes from negative to positive, then you have a local minima. If the function goes from positive to negative, then you have a local maxima of the function. Okay, this is an example. Quickly, all of you should do this with me. So, ये आपका function given है. And the question is,
find out all the maxima, minima, stationary, critical points of the function. सब कुछ देखना है हमें कि क्या क्या derive हो रहा है. So what is your function? Function is 2x cube minus 3x square minus 12x plus 4. So you can clearly see that your f dash x will become 2, 3x square minus 3, 2x minus 12. So beta, this will be 6x square minus 6x minus 12. So this will be 6x square minus x minus 2. You can go ahead and use the method of completing the square. और जब हम completing the square करेंगे, we will get the thing as x plus 1 and x minus 2. तो इसमें we will get x plus 1 into x minus 2. Now what do we do? जो भी हमारा f dash x आता है, we need to go ahead and equate it to 0. So this will give me x equal to minus 1 and x equal to 2. अभी के लिए I want to go ahead and I want to evaluate the function using this test, increasing to decreasing and decreasing to increasing. Then we will go ahead and do the same thing using second order condition also. So if I just evaluate the derivative at 0, right, because 0 is greater than minus 1, तो मैं एक बारी 0 पे function को evaluate कर रही हूँ. When I evaluate the function at 0, f dash x at 0, what will I get? This will become 0, this will become 0, this will become minus 12. So I'm getting the value as minus 12. Right? When I evaluate the function at say 1, say minus 2, I will go ahead and get 6 minus 2 square minus 6 minus 2 minus 12. So this will be 6, 12, 18, 24 minus plus 12 minus 12, so 24. So what have we got? We have got that when देखो at x equal to minus 1, my function has a slope of 0, f dash x 0 बने. At 0, it has a negative slope. Negative slope is 0 पे. Negative slope. At minus 2, it has a positive slope. At minus 2, it has a positive slope. It is sloping upwards. So we can see that it is going from positive to negative. Mane, at this, it must have a local maxima, right? At this point, it must have a local maxima. So this is how you can go ahead and you can check. You can plug in some values and you can say, okay, the slope is going from increasing to decreasing. It means that at x equal to 0, the function must have attained a local maxima. अब उसी का reverse हम यहाँ देख लेते हैं. So this is at 0, this is 2. At 2, the slope is 0. 2 से पहले जब हमने 0 पे चेक किया, it is decreasing. Then just take another value, say take 3. You will find that the slope is increasing. So the slope is going from decreasing to increasing. It means that this would have been local minimum. तो हम क्या कर रहे हैं basically? We are using in a way the sign test. We are trying to see is the slope going from increasing to decreasing or decreasing to increasing, and accordingly we are going ahead and we are creating this table and telling whether it is maxima or minimum. Now, another way to go ahead and do this check of maxima and minima is to find the double derivative. Find f dash x. If this is greater than 0, then we can go ahead and say that it is a minima. And if f dash x is less than 0, then we can say that it is a maximum. जब भी f dash x less than 0 होता है, then the function that you attain is called as a concave function. And whenever f double dash x is greater than 0, then the function you attain is called as a convex function. Right? So we can go ahead and we can now check. Right? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं.
This is my f dash x. F dash x ये आया है. Now from f dash x, I will just go ahead and try to find out f double dash x. So if I just find this out, f double dash x will become 12x minus 6. And if I evaluate f double dash x at minus 1, I will get 12 into minus 1 minus 6. So I will get minus 18, which is negative. So if it is negative, then we know that it is a maximum. Similarly, you can go ahead and evaluate f double dash x at 2, and you will go ahead and you will get 12 into 2 minus 6. So it is going to be 24 minus 6. So this will be positive 18. So if it is positive, we know that it is a minimum. So these therefore become your second order test. Okay. Okay, just go ahead and try to take this question as a homework. Just do this question. Okay. Now there is a concept of monotonic functions. अब monotonic functions की बहुत simple property है. A function is said to be monotonic if as monotonically increasing, if as x increases, the value of the function also increases. मतलब जैसे जैसे मैं x को बढ़ा, when I go x1 greater than x0, तो function का value भी बढ़ जाएगा. When I go x2 greater than x1, तो function का value भी बढ़ जाएगा. So as the value of the as x increases its value, अगर function का value भी बढ़े, then it is a monotonically increasing function. And if the reverse happens, as x increases its values, अगर function का value गिर जाए, then it is a monotonic decreasing function. I am expecting that on monotonic increasing or decreasing, there can be a question in exam. एक basic concept है, but इस पे question exam में हो सकता है. Now, I will just give you an example. Just try these as part of your homework. Just take this example, हाँ? ये box देखो. So consider this. Consider monotonically increasing function. One more way to check whether the function is monotonically increasing or not is to find out f dash x. And if that is greater than 0, then we can say that it is a monotonically increasing function. Beta, monotonically increasing means increasing throughout. Increasing function is a general term. Matlab, we can say this is an increasing function when x takes values in this region, and then it is a decreasing function in this region. So generally increasing, decreasing हो जाता है when for different values of x, the slope can increase or decrease. Monotonically increasing function means that the function is throughout increasing like this, right? So if it never decreases, if it never falls, then it is called as a monotonically increasing. Okay. Okay. So now just see here, huh? Take this first example. Please verify all these examples. देखो पहले वाला एग्जाम्पल देखो. It says x cube. तो अगर मैं x cube के स्लोप की बात करूं, if my function is x cube, then the slope of the function will become 3x square. I know कि मैं x की कोई भी वैल्यू प्लग इन करूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, whatever value, मतलब whatever value you can think of, अगर वो x की वैल्यू आप यहाँ प्लग इन करोगे, you will always get a positive value here, always, right? And when it is multiplied with positive 3, it will always be positive. So if it is always positive, then we can say that this is monotonically increasing function. Right? You can, just for x cube, just let me show you the diagram also. Huh? So y is equal to x cube. So just think here. When x is 1, y is 1. When x is 2, y is 8. When x is 3, y is 27.
So this is increasing here. When x is -1, y is -1. When x is -2, y is -8. So this. So even if I see throughout, you will notice that as x is increasing its value, when -2 is clearly less than -1. And I can clearly see that -8 is also less than -1. So we can see that when x increased its value, the functional value also increased. जो value functionally वो भी बढ़ गई. The value of the function is continuously increasing as x is increasing its value. So we can clearly see that this is an increasing function. Monotonically, throughout it will increase. Take the reverse. Take monotonically decreasing function. So I have a function fx is equal to 1 by x. What will be f dash x? F dash x will be -1 by x square. We know x square is always positive. X square हमेशा positive ही होते हैं, right? So if this positive number is multiplied with a negative sign, won't it become negative? It will be less than 0. So the slope is always negative. So it is monotonically decreasing function. So you can go ahead and just plot this also. So when x is 1, y is 1. When x is 2, y is half. When x is 3, y is 1 by 3. Right? When x is half, y is 2. So when x is increasing, y is continuously decreasing. Right? So it is a monotonically decreasing function. Now take the example of x square. So we just saw that x square can be plotted like this. Right? So in this space, as I am increasing x, the value of y is increasing. But in this space, as I am increasing x, the value of y is decreasing. So it is neither thoroughly increasing nor decreasing, right? So it is not a monotonic function. Throughout, I don't see it doing the same kind of thing. So it's a non-monotonic function. These are some of the practice questions. Please practice all of these. Okay. Now let's go to some of the important properties of monotonic function. क्या properties हैं? पहली property ये बोलती है कि अगर fx this table बेटा any doubt in this? Let me know once it's done, huh? Okay, good. So now just see here. Now we need to go through some of the properties of monotonic function. पहला property. If fx is increasing, strictly increasing function, मतलब f dash x is strictly greater than 0, then its inverse will, number one, of course, exist, and number two, it will also be strictly increasing. So अगर fx strictly increasing function है, we can comment about its inverse that it will also be a strictly increasing function. To give you an example, we showed that y is equal to x cube. This is monotonically increasing function. अब अगर y is equal to x cube था, तो we can go ahead and we can understand from here that x will be y to the power 1 by 3. तो f inverse x will be what? Just पहले यहां से क्या करते हैं f inverse निकालने के लिए? You find the value of x in terms of y and then you just write y की जगह x and x की जगह y. So f inverse y will be x to the power 1 by 3. Right? So your function is x cube and the inverse of the function is x to the power 1 by 3. ठीक है?
we are saying that we have shown that this is an increasing function. ये एक completely increasing function है. If this is an increasing function, so we can say that this will also be strictly increasing function. Let's just try to show this. एक बहुत अच्छा तरीका शो करने का ये होगा कि हम अब इसको एक न्यू फंक्शन मान के इसको डिफरेंशिएट कर दें with respect to x. So power comes down, power reduces by 1. This will be 1 by 3 into 1 by x to the power 2 by 3. So beta, this will be 1 by 3 into 1 by x to the power 1 by 3 whole square. Clear? I am just taking this 2 out. Square of any number is positive. किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा. सो वी नो दैट ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है. तो अगर इफ आई जस्ट कीप बोथ ऑफ देम टुगेदर तो ये भी पॉजिटिव ही होगा. सो इफ दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. सो व्हेन fx इज इंक्रीजिंग, f इनवर्स x भी इंक्रीजिंग ही होगा. दैट विल ऑल्सो बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. That's the first thing. Okay. Now, fx is strictly increasing function in the interval AB. F inverse is continuous in the interval AB. अगर हम fx को monotonically increasing नहीं बोल रहे हैं, we are just saying that it is increasing in a particular function such that it is continuous, that then f inverse x will also be continuous. Fx is continuous such that f dash c is greater than 0. Then fx is monotonically increasing on the interval. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर fx एक continuous function है, it is a continuous function, and in the interval AB I can find some c such that f dash c is greater than equal to 0, then I can say that f dash must have been monotonically increasing function. बहुत इजी है इसे इंटरप्रेट करना. इट मे सीम डिफिकल्ट बट समझो. fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है a टू b के रेंज में. सो दिस इज a, दिस इज b. इट इज नॉट ब्रेकिंग. सो इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग, इट कैन ईदर गो लाइक दिस. इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग, इट कैन ईदर गो लाइक दिस. एक ही चीज हो सकती है, इट्स नॉट ब्रेकिंग. हाँ, सो इट कैन गो लाइक दिस और इट कैन गो लाइक दिस, और between a to b it can go like this. It is not breaking. बस इतना बोले हमने, it's a continuous function. But now what we have gone ahead and we have done is that जितने भी c हैं between a b we have f dash c greater than 0. तो अगर slope हर c पे every number that we take here उन पे slope positive है, it means that it is upward sloping क्योंकि f dash c is greater than 0 at every c between AB. So won't it automatically be a strictly increasing function? That is exactly what this is saying. This is just different ways in which in exam आपको statement दी हो सकती है. कुछ भी नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है A से B के बीच में हम continuous हैं. Okay? ये बोल रहा है आप कोई भी C ले लो, उस C पर f dash C पॉजिटिव है. Okay? अगर वो पॉजिटिव स्लोप देता है और वो कंटिन्यूअस है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऑटोमेटिकली हो गया. तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. सिमिलरली ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लिखा गया है कि डिक्रीजिंग कब होगा, राइट? एंड सेम हियर इट गोज फॉर द रिमेनिंग. सो द प्रॉपर्टी इज सेम. अब यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए लिखा है लास्ट में दैट इफ f and g आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा. एंड इफ वन ऑफ द टू फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग, देन उनका कॉम्पोजिट फंक्शन डिक्रीज करेगा. सो यू नीड टू गो अहेड एंड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो व्हेन वी से बोथ फंक्शंस आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा. But when one of them is increasing and one of them is decreasing, तो उनका composite function decrease करेगा. Just remember these properties for exam point of view. This is the second derivative test. We have already checked the second derivative test. Sometimes
when you find the second derivative, it will come equal to 0. Second derivative be equal to 0 आ जाएगा. Then we can draw no conclusion about maxima or minima. Okay. So before I go to multiple variable, let me quickly give you a question and just do this question. So let me combine some part of microeconomics in this question. So I am telling you that you have a price function given to you as 10 minus q, and you are given a cost function, let's say as say 4q. Okay. Consider that the firm is a monopolist firm. Find profit maximizing output of the firm. First, second, let's say suppose the government wants it to act as perfectly competitive and is ready to compensate it with subsidy per unit. Find the subsidy that monopolist will demand. Right, beta? This is just an application of first order differentiation. Exam में जरूरी नहीं है ना कि simple differentiation generally आ जाए. They may go ahead and they may give you one such application. So I'm giving you 5 minutes. Just solve both these questions. If you get a negative answer, it may be the case because I've just framed the question now. So this is the price function given to you and this is the cost function given to you. And there are two parts to it. पहले में तो आपको generally profit maximizing output निकालना है. Firm का, it is acting as monopolist. दूसरे में we are saying that if the government wants it to act as perfect competition and government बोलिए कि ठीक है मैं आपको subsidy per unit दे दूंगी. So you need to go ahead and you need to find this subsidy that the monopolist will demand. Just go ahead and try this question. Take 5 minutes. Then we will go to multivariable optimization. Profit maximizing output is coming as 3. Okay. And how about the second part? Everyone should be trying it. Okay. For any question you try, take a timer in hand. So it is 2:22 in my watch, right? You should be able to do both the parts by 2:25. उससे ज़्यादा नहीं exceed करना है हमें. We need to do them by 2:25.
Okay, so you're saying that the subsidy is going to be 3. Okay. Let's just try to solve this question together. So we are going to go ahead and start with the first part. In profit maximizing output of the firm, we need to equate MR to MC. So our price is 10 minus Q and our cost function is 4Q, right? So I will go ahead and find MR in this case. So TR will be price into quantity. So this will be 10Q minus Q square. So MR क्या हो जाएगा बेटा? It will be 10 minus 2Q. MC will be differentiate the cost function with respect to output, so 4. Equate MR to MC. So 10 minus 2Q is equal to 4. 6 is equal to 2Q. So Q will come out as 3. So price क्या हो जाएगा बेटा? 10 minus 3, that means 7. Price will be 7. Now the government is ready to give a subsidy per unit. तो जब भी सब्सिडी मिलती है, whenever you get a subsidy, what is going to happen after you get a subsidy? It is going to go ahead and it is going to lower your cost. Right? तो अगर मेरा total cost अभी के लिए, if my total cost is 4Q and let's say I get a subsidy of S per unit, तो मेरा जो new cost function आ जाएगा, the new cost I will get, it will be 4Q minus SQ. Right? This is going to be my new cost. Right? So therefore, if you go ahead and you find your marginal cost now, it will become 4 minus S. Okay. Then now what we will go ahead and do? We will equate. We know that it is a perfectly competitive market. So in perfect competition, P should be equal to MC. But a price जो है, price दिया हुआ है 10 minus Q. And marginal cost हमने क्या निकाला? 4 minus S. This is what I've got. And in perfectly competitive market, we need to go ahead and we need to make sure that since what will be the quantity he will be producing? We know that the quantity that this person, let me just do it before that only. So in perfectly competitive market, we want that P should be equal to MC. So the price of the monopolist is 10 minus Q. And we want him to act like a perfectly competitive market. So we want him to equate to his marginal cost. That means we want him to produce 10 minus 4. We want him to produce 6 units. So we somehow want him to go ahead and produce these 6 units. And we want him to sell it in the market at 4 rupees. But what will the monopolist do? As a monopolist, he will go ahead and he will equate MR to MC. Right? So his marginal revenue that we just found out, that is going to be 10 minus 2Q. So his marginal revenue is 10 minus 2Q. And when the monopolist he will always take this condition only. But when considering this condition, now he will consider that his marginal cost may have an aspect from the subsidy. So he will go ahead and he will equate it to 4 minus S. But he will produce the quantity the government wants him to produce. That means he will produce 6 units. Right? The government wanted him to produce 6 units. So he will produce these 6 units. So 10 minus 2 into 6 is equal to 4 minus S. So this is going to be minus 2 is equal to 4 minus S. So the subsidy will be 4 plus 2. That means 6. So the monopolist will be asking for a subsidy of 6 rupees per unit from the government. If the government wants him to go ahead and produce 6 units rather than going ahead and producing the current 3 units. The government wants him to act like perfect competition. The perfectly competitive firm will produce 6 units. Government wants him to produce 6 units. So he will go ahead and he will produce these 6 units. But he will also charge a subsidy of 6 rupees from the government. So that's the answer to this question.
Am I clear? Am I any doubt in this? Price difference is of 3 between two market. Does not matter कितने का price difference है. What matters in this case is what the monopolist will be asking the government to give it as a subsidy. Subsidy के बाद देखो, try to understand. The monopolist, when the government wants him to act like a perfectly competitive firm, उसका मतलब बस इतना है that the government wants him to go ahead and the government wants him to charge a price of 4 and produce a quantity of 6. Both these things he is satisfying. But he is still a monopolist, na? So if he is a monopolist, he will still equate his MR to MC. Right? He will still equate his MR to MC. So this is why we are going to go ahead and equate MR to MC, and that is where I will go ahead and get my condition of subsidy. I cannot go ahead and simply say कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो perfect competition में तो price 4 का है और monopoly में price 7 का है, तो just give me a subsidy of 3. ना, remember when the price is of 7, I am asked to sell only 3 units, and when the price is of 4, I am asked to sell 6 units. So I cannot only directly take the price difference. What about the extra 2 units that I am selling at 4 rupees? यहाँ पे तो मैं सिर्फ 3 ही यूनिट बेच रही थी ना 7 rupees में. अब यहाँ पर I have to sell not only at a lesser price, but I have to also sell more units. So who will consider the fact that I am selling more units also at a lower price? Right? So you directly cannot find the price differential. उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा. We need to also consider the fact that the government is now asking me to go ahead and to sell more units in the market. And therefore, I will still act like a monopolist, just that I will take the quantity at 6 and I will take the price at 4. Subsidy can also be added to producer's price as well. I will not want to do that. There is a reason behind it. The reason is that as a monopolist, whenever I maximize my profit, I will equate MR to MC, right? So since I'm equating MR to MC, I don't want to hamper left hand side. ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. मतलब you rewrite your entire price function. फिर जब आप price function लिख लोगे, उसके बाद you will recalculate total revenue. Then you will recalculate marginal revenue. Why go through that long process? Isn't it easier कि मैं directly cost को change करूँ? Because here, when you will change price, it will change total revenue, it will change marginal revenue. So I don't want to go through that long process. Monopolist will get monopolist profit even after producing. That is exactly the question, na? So see the question. It is saying find subsidy that the monopolist will demand, right? So अगर वो subsidy सिर्फ उसको ऐसे compensate करती है that his profits are still zero, तो उसको कोई फायदा ही नहीं है. He will demand a subsidy such that his profit maximization condition is intact. और profit maximization condition तब intact रहेगी if MR will be equal to MC. Only then profit maximization condition would be intact. Okay. So let me explain this again. क्या किया है हमने? पहला स्टेप तो इजी था. We just found out the profit maximizing condition of the monopolist. उसमें हमें कुछ भी नहीं करना था. Now let us grow from there. तो अब ऐसा बोल रहे हैं that the government wants the monopolist to act like perfect competition. Act means the government wants him to sell the quantity of a perfectly competitive market. तो हमने क्या किया? हमने first under perfect competition, price is equal to MC. P and MC are equal to each other. So what we did is we picked up the price function of the monopolist and we equated it to the marginal cost. अभी subsidy का कोई role नहीं है. There is no role of the subsidy. अभी हम पहले ये निकाल रहे हैं that how much the government wants him to produce. So from here we get that the government wants him to produce 6 units
and sell them in the market at 4 rupees. Okay. Now, second step, we look at the monopolist. The monopolist still wants his profit. Okay. He still wants to maximize his profit. So his profit maximizing condition is MR equal to MC. We don't change his marginal revenue function. अभी भी marginal revenue function तो 10 minus 2Q ही है. So his marginal revenue function is still 10 minus 2Q. But अब हम cost की बात करें तो yes, his marginal cost is 4, but the government is going ahead and giving him a subsidy of S per unit. So his marginal cost is falling by S per unit. And Q कितना होगा? Q is what the government wants him to sell. The government wants him to sell 6 units. So from here you will get the value of the subsidy. इतना subsidy अगर government देगी, if the government goes ahead and gives it the monopolist this much subsidy, only then the monopolist will agree कि ठीक है, now I will go ahead and I will sell 6 units at 4 rupees each. Right? Kabhi kabhi in exam, suppose I just extend the question and I ask you, okay, how much is the total deficit of the government in this case? Yeah, how much is the total loss of the government? ऐसा कोई question, suppose I go ahead and ask you. Then what will you do? How will you go ahead and how will you solve such a question? So now we are asking how much is the total loss of the government? Loss मतलब कि कितना subsidy total government ने दिया? So we just found out that the government is giving a subsidy of 6 per unit. 6 per unit. कितने units पे? जितना it is asking the monopolist to produce under perfect competition, बेटा. मैं subsidy दे ही इसलिए रही हूँ because I wanted to act like a perfectly competitive market. So I will be giving him subsidy on 6 units now. So on each of these 6 units, I have to give a subsidy of 6. So it will be 36. So this will be the subsidy given by the government or the loss of the government. Try to understand these points. The subsidy given by the government will be 36 in this case. Right? अच्छा, what is the profit of the monopolist in this case? जब हम पहले केस में profit की बात कर रहे थे monopolist की, case 1, what will be his profit? Did anyone calculate that? So price आया था हमारा 7, quantity was 3, so 7 into 3 minus, बेटा cost हो गई थी 4, quantity was 3, so this will be 21 minus 12, this will be 9. So when the monopolist is acting like a monopolist, उसको profit सिर्फ 9 rupees का है. But if he gets to act like perfect competition, he is able to sell more, and per unit he is getting the subsidy of his choice. He is getting a subsidy of 6 per unit. So he is better off. ना उसको तो 36 rupees subsidy मिल रही है. What? Nothing like that. And at the same time, people are also better off because there is no deadweight loss for the people. उनको तो प्राइस 4 पे मिल रहे हैं, यूनिट 6 मिल रहे हैं. The only party which is at a loss is government, जो subsidize कर रही है, that will be at a loss, right? So this is how you can go ahead and solve these kind of questions. Nevertheless, the question is if you were able to go ahead and differentiate properly or not. Okay, just revisit this question once. If there is no mention of subsidy, then we can equate P equal to MC. Yeah. If अगर ऐसा कुछ mentioned ही नहीं है, government wants to compensate him, etc. If it simply says find the quantity such that the monopolist acts like perfect competition, then you will simply say P equal to MC. But we just kind of, increased the level of the question by including the concept of subsidy here. Okay. Now let's go to multivariable optimization. Of course, yes, subsidy becomes the profit of the monopolist. Exactly. Because otherwise his profit will be 0. Dekho, when he will act like perfect competition, P or MC barabar hai. So total revenue minus total cost plus now he is getting subsidy from the government.
but P and MC are equal to each other. तो PQ minus PQ हो जाएगा plus S. So this is 0 plus S. So this will be S. So only the subsidy will be the profit of the monopolist. Price और marginal cost अब बराबर हो गए हैं. So if he acts like perfect competition, he is not earning anything from the market. No, beta, this is not the case of natural monopolist. Natural monopolist is where you become a monopolist because you have a very low average cost. This is just an extension where we compare monopoly versus perfect competition. ठीक है? Natural monopolist is where your average cost keeps falling. वो नहीं है यहाँ पर. That is not what we are asking here. Okay. Now we come to the concept of multivariable optimization, but a very similar to single variable optimization. But before we do that, you need to understand the concept of level curves. So उसको ये diagram बहुत अच्छे से समझा रहा है. So just try to see this. My function is z is equal to x square plus y square. So this is a 3D diagram. You will put some value of x, some value of y, और उससे कुछ value z का मिलेगा. And you see here that this is my diagram that I have here. Whenever we want to maximize or minimize the diagram, the function in such cases, from this function, जो भी हमारा यहाँ पर function होगा, उससे we will go towards something which is called as a level curve. हम एक level curve की तरफ जाएंगे. In a level curve, what we do is we hold the z variable constant. So जैसे for example, I can go ahead and I can say that let my z be 1. So if my z is 1, क्या मिल जाएगा? X square plus y square is equal to 1. But this actually represents a circle of radius 1. क्योंकि circle का equation होता है x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square, where a and b represents the center of the circle. So in this case, I have x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 1 square. So I can say that, okay, this is a circle of radius 1 with center at 0, 0. Similarly, if I would have gone ahead and taken x square plus y square equal to 4, तो ये मेरे को circle of radius 2 दे देता. Then circle of radius 3, circle of radius 4, and so on and so forth. So from a 3D diagram, I have been able to go towards a 2D diagram. This 2D diagram is a level curve of the 3D diagram, जिसमें हमने जो z value है ना, उस z value को constant रखा है. We have kept the value of z constant. Now, but a maxima minima के लिए क्या करना है? We just need to go ahead and see where this level curve is attaining the minimum value and where this level curve is attaining the maximum value. This is clearly I can say that when x square plus y square, this is equal to 0. That means when x is also 0 and y is also 0, then I will be here. This is the minimum value possible. और धीरे धीरे अगर मैं x square plus y square की value बढ़ाती जाऊं, then I will be increasing the value of the z. So this is the minimum value possible where x square plus y square gives me the answer as 0. And जैसे जैसे मैं बड़े बड़े circles पे जाती जाऊंगी, I would be increasing the value of my function indirectly. क्योंकि this is nothing but this is my function, right? So we can say that as I will be moving away from the origin, जैसे जैसे मैं higher concentric circles पे जाती जाऊंगी, I will be going towards higher and higher and higher value, whereas this will be the minimum value of the function possible. Similarly, what you can go ahead and you can say is that suppose you have a different function now. जैसे अगर आपका function है z is equal to 50 minus x square minus 2y square, right? तो अब क्या होगा बच्चे? When you will put x and y as 0, दोनों को हमने 0 रखा, so you will notice that your value of z will be 50. और जैसे जैसे हम x y की वैल्यू को बढ़ाएंगे, as I will increase x and increase y, so I am subtracting some number from 50, तो वो 50 से कम होता जाएगा. So for example, if I take x1 and y1, then what will be my z? My z will be 50 minus 1 minus 2. That means I will get 47.
Whenever you will put higher values of x and y, because you will be subtracting some positive number, z girta jayega. So now we can go ahead and say that the highest value of c possible is at x and y equal to 0. जब x और y 0 हैं, then I am getting the highest value of my function. और इसके अलावा whatever x and y you will put, you will be subtracting something from 50. 50 से गिर जाएगी value. So you will be reducing the value of the function. तो अब मेरा reverse हो गया. That when x and y are 0, this is my value of the function is 50 at that case, and this is the maximum value possible. और जब मैंने x and y को 1 1 दिया था, when I took x and y as 1 1, that means this point, then I found out that the value of the function becomes 47. Value गिर गई. So all around this circle, जहां पे भी value 47 होगी, it will be less than 50. Then as I keep increasing x and y, जैसे जैसे मैं x and y बढ़ाती जाऊंगी, I will be subtracting more from 50. So I will be going to a lesser and a lesser value. So this is the reverse. At the center, I have the maximum value. And as I will go to level curves outside, जैसे जैसे मैं x और y का value बढ़ा रही हूं, then I will be reducing the value. So here this is representing the local maxima, and here it is representing the local minima. Just understand this concept vaguely. So what is the concept? That whenever you have a three-dimensional diagram, 3D diagram, three variables, x, y, and z. So from that 3D diagram, we can create a level curve. Level curve में हम x और y की values change करते हैं और हम z को constant रखते हैं. By creating these level curves, we can evaluate different level curves and see where we have reached a maxima or minimum. Diagrammatic approach ये कहता है. This is a diagrammatic approach. Sometimes, as you go from x to y, ना ही value increase होती है ना decrease होती है. It goes ahead. I mean, you neither reach a maxima or minima. जैसे here. In the above two cases, you were able to form circles. ऐसे ऐसे circle बन रहे थे उन function में. But sometimes what will happen ना, you will get a curvy like situation. So in such cases where I am not able to define neither a maxima nor a minima, such points become my saddle. So यहाँ पर हमने clearly बताया था that at 50 we are reaching a maximum. Here we clearly told that at 0 we are reaching a minima. But if I am not able to tell maxima minima, तो उसको हम saddle point बोल देते हैं. Now let me show you through an example. Things will become clear. So this is given a function to you. Function क्या दिया हुआ है? The function given to you is x square y minus 2xy square plus 3xy plus 4. So first of all, step 1, you need to do the first order condition. कैसे करेंगे? Differentiate the function, equate it to 0. Differentiate the function, equate it to 0. So when I will differentiate this function with respect to x, what will I get? Hold all y constants. ये constant, ये constant. You will get x square minus 2. Sorry, with respect to x, है ना? So you will get 2xy minus 2y square plus 3y. Hold all y's constant and equate it to 0. So यहाँ से if I just take y common, I will get 2x minus 2y plus 3 equal to 0. This will become your first condition. Now differentiate your function with respect to y. So if I will differentiate this function with respect to y, suppose, so what will I get? I will get x square minus 2x into 2y, x is constant है, plus 3x equal to 0. Again, I can take x common. I will get x minus 4y plus 3 equal to 0. So ये same है, like the simple single variable optimization. कि you will differentiate with respect to a variable, equate the first derivative to 0, differentiate with respect to the second variable, equate it to 0. Now,
You have seen that यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन 1 and equation 2. Equation 1 says that either y will be 0 or 2x minus 2y plus 3 will be 0. क्यों, कैसे पता मुझे? The product of two things is 0. तो product of two things will be 0 when? या आपका y 0 होगा या दूसरा वेरिएबल 0 हो जाएगा. And this gives me that either my x is 0 or x minus 4y plus 3 is 0. I must go ahead and evaluate all such combinations. मुझे हर combination को evaluate करना जरूरी है. तो मेरा पहला combination ये create हो गया, यहां से आएगा y0 और यहां से आएगा x0. ये हो गया combination number 1. Combination number 2 हो गया y0, यहां से ये और यहां से ये equation x minus 4y plus 3 0. Combination number 3, 2x minus 2y plus 3 0 and x 0. Combination number 4, 2x minus 2y plus 3 0 and x minus 4y plus 3 0. तो हर एक के जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज आई हैं, whatever possibilities I have got from here, I need to go ahead and I need to evaluate each of them. मुझे हर एक को evaluate करना जरूरी है. So this becomes my first point. Second में कैसे आ जाएगा? If y is 0, I will just put y as 0 here. So I will get x as minus 3. If x is 0, I will put 0 here. So I will get y as 3 by 2. And ये दो equation है. You can solve them simultaneously and get some x and some y. So you will have your 4 points now. क्या क्या points आ जाएंगे? If you just note this, x0, y0, x0 and x minus 3 y0 and x0 y3 by 2, ये जो हमने अभी निकाले. And when you will solve these two equations simultaneously, you will get minus 1 comma. So you have gone ahead and you have got 4 critical points in this case. क्योंकि 2 variable case था. So you have got these different critical points. Each point, जो भी हमारे पास यहाँ पे point आए हैं, you can put them back in the function and get the value of the function. So what was my function? My function was x square y minus 2xy square plus 3xy plus 4. तो पहले मैं x and y को I will plug it equal to 0. So when I will plug x and y equal to 0 in the function, तो मेरा function का value आ जाएगा 4. When I will plug minus 3 comma 0 in this function, that means when I will put x as minus 3 and y as 0, so then I will get the value of the function as 4. When I will put x as 0, y as 3 by 2, I will get 4. And यहाँ पे मेरा answer आ जाएगा 7 by 2. So you can clearly see that here I am getting 4, 4, 4. And here I am getting the answer as 3.5. So clearly, this is the minimum value of the function. Or in तीनों points I am getting maximum value of the function. So this is how you can go ahead and check the maxima and the minima. So यहाँ पर what are the steps involved? You will be given a function. You will find its derivative with respect to x. You will find its derivative with respect to y. You will get some xy that satisfy these conditions. Each of this xy, you will check their value back into the function and you will get different values of the function. Then you can just evaluate and check कि किस value पे function का maximum reach हो रहा है और किस value पे function का minimum reach हो रहा है. One last thing. This is called as second order condition. I have a high intuition कि अगर ये exam में आएगा, it will come as a theoretical question. Okay, how to make possible combinations? Yes, beta. So I have just see here. I had differentiated x with the function with respect to x, differentiated the function with respect to y. When I differentiated it with respect to x, so I got this equation and I equated it to 0. When I differentiated it with respect to y, I got this equation, so I equated it to 0. दो equation आया, दोनों को मैंने 0 से equate कर दिया. Now, from the first equation, what do you see?
कि y into 2x minus 2y plus 3 should be equal to 0. The product of two things will be 0 if one of them is 0. एक 0 होगा तभी product 0 होगा. So this means that either y will be 0 or 2x minus 2y plus 3 will be 0. ये कहां से आया? First order differentiation with respect to x. Similarly, when I will differentiate this with respect to y, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. I equate this to 0. तो इससे मेरे पास आ जाएगा that either x will be 0 or x minus 4y plus 3 will be 0. Now I am just creating different combination. तो मैंने यहां से पिक किया y0 और यहां से पिक किया x0. This becomes my first combination. Second combination, मैंने यहां से पिक किया y0 और यहां से पिक किया ये वाला पार्ट. So x minus 4y plus 3 equal to 0. Third combination, मैंने यहां से ये वाला पार्ट पिक किया. So दोनों इक्वेशन से एक एक उठाना है. एक यहां से उठाना है और एक यहां से. हाँ. So 2x minus 2y plus 3 equal to 0. And from here I am picking this one, x equal to 0. And then at last I am picking one this and one of this. So I have just picked D, 2x minus 2y plus 3 equal to 0 and x minus 4y plus 3 equal to 0. These are the different cases I have done. This with this, this with this, this with this, and this with this. Now you have got these points. So अगर मैं y equal to 0 इस equation में if I just plug in, from here you will get x equal to minus 3. If x equal to 0 you plug in this equation, you will get y equal to 3 by 2. Or these are two equations, you solve them simultaneously. So you have got these 4 points then. Okay. Okay. So just remember this now. This is also known as Hessian matrix condition. Right? Very, very easy to understand. बहुत ध्यान से सुनो. The first thing that I have to verify that a local maxima or minima will exist only when this Hessian determinant, this is positive. अब ये कैसे क्रिएट हुआ? ये वैल्यू कहां से आई? This is simple. क्या किया मैंने? देखो, I have written x here and x here, y here and y here. Now look very carefully. X and x is coming here. So here I will double differentiate the function with respect to x. पहले एक बार differentiate किया function को x की तरफ से, फिर से differentiate किया. Here x and y are coming. So I will differentiate the function with respect to x1 and again differentiate it with respect to y. Here y and x are coming. So I will differentiate the function with respect to y and with respect to x. Here y and y are coming. So I will differentiate the function with respect to y and again with respect to y. I will find the determinant of this matrix. This is called as Hessian matrix. अगर इसका determinant निकालेंगे, so this will be f double dash x, f double dash y minus f double dash xy into f double dash yx. अब एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं यंग्स थ्योरम. This says that चाहे आप पहले x से differentiate करो and then y, or you differentiate with respect to y and then x, both are same. So these two are actually same only. So I will just square this and remove this. For maxima or minima to exist, this determinant should be positive. सिर्फ तब maxima या minima exist करेगा, right? So this is what we have written here. I have tried to find this Hessian matrix का determinant. This is how this is coming. If this is positive, अगर ये positive है, सिर्फ तब local maxima या minima exist करेगा. अब इसके बाद हमें क्या करना है? Suppose ये positive आ गया, मतलब या maxima है या minima. Either it's maxima or minima. Now we will go ahead
and we will look into this first element. If this first element is positive, then it is a minimum. If it is negative, then it is a maximum. जैसे हम पहले करते थे, if double derivative is negative, then maxima. If double derivative is positive, then minimum. यही तो करते थे. So that part is the same. If this double derivative is positive, minima, double derivative is negative, maxima. But इस step से पहले in exam they will give you this as a theoretical question. इतना बड़ा complicated solve करने के लिए नहीं देंगे. But they will go ahead and ask that what is the condition of second order condition of multivariable optimization. तो पता होना चाहिए that in multivariable optimization second order condition maxima या minima exist तभी करता है when the determinant of this matrix that I have created it is positive. If it is negative, अगर ये less than 0 है, then it will be a saddle point. और हमने कैसे डिफाइन किया था सैडल पॉइंट को? दैट मींस नो मैक्सिमा और मिनिमा. एंड इफ इट इज 0 देन नो इंफॉर्मेशन, वी कांट टेल. सो दिस कंडीशन यू नीड टू रिमेंबर. Okay, so after you find out that your Hessian determinant is 0, you look into this observation, f double dash x, just this one. If this observation, if this is positive, then minima. If this observation is negative, then maxima. So negative maxima, positive minima, right? But you only do this when your Hessian matrix has a determinant which is positive. If the determinant of Hessian matrix is negative, saddle point, and 0, then no information to go further. Okay, this is how you identify a saddle point mathematically. A saddle point is any point where your Hessian matrix determinant becomes negative. And graphically, it is a point where neither maxima nor minima can be achieved. मतलब अगर मेरे 3D diagram में उसका कोई maxima या minima point है ही नहीं, then it is a saddle point, right? And mathematically, whichever has this Hessian determinant negative. Okay. So I want all of you to go ahead and just remember this part. No, this is enough. बेटा, you just have to remember Hessian matrix. इसी से हमने सारा जो भी second order condition है वो clear कर दी है. H equal to 0 means we have indeterminate result. We cannot tell about maximum minima. It's not enough information to tell for the function. Simple. Okay. So I want you to go ahead and revise this lecture today. Hey, good evening, everyone. I hope all of you have understood well what is single and multi-variable optimization. This is very, very important for your exams. And now, we have been there since morning. And I hope that all of you have gone ahead and done whatever we have done since morning. So we started with set theory, we completed set theory, we did relations, we did functions. Then after that, we did matrices, we did determinants. And then after that, we went ahead and we did limit, we did continuity. And finally, we went ahead and we did differentiation, we did single and multivariable optimization. So we have gone ahead and we have reached a long way now in your maths course. Now, once we understand and we have revised differentiation, the next aspect of the revision is always integration. Okay? Post differentiation, we should always revise integration. So go ahead, have your dinner, and then come back, join the same session, and then we are going to start the session on integration. So we are going to meet in another 25 minutes.
And after that, after 25 minutes, we're going to go ahead and do a session on integration. Post that, we are going to do a session on LPP also. We are going to wrap up the entire maths in one day. Okay? So I want all of you to take a break, to eat your food, to come back, and then we will go ahead and take the session on integration. Okay.
Okay, so we now go ahead and we begin the session for integration. Integration, although may not directly be asked in exam, directly नहीं आता है integration में से question. I mean, it can come. ऐसा नहीं है कि नहीं आता, माने सब method of substitution नहीं आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता. But usually it is observed that when we talk about integration, तो the application of integration, area under the curve, या फिर finding out consumer surplus using integration, finding out dead weight loss using integration, इस चीज से related questions are very commonly seen in the exam. So let's go ahead and let's begin the session on integration. Okay. I hope all of you are going to go ahead and wrap up the entire maths along with me. So in the meanwhile, we are on the verge of completing maths. I just want to go ahead and I just want to, tell you that next week we will be revising 2 subjects simultaneously. The first subject that we will be taking next week. So, kaise hoga na? I have, as you would know, I have already posted 50 recorded solutions of probability. And as many of you were requesting me, I have already sent a recorded solution of limit, continuity, domain, function to the team. It sometimes takes a bit of time for them to edit the videos and upload. So that is why you see some lag, but you will see them on your portal soon. It has been recorded from my side. So I am only left up with the recordings of matrix, determinant and the integration assignment that I am showing you today. उसके अलावा सारी ही assignments have been well recorded. Okay. So what I will be going ahead and I will be doing now is that in the revision session that is going to be there next week, we will be taking 2 things simultaneously. 2 चीजें हम साथ में लेंगे for the next week. The first would be statistics. So I will be going ahead and giving you some topics every day. And the aim is, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ from the group doubts, you have understood the concepts well, but now you need some more practice. Like for example, all of you were always telling me that you could not grasp the concept of probability. So these 50 questions will help you beta. उस probability में these questions will be very useful to you. ऐसे ही like I remember you were telling me that you have doubt in Bayes theorem, है ना? So I'm going to record some questions based out of Bayes theorem. Then I am expecting कि इस बार शायद probability distribution से कोई उनकी properties पे question आ सकता है. There will be a chance that they may give you a question on say the property of exponential distribution, कि what is its mean, what is its variance. जैसे you know, you have seen these kind of questions in mock paper also. Like if I tell you that the variance of a binomial distribution, ऐसा कुछ दे दिया हो exam में, variance of binomial distribution is 16 and the mean of binomial distribution is say 4. Then they will tell you find, suppose they will tell you find the number of observation. बहुत simple question है ये. So these are the questions which are based on the properties of distribution function, right? So in this case, you need to remember कि okay, binomial का mean जो होता है that is NPQ. Binomial का variance जो mean होता है, what is that? How do you find n? Right? You can just divide the two and you will be able to get q. And then how you will find n? So basic question based out of some data set. जैसे यहाँ पर वो पूछ सकते थे find probability of success, probability of failure. तो अगर मेरे पास यहाँ पे NPQ divide by NP करके if I get the value of Q somehow, then I will be able to get the value of P by doing 1 minus Q. Then I know NP, so I will be able to find N also. So something like this can be asked in your exam. So we need to be thorough with such properties. So that is what I think can be asked in a statistics paper. Statistics part of the paper, तो हमें ये वाला part को revise करना भी जरूरी है. So then I will be assigning some part of the questions on these properties. Right.
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉपर्टी पूछ लिया, एंड वही सेम लाइक द वेरी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमें अभी तक अपने मॉक पेपर्स में दिखे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर इन नेचर. मॉक पेपर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Like just yesterday I'm sorry, I'm taking just some time, but I just want to discuss all of these things. So yesterday I was recording this question on mock paper, and I think that 90% of you have made a mistake in that question. जिसमें ना it says that for India you are given the demand and supply of oil, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वहां पर हमने दिया हुआ है कि for France the demand and supply of soil is given. I think this is mock paper 7. और फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द प्राइस इन इंडिया आफ्टर इंपोर्ट्स टेक प्लेस. मोस्ट ऑफ यू फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स दैट आई सॉ हैव डन दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली. हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को 2-3 बारी रिवीजन जरूरी है. सो इट इज टाइम दैट यू गो अहेड एंड यू डू द मॉक पेपर वेल. तो यहाँ से यू हैव टू फाइंड आउट द इंपोर्ट, फिर इंपोर्ट इंडिया में आ रहे हैं, सो यू हैव टू ऐड इट टू द सप्लाई ऑफ इंडिया, एंड देन यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम. So that is why such questions needs to be practiced. वो आप mock paper से कर लेना. But other than the questions which have not been taken in the mock paper, I just want to add them to the question bank. तो वहां पर ये probability में property related question you will find. So this is the first aspect that we will be discussing next week. It will be more of a practical approach. जहाँ पे my aim is to give you more questions and we practice those and I give you the solutions of those. The aim is not to help you understand. इस टाइम पे I know you know what is mean, median, mode, GM, HM, ये सब सबको पता है. उसका टाइम किसी के पास नहीं है that you start reading those concepts now. The time is now that you go ahead and you revise those concepts through number of questions. ठीक है? That's the first thing. The second thing that I will be doing in parallel. So first of all, in the CUET group, I just saw that there was a request where I have missed doing employment generation scheme post some year. So I remember I need to do this employment generation scheme for the second half of the lecture. तो पहला तो हमने employment generation scheme शुरू के कर लिए हैं, but I need to give you some more names. Then because ये वाला जो committees वाला part है, this is quite unpredictable. मतलब कुछ भी committees में they ask. They can ask you a monetary committee, an industrial committee. So I am just going to make a mind map of different committees. और वो मैं आपको next week I will discuss that with you in class. And third and most important, so as you were requesting that we need to discuss budget once. So what I will do is I will discuss this year's budget. Right? इस साल का हम budget discuss करेंगे. But along with that, we will go ahead and we will compare it with the last year's budget. Comparison. So these are the 3 aims that I will be taking next week. Along with this, every day I will be giving you an aim. तो मैं जैसे आपको बोलूंगी that today all of you have to go ahead and have to revise the land reforms. You have to revise the NEP policy. You have to revise the 5-year plan. And I am giving you MCQs based on these 3 topics. तो आपको वो वाले topics उसी दिन करने हैं, right? So Indian Eco, we will be going ahead and we will be taking that part of the Indian Eco from the next week. That means from Monday. It will be where I will be giving you some topics daily. I will be giving you some MCQs और वो MCQs आपको उसी दिन solve करने होंगे. And simultaneously we will be taking up the statistics part, right? In the meanwhile, Sunday को we will keep a full-fledged maths test. It won't be very difficult. बहुत difficult नहीं होगा. It will be on the level of what has been asked in the previous CUET papers, and थोड़ा सा NTA ने level अपना बढ़ाया है this year for UGC NET. So I want to not take a risk in CUET also. Maybe they increase the level in CUET further. So it is better to do than to repent later. तो हम ये maths का जो paper रखेंगे, it will be on the lines of what have been asked in the previous years, but थोड़ा सा उसके paper के level को I will just uplift that level थोड़ा सा, हाँ. But it won't be more than what has been given in your revision assignment. उससे ऊपर तो definitely level नहीं होगा. That is what we will expect in the final exam. उन revision assignment से ऊपर we won't expect anything in the exam. So that is my plan for the next week, and let's see how much we are able to go ahead and implement that. Okay. Now let me talk about integration. तो देखो,
I am expecting 2 questions at max from the topic of integration, area under curve, which is called application of integration. या तो इंटीग्रेशन आएगा या एरिया अंडर कर्व आएगा. देयर विल बी वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, राइट. अगर बहुत मैथमेटिकल हो गया तो दोनों क्वेश्चंस एक एक करके आ जाएंगे, बट यूजुअली देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन. And then there is going to be one question which is going to be based out of differential equation. और जब हम differential equation की बात करते हैं, again either there will be a question on order and degree, जिसमें वो आपसे order और degree पूछेंगे differential equation की. I have added multiple such questions in the revision assignment that I am giving you today. और अगर ये नहीं आता है, then they will ask you to solve a differential equation, जिसमें they can either ask you a particular solution or a general solution. Now, if you look into your actual videos, जहां पे हम lecture videos की बात करेंगे differential equation की, you will see that here I have given you a lot of case studies, a lot of difficult cases also, but today I am just going to cover some basic cases based on the past year papers that I have seen. अगर you want to deep dive, if you want to see कि नहीं इससे थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है differential में, you can always go back to those video lectures and study those also, हाँ. बट अभी का एम ये है that we cover the topics in a way कि अगर क्वेश्चन दिख गया, we are able to solve something out of it. So these are the questions which can be asked from differential. So I'm expecting 2 questions, either this or this from differential, and 2 questions, either this or this from integration can be asked. And today's revision will be exactly based on that. Okay. अब पहले बात करते हैं integration की. So there are some rules of integration. These are the basic formulas of integration which every one of us have to remember. एकदम ही basic integration formulas हैं, but these are very important. तो पहला देखो, it goes ahead and says that you have x to the power n. So in integration you will always add 1 to the power and divide by n plus 1. तो अगर x to the power n होगा तो it will become x to the power n plus 1 upon n plus 1. Like that only, if I just go ahead and I take the next integration, that means log x. तो देखो बेटा, log x का differentiation होता है 1 by x. When you differentiate log x, you get 1 by x. So when you will integrate 1 by x, you will get log x. There is just one thing that we need to remember here. Whenever we perform integration on 1 by x, कभी कभी the question is very basic. जैसे उन्होंने बोल दिया, the integration of 1 by x dx will be, and they give you 4 options: minus 1 by x square, b plus c, b log x plus c, c log x plus c, d log x square plus c. ऐसा कुछ दे दिया. So you need to go ahead and remember कि जब भी हम log की integration करते हैं, so whenever we will integrate 1 by x, whenever we will get the answer, it must always be in the mod form, huh? So this is something which is basic things जो हमें याद रखनी है. So it will always be in the log form. Integration of ex is ex, differentiation of ex is ex. Then suppose you go ahead and you see something like this. ऐसा कुछ आ गया एग्जाम में, 2 to the power x dx का इंटीग्रेशन करो, ठीक है. So remember this thing. जब हम इसका differentiation कर रहे थे, when we were saying a to the power x, its differentiation was a to the power x log, right? So we were using log here, है ना, and log it, huh? And when we will differentiate, integrate it, so it will become a to the power x, log a will come in the denominator. So we need to remember that integration में log a will come in the denominator and differentiation में it will come in the numerator. A lot of time a नहीं दिया होगा, you will rather be given some number here. And I know that many students end up marking the answer as 2 to the power x plus 1 upon x plus 1. ऐसा कुछ करते थे. They add to the power and then they divide by x plus 1. It is absolutely wrong. ये नहीं करना है. Okay, so then you have some of the integrations of the trigonometric function. It has been seen. आपको लगेगा कि trigonometry याद करना मुश्किल है, but it has been seen in the past year paper that trigonometric integration has been asked multiple times. So from integration point of view,
the trigonometric integration is important. It has been asked in the past year papers also. तो बस ये वाला हमें याद रखना है that integration of sin x is minus cos x is sin x, sec square x is tan x, cos x square x is minus cot x, sec x tan x is sec x, and cosec x cot x is minus cosec x. These are basic integration. और एग्जाम में कभी कभी यही एकदम बेसिक इंटीग्रेशन विल बी आस्क्ड, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, they will simply go ahead and ask you integrate cos x dx, that's it. So these basic integrations of trigonometry are important. Now just go ahead and look here. So if we need to integrate cot x, इसका integration is log of sin x plus c. So अगर आप इसको याद नहीं रखते हो, if you don't remember this thing ना, then it will take a lot of your time in exam and then also you won't be able to derive this. कुछ भी कर लोगे, इसको derive करना बहुत मुश्किल होगा. So these are some of the rules which my suggestion is that you make a quick chart and remember all of these rules. Like that only we need to go ahead and remember these integration rules here also. Again, very common question in the paper, very common. ठीक है, so please don't skip this part, इसको याद करना जरूरी है. So 1 upon a square minus x square under root, this is sin inverse x by a plus c, minus 1 upon a square minus x square under root, this is cos inverse x by a plus c, and so on and so forth. ये वाला जो पूरा set है, you need to go ahead and remember all of these. I am marking them important from the point of view of exam. This part is a little tricky and it is expected for you to know कि integration का trigonometric implication क्या है. What does integration mean trigonometrically? So anyone who can tell me what integration means trigonometrically? Differentiation is simple. If I have a curve and I draw a tangent, तो ये जो tangent draw हो रहा है, this is the slope of the curve and this is what you get when you differentiate. But what does integration mean trigonometrically? क्या मतलब होगा integration का? Anyone? Summation area, okay. Okay. So बेटा area under the curve is an implication of integration. उसका मतलब integration नहीं है. So integration, what it means now? So supposedly you have to consider 1 by 2 root x dx. You go ahead and you integrate this, huh? So the point is that whenever you will go ahead and integrate a curve, you will get an answer to it. जो आपका आंसर आएगा, if you, and whenever we integrate, we get a possible level of, we get a lot of values out of it. So if I will integrate x, I will get x square by 2 plus c. So this c can take multiple values. It can take the value 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2. ये c multiple values ले सकता है. So as we will change this c, जैसे जैसे हम इस c को change करेंगे, we will get different curves. So for example, here I got the curve root x minus 1. जब हमने c को plug in किया minus 1. When I plugged in c as 0, I got the answer as root x. When I plugged in c as 1, I got the answer as root x plus 1. So whenever you will integrate any curve, उस curve को integrate करने के बाद, the answer that you will be getting, you have to go ahead and plot that answer for different values of c. Right? हमने different values of c के लिए उसको plot कर दिया. Now, if I will go ahead and I will find the tangent to each of this curve, you will see that you will find parallel lines which can be jotted down across one vertical line. तो this is the meaning, क्योंकि देखो क्या मतलब है इसका. So for example, it says that when you integrate x now, you get this. It means that when you will differentiate this x square plus 2 by c, तो differentiate करके ये आना चाहिए. So इसका slope ये है ना. It means that the slope of x square by 2 plus c, its slope is x now. So if I will go ahead and I will plot this curve, x square by 2 plus c, for different values of c. So for example, c is 0. हाँ, so y is equal to x square by 2. So ये curve ऐसा बन गया.
Then suppose c is 1, ये कर वैसा बन गया, c is 2, ये कर वैसा बन गया, c minus 1, ये कर वैसा बन गया. I get different curves. So इसका differentiation is this x. It means that when I will find the slope of these curves, for all of these curves, I should get the slope as the same answer, that is x. Right? This is what it is saying. That you put different values of c, you will get different curves. And when you will find the slope of these curves, तो slope करने के बाद ही तो you get the actual value. You get back this answer. And this is the same. C might differ, but जो उसका slope निकल रहा है वो same ही है. So we go ahead and we find its slope, and that is the same. They are parallel lines. This is the implication of integration in terms of graph. So you can just read this out. The graph of these functions give infinite family of curves such that at point on these curves with the same x coordinate, tangents are parallel as they have the same slope. In सबका ही जो slope होगा वो एकदम same. Okay बेटा, then you have some of the rules of integration. तो suppose मैंने आपको ऐसा दे दिया that you need to differentiate a function and then you need to integrate that function. तो बेटा अगर मैं किसी को differentiate करती हूँ फिर मैं उसे इंटीग्रेट भी कर रही हूँ. इफ आई एम परफॉर्मिंग बोथ द टास्क टुगेदर, राइट, और आई एम इंटीग्रेटिंग एंड देन डिफरेंशिएटिंग. सो व्हेन आई विल इंटीग्रेट एंड देन डिफरेंशिएट, आई विल गेट बैक द फंक्शन इटसेल्फ. यू कैन जस्ट प्रूव दिस आल्सो. कोई एक फंक्शन ले लो, से टेक द फंक्शन एज x, इंटीग्रेट कर दो फंक्शन को, सो यू विल गेट x square by 2 plus c, and now differentiate this part, so you will get 2x by 2 plus c, so you will get plus 0, so you will get x itself. This is a basic rule, huh? ऐसे ही these rules are important. If you have any constant, constant can come out of integration. Whenever you are adding multiple functions together, मतलब आप अलग-अलग functions को integrate कर सकते हो. And here it means that when you will differentiate the f of gx function, जब इसको integrate करोगे into gx, g dash x dx, this is simply going to give you your original function plus c. So just see this, huh? If I have, ये देखो, I am performing a chain rule in a way, differentiation of f into differentiation of g dx integrated. This is just f of gx, right? So it will give you back the fog function. Now these are some. Achha, I've just done this now. I have discussed these rules. Okay. Now these are some examples that all of you will go ahead and revise. ये सारे के सारे examples देखने जरूरी हैं. So just consider this. If it just gives you integrate ax plus b dx, so ax plus b is coming in the denominator. So अगर ये denominator में आ रहा है, it will become ln ax plus b plus c. But ये देखो, this is not just your log x. इसके अंदर ax plus b है, तो आपको ax plus b का जो कोएफिशिएंट है, you need to divide it by that also. So it will be log ax plus b by a. यहाँ पे a भी आएगा. So I just want all of you to go ahead and take these examples as homework and revisit each one of them. एक एक example को आप दोबारा देखोगे, यहां से ही आए. हाँ, these are the general things. ये जो हमने यहां देखा, इनका ही it's an implication of these only. But you just see कि यहाँ पर बस ax plus b कर दिया है, so everything is getting divided by a now, right? तो ऐसा थोड़ा सा tweak they will do in exam also. Okay. Now these are some of the trigonometric identities that you must remember. Okay, just one thing before we go ahead. See, in case you think that you are not able, just many students find integration very difficult. Differentiation that they are okay, but integration they are not able to do that. It is my high suggestion that try to simply skip the topic for now if you don't have time. We just have say 20 days left, 20-25 days left. अगर लगता है कि trigonometry is too much, right? And I will not be able to do this part, so integration को you can skip also.
at least this trigonometry part. Basic integration to bhi you will be able to do. Still you can understand this part, but you can skip the trigonometry part. My only worry, मैं एक बारी आपको बता दूं, is that for example this year the IIT paper was super easy, right, as compared to the previous year. पिछले साल से अगर हम compare करें तो IIT का पेपर बहुत आसान है इस बारी. When the paper is easy, everybody is able to do well. तो उस केस में the cutoffs will increase a lot. और जब कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, then your scope of getting into a good university becomes less unless आपने सारे topics अच्छे से पढ़े, right? So sometimes getting an easy paper is a worrisome thing. क्योंकि अगर easy paper आएगा तो सभी तो अच्छा करेंगे, और अगर सब बच्चे अच्छा करेंगे तो कट ऑफ भी तो हाई जाएगी. तो उस केस में अगर आपने एक टॉपिक छोड़ के कुछ क्वेश्चंस छोड़े होंगे तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी वन स्टेप बिहाइंड अदर्स, राइट? तो ये चीज का ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज देयर. बट स्टिल एक दो टॉपिक अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, डोंट जस्ट रन आफ्टर दोस टॉपिक्स. इट इज फाइन टू लीव देम एंड डू द रिमेनिंग टॉपिक्स. सो इफ जैसे you know, yesterday also you were one of you were telling me कि trigonometry you're finding very difficult. It's okay. अगर एक दो टॉपिक ऐसे हैं कि you're not able to perform, inverse नहीं आ रहा या trigonometry नहीं आ रहा, you can skip that part. But पूरा maths skip करना, that will not be a good thing to do, right? Okay. So these are some of the other identities. These are easy to remember, it seems, right? So 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B. Just remember, just look at these identities once. Okay, now let me just show you the kind of questions that will come in exam. बहुत simple questions होंगे. So consider this. If I give you 8x cube plus 1 dx, then we clearly can see that 8 will come out, integration of x cube plus 1 dx. This is going to be 8. X to the power 4 by 4 plus x plus c. So this will be 2x to the power 4 plus x plus c. And that will be the answer to this question. But just practice all of these, huh? But अगर ऐसा कुछ question है, suppose I give you 2 sin 2x plus 3 integration dx. अब अगर आप यहां पर देखोगे, this is just using a basic property of sine. कुछ बहुत ज्यादा extreme नहीं use हो रहा है. If I know how to integrate sine ax, I will be able to solve this question. So this will be integration of sine 2x plus integration of 3 dx. और sine का integration is minus cos. So I will get minus cos 2x. And then there is this 2 here now. So it will come in the denominator. Integration of 3 will be 3x plus c, and here you will have 2. So it will be minus cos 2x plus 3x plus c. So this is not very difficult. इसमें तो सिर्फ आपको basic property याद रखनी है that whenever you go ahead and integrate sin ax, you will get minus cos ax by a. And whenever you will integrate only sin x, you will get cos x. तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है whether you are given a here or not, right? So that's the simple property that has been used here. Okay, better just try these questions once, this assignment. And now I'll go on application of integrals. So application of integrals में the only applications are multiple. Riemann rule, area under the curve, many other inequalities can be covered through integral, but हमें सिर्फ area under the curve पे ही concentrate करना है. One of the very big applications of integration which can be asked in exam is to calculate consumer surplus. जैसे for example, let's say you are given a question that suppose you are given price is equal to a q square plus bq. Let me put a minus sign here.
plus C. I'm just trying to frame a question. अभी के लिए सिर्फ एक concept समझो. So for example, you are given this as the price function. And let's say this says that this is your demand function. And you are given a supply function. वो बोल रहा है that the supply function is CQ, DQ plus E. This is given to you as the supply function. Right? Now, under usual cases, देखो demand function is linear. Usually क्या होता है ना, demand function ऐसा कुछ दिया हुआ 10 minus Q. Supply function would be given to you as also as linear. So say minus 4 plus Q. So under usual cases, what you do is आप ये demand function बना देते हो, ये supply function बना देते हो. You find out the price here. So in this case, price will be 10 minus Q is equal to minus 4 plus Q. So 14 is equal to 2Q. So Q is 7. Right? And you get the price as 3. So in usual cases, आप क्या करते हो? If I ask you to find consumer surplus, you will find this area. Area below the demand curve, above the price. And we clearly understand कि ये वाला जो point होता है, we can find this point by putting Q as 0. So if I put Q as 0, I will get 10 minus 0. That means I will get the answer as 10. So in this case, clearly, मेरा जो consumer surplus होगा, it is very simple to find. I can find the area under the curve. So half into base into height. So this will be 49 by 2 and done. But suppose you actually have a quadratic demand curve. मतलब आपको कहीं पे भी square दिख गया, right? Then in that case, you will not be able to apply the usual consumer surplus theory. आप ये नहीं बोल पाओगे कि I will just find area under the demand curve by finding half into base into height. ये गलत होगा. So in a lot of cases, what happen is आपका जो demand curve होगा, it will be this. कभी कभी वो आपको price भी दे देंगे. So they may say that look, the consumer is demanding 4 units at a price of 2. And then they will ask you find consumer surplus. देखो ध्यान से listen to me, हाँ? They will give you the equation of the demand curve. कोई एक equation दे देंगे. They will go ahead and they will tell you कि the price in the economy is 2, the demand of the quantity is 4, और वो बोल देंगे find consumer surplus. तो consumer surplus, what will be that? बेटा क्या हो जाएगा consumer surplus? It will be area below the demand curve above the price. ये है consumer surplus. तो इस consumer surplus को निकालने के लिए then we have a formula. What will I do? I will first integrate the area under the curve. मैं पहले area को integrate कर दूंगी. जो भी equation दी होगी ना demand curve की, जो भी मेरे को price की equation दी होगी, I will go ahead and integrate that with respect to Q. And my limits would be from 0 to 4. So when you will integrate, you will get this entire area under the curve. And out of which you must subtract this part. So this part will always be this rectangle. And area of rectangle is always price into quantity. So this part will always be 2 into 4, price into Q. So then you will have this general formula of the consumer surplus. तो अगर ध्यान से समझ लो, if this is a mathematical implication or integration का application, if you are given price and quantity, आपका जो डिमांड कर्व इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, इट इज नॉन लीनियर. मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है. दे हैव गिवन यू दैट दिस इज से x square minus 2x, ऐसा कुछ डिमांड इक्वेशन दिया हुआ है. एंड दे हैव टोल्ड यू दैट प्राइस इज 4 एंड क्वांटिटी इज 7. कुछ भी दिया हुआ है आपको. सो इन सच केसेस व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग दैट यू विल इंटीग्रेट योर डिमांड कर्व. आप इस डिमांड कर्व को इंटीग्रेट करोगे बिटवीन 0 to the quantity and you will subtract price into quantity and this will give you the consumer surplus. ये आपको consumer surplus दे देगा. Right?
This is an important implication of your integration. Okay, now coming back to the topic. So sometimes you may be given some curves. Just if the curve says y is equal to x square and it is given to you that x is between 1 to 3. So y is equal to x square का diagram ऐसे बनता है. And it has told you that x is between 1 to 3. It means that I just want to check this area. Right? So if you want to find out the area under the curve, आप simply उसे integrate करोगे between the values of x given to you. That's it. But suppose the curve that you have is negative. तो area negative नहीं निकालना है. You will still integrate the same curve. जैसे अगर आपको curve दिया हुआ है minus x square. So minus x square का जो diagram बनेगा बच्चे, that will be like this. Now they have gone ahead and they have given you some values. उन्होंने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया. Now when you will go ahead and you will integrate this curve, जब आपने इस curve को integrate किया, so you will get this. So if I will integrate this from 1 to 3, I can get a negative answer also, क्योंकि there is a negative sign involved. So in such cases, you always will find the absolute value. Doesn't mean you will go ahead and you will find a negative area. So इसका formula ये कर देता है that whatever your area is, whenever you go ahead and you perform the integration with the negative sign, क्योंकि यहाँ negative sign है, just take its absolute value. Just because area is coming in the fourth quadrant, इसका मतलब ये नहीं है that area would be negative. Then this is your curve. So sometimes what will happen na, they will ask you to go ahead and find area under the curve, पर वो आपको via x-axis बोलेंगे, right? So they will go ahead and they will tell you that via y-axis, sorry. So they will tell you that suppose your curve is x is equal to y square. ये curve दिया हुआ है. So when we say x is equal to y square and I want to plot this, I will get something like this. ऐसा कोई curve आ गया. And they have asked you that the values of y are between 0 to 2. So values of y are between 0 to 2. So you will be able to go ahead and find this area also. इस area को निकालने के लिए you just need to integrate this curve between 0 to 2 and done. So just remember a simple rule. If I am integrating in terms of y, तो मेरा range हमेशा y के terms में ही होना चाहिए. And if I am integrating in terms of x, तो मेरा range हमेशा x के terms में ही होना चाहिए. So I have to be very clear कि किस चीज का range दिया है, उसी के terms में I need to find out. So for example, the curve x square is equal to y होता. So I know that its plotting will be like this. But still, you are given the range of y. आपको दिया हुआ है कि y is between 0 to 2. Right? तो when I perform the integration, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे x square रखो और यहाँ पे 0 से 2 कर दो. That is incorrect. If I am performing integration, तो या तो if x square is equal to y, so x will be root y. So I will go ahead and I will do integration of y only. If I am given the range of y, you can't do two things together. Range और value दो अलग-अलग नहीं ले सकते हैं. Just remember that. Then this is area between two curves. So for example, ऐसा कुछ बनता है. They give you a curve like this and they give you another curve like this. And they tell you that between x 1 to 3, find area under the curve. तो बहुत simple है. I will integrate this curve first between 1 to 3. तो मेरे को इसके अंदर का area सारा मिल जाएगा. Then I will integrate this curve. I will get all of this area. Then I will subtract the two areas और मुझे इसके बीच का area मिल जाएगा. This is a very common question in exam from integration topic. काफी common question है. Let me take you through one of the examples of this. You are given two curves here. देखो, you are given y square is equal to 4x, x square is equal to 4y, and you have been asked find area between the curves. Listen to me.
if I have to go ahead and find area between curves, मुझे दो curves के बीच का area निकालना है, isn't it important that first I should know whether these curves are intersecting or not? Because अगर ये curves दो ऐसे हैं, suppose these curves are like this, then there will be no point. मतलब I will integrate from which region to which region? I don't know that. If these curves are intersecting, if these curves are like this, then I know that this is the first point of integration. This is the first point of intersection. This is the second point. और इनके बीच में I need to go ahead and find the area between the curve. So the first thing that we will go ahead and do before हम कहीं पे भी और जाएं, जो हमारा पहला step होगा, that will be to go ahead and find where the two curves are intersecting each other. किस point पे ये दोनों curves intersect कर रहे हैं, right? So I will just go ahead and check that out. तो ये हो गया y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. So यहाँ से I can find y will be x square by 4. I can plug that y here. तो ये हो जाएगा x square by 4 whole square is equal to 4x. So this will be x to the power 4 by 16 is equal to 4x. So this will be x cube is equal to 64. So x will be 4 plus and minus. दोनों में आपका x 4 आ जाएगा, whether you take plus value positive or negative values. Sorry, positive values only in this case. It's plus 64. So you will get your x as 4. Now, we know that जहां पर हमारे ये curves intersect कर रहे हैं, this is 4. One more thing, हाँ? देखो, if I just closely look here, अगर मैं इस curve को देखती हूँ, then ये x तो मैंने यहाँ से cancel out कर दिया था. But usually you should not cancel out. देखो यहाँ से, if I take x to the power 4 is equal to 64x, so from here I will get x to the power 4 minus 64x is 0. तो यहाँ से if I take x common, I will get x cube minus 64 is 0. So from here I will get two answers. कि अगर दोनों का product 0 है, then either x is 0 or x cube minus 64 is 0. So x cube is 64. So x is 4. So I will get 2 points of intersection. पहला आ गया x as 0 and the second one I am getting x as 4. These are the 2 points of intersection that we will be getting. तो उस basis पे ही we have got this. This is my first point and this is my second point. Now, second thing, very, very important. Therefore, once I get this, how do I know कि कौन सा curve ऊपर आएगा? How do I know whether this curve is y square is equal to 4x or this curve is y square is equal to 4x? So in that case, you need to go ahead and you need to plot the curves first. ये पता चल गया that the curves are intersecting at 0 and 4. So now I will just go ahead and plot. So पहला हो गया y square is equal to 4x and other is x square is equal to 4y. So if I just go ahead, I will take x as 0. So y square will be 0. So y will be 0. Then I will take x as 1. So y square will be 4 into 1, 4. So y will be plus minus 2. So when x is 1, y will be plus 2 and y will be minus 2. Minus 1, minus 2. ये दो values आ जाएंगी y की. So it means that ये curve ऐसे बन रहा है. Now just consider this curve. हाँ? यहाँ पर when I will plug y as 0, तो x square हो जाएगा 4 into 0, that means 0. And when I will plug y as 1, तो x square will be 4 into 1, 4. So x square will be 4, so x will be plus minus 2. तो जब y 1 है, when y is 1, x is 2 also and x is minus 2 also, right? So I understand that this curve must be passing like this. क्योंकि यहाँ पे ये value और ये value आ रहा है. So I have found out that this curve represents x square is equal to 4y and this curve represents y square is equal to 4x. Now I will go ahead and find the area under the two curves. तो area find करने के लिए I will first integrate this curve. ये 4 है where the two curves are intersecting. So I will first integrate this curve. जब मैंने इस curve को integrate किया, I will get the entire area under this curve.
Then I will integrate this curve. So when I will integrate this curve, I will get entire area under this curve, and then I will subtract. So I will get the answer. So this is what I have done here. One last thing here. देखो, while performing integration, when you will integrate this, तो मेरे पास तो x की वैल्यूज हैं, x is from 0 to 4. तो ये वाला कर्व तो हो गया x square is equal to 4y, तो y will be x square by 4. I need values in terms of x only. और ये वाला कर्व है y square is equal to 4x. I need values in terms of x only. So y will be 4x under root. So 2 root x. दोनों को ही x के टर्म्स में निकालना जरूरी है before you can go ahead and perform integration on it. So this is what we have gone ahead and done here. I have tried to bring both of them in the same terms, in terms of x. One has been written as 2 root x, other has been written as x square by 4, and then it has been integrated from 0 to 4. कुछ भी y नहीं दिखना चाहिए. Both the curves must be in terms of your values of x. And then it is the usual integration. इसको when you will integrate, you will get the answer as 16 by 3. So this is a typical question on area under the curve. If at all there is a question on area under curve, ऐसा ही आएगा. थोड़ा सा शायद they can also simplify a bit. जैसे they will only give you, say y is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus 7. Find area under the curve between x 0 to 4. ऐसा कुछ. So in this case, you don't have to do these steps of finding intersection या कुछ भी. You simply have to integrate this curve. तो इसको आपको सिर्फ integrate करना है. And you need to just integrate this between 0 to 4 and done. Right? Okay. Now, one more thing in exam that can be asked. So, one of the application of integration, one very, very important application of integration can also be to go ahead and find out the Gini coefficient. Anyone who can tell me what is the formula of Gini coefficient in terms of integration? Anyone? ठीक है. So just listen, huh? देखो Gini coefficient okay. So look, देखो Gini coefficient जो होता है, that we know it helps us to calculate inequality, right? So okay. So just see here, huh? So what we do usually is, we go ahead and we get this as the line of equality. Right? And this becomes my Lorentz curve. So Lorentz curve will go ahead and tell you कि कितनी inequality है economy में, right? Here I will go ahead and take A. Here is B. So for all people who are going ahead and saying that your area, that your Gini's coefficient is A upon A plus B, that is correct. इसमें कोई problem नहीं है. It is in fact A upon A plus B. ठीक है. But sometimes you are actually given the form of a function. जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं that consider a function of the form x to the power n, right? And this meets all the Lorentz function criteria, right? And calculate Gini's coefficient. ऐसा कुछ दे दिया, calculate Gini's coefficient. So one thing you have to remember कि ये जब भी हम area निकालते हैं, the lowest value of course is 0, and here the value that we take, that is 1. ये 0 से 1 के बीच में होता है. Now whenever in such cases
you can you are given a function, आपको ऐसा कोई function दे दिया गया है, and you have been asked to calculate the Gini's coefficient. One more formula of this Gini's coefficient is this. इसको ऐसे निकाल सकते हो, gn is equal to twice, you will integrate the function from 0 to 1. And देखो बच्चे ध्यान से समझो, हाँ, ये वाला it will seem easier to you once you understand this. देखो ये वाला जो part है, this part is actually going ahead and given to you as x to the power n, क्योंकि ये लॉरेंस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, this is x to the power n. और ये वाला जो पार्ट था, ये जो हमारा ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, तो लाइन ऑफ इक्वालिटी का तो ये मतलब है that when I put x as 1 I will get y as 1. मतलब first 10% of people will earn 10% of income, 20% of people will earn 20% of income. This is line of equality, and line of equality goes ahead and says that y and x values should be equal. It's a 45-degree line ना, जो x पे लिख रहे हैं वही y पे लिख रहे हैं, whatever we are writing in x we are writing that in y. So basically ये जो हो गया, this is just y is equal to x. And if I need to somehow go ahead and find the Gini's coefficient directly, so I need to find in a way this area. मुझे ये a area निकालना है पहले, right? So area under the curve कैसे निकल सकता है? If I integrate this line completely, I will get this complete area. And if I integrate the curve under this, I will get this area. And if I subtract the two, I will get the area A, right? So the actual formula of Gini's coefficient in such cases, वो line था y is equal to x, so x. Lorentz curve का equation था x to the power n given to us, dx. So you can go ahead and find Gini's coefficient directly using the formula of integration also. अब इस केस में you have to go ahead and just solve this. तो ये आ जाएगा 2. So this will be x square by 2 minus x to the power n plus 1 by n plus 1, and this will be from 0 to 1. Right? So you will get some answer for this. Just go ahead and solve this thing. This is one way to go ahead and find Gini's coefficient using the integration method. So please कहीं पे just make a note of it that Gini's coefficient can be written as 2 times integration from 0 to 1 x minus the equation of Lorentz curve dx. This will be the answer to this question. बस लॉरेंस कर्व का जो भी इक्वेशन दिया होगा, just plug that here and you will get the answer. ठीक है? Okay. Now just coming back to the concept again. So these are all examples of area under the curve. Please try them. This is an assignment based on area under curve. Okay. Now I come to the concept of differential equation. सबसे पहले what we want to understand in differential equation is order and degree. When we talk about the order of differential equation, the order of differential equation is how many times you are going ahead and differentiating that equation. So if you have suppose d square y by dx square plus dy by dx plus c equal to 0. So यहाँ पर highest differentiation has taken place 2 times now. So the order becomes 2. And the degree of differential equation becomes the power of the highest order. So अगर इसका power 3 है, so its degree will become 3. Right? So the order of differential equation is the order of highest order derivative. कितनी बारी हमने derivative निकाले, that will give me the order of differential equation. And the degree of differential equation is basically the highest power of that order. Now, the most important thing from an MCQ point of view, sometimes in exam ऐसा कुछ बोल देंगे कि find, let me give you, I think I have given this question here only. ऐसा कुछ. It will go ahead and say determine the order and degree of differential equation, and ऐसा कुछ आपको you will be given.
and there will be multiple options. Yes, if suppose degree ही पूछा है, there will be multiple options. Degree is 1, degree is 4, degree is 3, and degree is not defined. Right? So you will be given these 4 options in this case. So in any differential equation, correct, wherever you have a differential equation which is not polynomial, right? So we in that case have degree not defined. Degree can, ये मत कर देना कि इसका highest power is 1. No. Degree cannot be defined if you have a differential equation which is not a polynomial. And not a polynomial means wherever you will see trigonometry, log, exponential, reciprocals, they are not polynomials. And अगर वो polynomial नहीं है, so for them degree will not be defined. So I have gone ahead and explained this somewhere here, that the differential equation which is not a polynomial in derivative does not have a defined degree. Right? Now, how do we go ahead and solve differential equation? So the concept is very simple. So if you go ahead and suppose you're given something like this, that x dx is equal to y, suppose something like this, xy dx is equal to dy, कुछ ऐसा दे दिया, and they ask you find solution. And suppose they give you some other values also. उन्होंने बोल दिया कि when x is 0, y is 1. Right? They will ask you for finding the differential equation. So this is a classic example of differential equation which is separable. In exam, my expectation is कि वो separable differential equation से ऊपर नहीं जाएंगे. Nevertheless, only if you have a lot of time left and you have done revision, under the differential equation section, I have discussed other forms of differential equation also. But abhi ke liye, I think that maximum this is okay for revision. So we can just go ahead and say that xy dx is equal to dy. Keep all x terms on one side, keep all y terms on the other side, and perform integration. So integration of x will be x square by 2. Integration of 1 by y will be ln y plus c. And then find out the value of c. So c कैसे निकलेगा? When x is 0, y is 1. So you will put x as 0 and you will put y as 1. Right? So you will go ahead and get 0 is equal to ln 1 plus c. So c will be minus ln 1. What is log 1, anyone? Correct. It's 0. So ln 1 is 0. So you will get this also as 0. So the value of c that you have got becomes 0. So your final equation becomes x square by 2 is equal to ln y. And that is the answer to this question. Okay. So 2 steps can be involved. Pehla, they will go ahead and ask you, they will give you an equation. They will give you some particular solution ke liye information. You just need to use this information to find the particular solution. Okay. Now some statements are important. जैसे उन्होंने बोला that this one, a linear differential equation is always of first degree. ये एक statement है. And every differential equation of first degree may not be linear. So try to understand. अगर किसी भी differential equation को linear होना है, then its all powers should be 1. Right? I cannot have power more than 1. So this is a linear differential equation. D square y by dx square plus dy by dx plus y equal to 0. So you see everywhere the degree is 1. The power is 1. So if the power is 1, right? We are saying if it is linear, agar ye linear hai, then it is necessary that its power will be 1. Right? But the reverse is not true. It is possible that you will see that the power is 1, but it still will not be linear. It will still be non-linear, right? So a typical example of a non-linear differential equation is this. So such statements are important and you should remember them. I want to keep a star mark here and you can just write this, that if it is linear,
then we require that its degree should be 1. But if its degree is 1, so it is no proof that it is linear. तब ये non-linear differential भी हो सकता है. Okay, so these are some questions on orders and degrees. I have tried to include all possible permutation combination. यहाँ देखो, here this is ds by dt to the power 4 plus 3s d square s by dt square equal to 0. So notice that the highest order is here, right? And because this is the highest order, so iska power is still 1, right? So the degree is 1 and the order is 2. Just go ahead and do all of this. देखो यहाँ पर cos is involved, so a trigonometric function is involved. So you should know कि trigonometry में degree is not defined, right? So we are saying degree is not defined. So please practice all of these questions on order and on degree, and then with that, these are all questions on your differential equation. I just wanted to show you one more thing here. This one. देखो, very rare chance, but I am just giving you one last example that can be asked from differential equation. इसमें क्या होगा? They are saying find equation of the curve passing through point 1, 1, whose differential equation is this. Actually, this is exactly what we did above. इसमें कुछ भी नहीं, it is passing through point 1, 1. It means when you plug x as 1, you get y as 1. जब x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू 1 होता है. This will just go ahead to find you the value of c. Find value of c. है ना? So when I will perform, so this is x dy is equal to 2x square plus 1 dx. Clearly this is a separable differential equation. तो मेरे पास आ जाएगा dy is equal to 2x square plus 1 by x dx. So I will get dy is equal to 2x plus 1 by x dx. And I will go ahead and I will perform integration on it. बहुत simple है इसका integration. You will just integrate it and you will get this. But instead of just going ahead and telling you that y of 1 is equal to 1, इन्होंने थोड़ा सा elaborate कर दिया that find equation of the curve passing through the point this comma this. मतलब same ही है. That once I have found out this differential equation, I need to keep x at 1 and I need to keep y at 1. So when I will put x at 1 and I will put y at 1, I will get the value of c. But just plug that value of c here and you will get this equation, right? So very similar to what we have done, just it is in some word problem format. Like that, I just want you to go ahead and try this question also. Huh? So this is find equation of the curve passing through the point minus 2, 3, given that the slope of the tangent, slope की value क्या होती है बच्चे? What is slope? Slope is nothing but dy by dx. So you are given dy by dx is equal to 2x plus 2x by y square. तो कुछ भी नहीं है. I can just rewrite this thing. Y square dy is equal to 2x dx. I can perform integration on this also. This will be y cube by 3 is equal to 2 x square by 2 plus c. I am already given कि जब x minus 2 है y 3 है. So I can plug in x as minus 2. I can plug in y as 3. I will be able to get some c. Put that c back here and get the answer. So the only thing I wanted to highlight is that differential equation में जो question आएंगे, it will have a very doable integration. Integration will not be difficult, but they may go ahead and alter the definition or the word problem. They may make it into a word problem. They may alter the way they will ask the question. तो अगर ऐसा कुछ बोल देते हैं कि find equation of curve such that the slope of tangent or find equation of curve that passes through a point, घबराना नहीं है. The question is just asking you to solve the differential equation and find the value of c.
So I just want you to go ahead and practice these questions today. And with this, there is only two topics that I feel need some revision. I think there can be one question that can be asked on linear programming, and I think there will be one question that can be asked from difference equation, right? So these two topics very basic. Linear programming में भी काफी basic question आएगा if it will come. Otherwise, the question can be on properties of linear programming. Right? They may ask you about something related to feasible set. So ये वाला part I will just give you the. Hi, good evening, everyone. Again, I hope all of you have learned in detail what is integration, what is area under the curve. And as I just mentioned in the lecture, that the only two things other than this that you have to go ahead and do, that is basically difference equation and linear programming. I want all of you to take some break. It's been a long day. So you take some break for about 20-25 minutes. We'll come back after 25 minutes and we'll start with the last chunk. We'll do the last chunk, which is going to be related to difference equation and linear programming. And with that, all important topics will be wrapped up. And I don't think anything else can be asked in maths other than what has been covered in today's marathon. So you take some break, come back after 25 minutes, sit down with me, and we'll wrap up the difference equation and linear programming. Okay.
Okay. So now let us go ahead and let us start with difference equation first. देखो, what all can be asked from difference equation? Let us try to understand that. So in case of difference equation, just like differential equation, सबसे पहले तो वो आपसे order of difference equation पूछ सकते हैं, right? So they can go ahead and ask you कि what is the order of difference equation. अब difference equation होती क्या है? What is difference equation? Whenever okay. So timing is I will make it live from morning only. I will make it live from 8 a.m. Tomorrow morning. Up to you when you want to give after that. I've already given the test to the team, so it shall be uploaded today itself, maybe. So up to you. Okay. Okay. So the order of difference equation, beta, that is what is important. The difference equation is basically when we talk about the change in the discrete variable. तो अगर तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, differential में I am asking how my variable changes as time changes, but I am considering my variable to be a continuous variable. But if I don't consider my variable to be a continuous variable, और मैं अपने variable को एक discrete variable मानती हूँ, so I am saying that okay, this year's value is last year's value plus sometimes last to last year's value and so on. Like we do in Phillips curve, यही तो कर रहे हैं हम Phillips curve में. We go ahead and we ask ourselves कि okay, you are given inflation of this year will be equal to some expected inflation minus alpha ut minus un. And if I just tell you that expected inflation is last year's inflation, so automatically this has been converted to a differential equation, right? Difference equation. So in case of difference equation, क्या कर रहे हैं हम? We have variable which is in the discrete format and हम उसको time period से link कर रहे हैं that this year's value depends on the last year's value. So the first thing important that can be asked in paper from difference equation is the order of the difference equation. सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं. The second thing that can be asked in case of difference equation is the stability conditions of the difference equation. Stability condition में they can ask you the following. First of all, they can ask you what is a stable solution. Stable equilibrium निकालना दे देंगे. I will show you an example of that. Secondly, what they can go ahead and they can do is they can ask you condition for stable equilibrium. ये पूछ सकते हैं. And at last, what they can go ahead and they can do is they can go ahead and ask you the graphical representation for different stable equilibriums. Right, beta? तो ये तीनों ही चीजें they are important from the point of view of difference equation. ये पूरा चीज is only that can be asked from difference equation. अच्छा, when I talk about the equilibrium equation of difference equation, यहाँ पे भी दो cases हो सकते हैं. They can give you a case of homogeneous or they can give you a case of non-homogeneous difference equation. Right? So overall, this is what can be asked. ये सब कुछ difference equation से आ सकता है. This is very doable, बहुत easy part है, and therefore I'm expecting कि question इनमें से आने का chance है. There is a good chance that a question will be asked. Let me start with the first case, beta. So let me just start by explaining you what is a difference equation. So जब हम time period t की value को we write it as a function of last time period's value. कुछ भी हो सकता है. YT can be anything. It can be output as a function of last year's output. It can be जैसे हम लोग supply functions लिखते हैं. That this year's supply is a function of the price last year. क्योंकि जब मैं अपना production start करूंगी, I don't know what will be the price this year. मुझे production पहले ही शुरू करनी है, right? So when I will be producing something, it will be on the basis of the price in the market in last year period. तो
तो अगेन दिस इज अ डिफरेंस इक्वेशन. So all these cases where this year's value, आज की वैल्यू पिछले साल के वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, that becomes a difference equation. Now, as long as we are writing this difference equation in the linear format, मतलब हम कहीं पे भी square नहीं लगा रहे, log नहीं लगा रहे, then it becomes a linear difference equation. And for us, we just need to work with linear difference equation. So this is a typical format of a linear difference equation where we are going ahead and saying ki, okay, this year's value is dependent on last year's value plus last to last year's value and so on. In this case, जो भी हमारे ये A's हैं, A1, A2, A3 and so on, all these A's बेटा they are called as constant. इन सबको हम constant बोल देते हैं. And जो भी हमारे Y's हैं, these are basically my variables and they represents the time period. Okay, अब यहाँ पे देखो, we are seeing order of difference equation. तो order of difference equation is nothing but the number of time period lags. Number of time period lags. जैसे for example, if I go ahead and say कि yt is equal to a1 plus b1 by t minus 1, तो मैं सिर्फ एक टाइम पीरियड लैग पे जा रही हूँ. I'm just going 1 year back. So if I just go 1 year back, I'm only going till yt minus 1. Then the order of this difference equation will be 1. इसका order 1 हो जाएगा. But in this case, look into the second example. Here I am going back till 2 periods, right? I am going ahead and saying that this year's value is equal to a1 yt minus 1 plus a2 yt minus 2. So I am saying कि ये वाला जो value है वो last 2 lakhs पे dependent है. Then the order of the difference equation will be 2 and so on and so forth. So when we were doing differential equation, जब हमने कल differential किया था, there we were saying that this represents the order कि कितनी बारी we are differentiating the function, right? So this just means beta that d of dt dy by dt. So हमने एक बारी वेरिएबल का with respect to time change निकाला and then we again found out its change with respect to time. So we were finding the order of the differential equation by looking कि कितनी बारी हम उसको differentiate कर रहे हैं, how many times we are differentiating that function. But as against that, here we will go ahead and we will see how many lags we are going behind, कितने lags तक हम पीछे जा रहे हैं. Now the next thing we have that is called as homogeneous difference equation versus non-homogeneous difference equation. If there is no constant involved, मतलब मेरा जो difference equation है वो कुछ ऐसा है, yt is equal to a yt minus 1. कोई भी constant नहीं है, there is no constant involved in this equation, then this will be called as homogeneous difference equation. Simple. So let's read it out. When there is no constant present in the difference equation, then it is called as homogeneous difference equation. But if a constant is present, अगर हमारी difference equation में कोई भी constant present है, like here, this is the constant present, then it is called as non-homogeneous difference equation. So homogeneous difference equation में there is no constant present. Non-homogeneous difference equation में there is presence of constant. Presence of constant. Right? Now, depending on whether I have homogeneous difference equation या non-homogeneous difference equation, my solution will vary. तो अगर homogeneous होगी तो अलग तरीके से solve करेंगे, अगर non-homogeneous होगी तो अलग तरीके से solve करेंगे. Ideally, you should be aware about the proof of homogeneous versus non-homogeneous difference equation. All those proofs कि हम कैसे solution तक पहुंचते हैं, they are already there in our lecture videos of maths. But if you don't have time, अभी के लिए हमें सिर्फ उसको final answer को याद करना is also fine, because in exam we will be only using the final answer. ठीक है, that's the first thing. Secondly, sometime जैसे कल हमने किया था बच्चे, so we were given a differential equation dy by dx is equal to y by x, ऐसा कुछ differential equation दिया होता है. But you are also given
that y of 0 is equal to 1. You are given some initial condition. So if you go ahead and you plug in that initial condition, अगर आप उस initial condition को solve करके plug करोगे, what you will be getting is called a particular solution. And if you will be not plugging that, अगर आप generally निकाल रहे हो कि ये तो given ही नहीं है, and you just go ahead and get the answer that y is some function of x plus c, बस ऐसे में छोड़ रहे हो, then it becomes a general solution, right? Same is the case with difference equation. So if you are given initial condition, अगर आपको initial condition given है, then you will be getting a particular solution. And if you are not given an initial condition, oh sorry, just cancel this out, then it will be a general solution. So initial condition given, particular solution, initial condition not given, general solution. अब आगे देखते हैं. So now we want to talk about the solution of a homogeneous difference equation. देखो बेटा, this is an example. इसको मैं general case में लिख सकती हूँ that yt is equal to a yt minus 1. ठीक है? And you are given the initial value is 8. आपको initial value already given है कि ये 8 है. अब एक बार जरा थोड़ा सा solve करके देखो. अगर मैं यहाँ पे values plug in करना start करूँ, if I start plugging in the values, तो मुझे क्या मिलेगा? If I put y1, तो ये हो जाएगा y1 is equal to 5 y naught. If I put t as 2, तो मुझे मिलेगा y2 is equal to 5 y1. If I put t as 3, तो मुझे मिल जाएगा y3 is equal to 5 y2. That is the relation given, that yt is equal to 5 yt minus 1. यही तो relation given है हमें. So if I just continue doing this again and again and again, I will be able to reach the same condition that yt is equal to 5 yt minus 1. ये एक general condition हमें achieve हो गई. Now, just try to see what happens if I go ahead and I somehow substitute. जैसे अगर मुझे पता है यहाँ पे y2 की जगह पे I can write 5 y1. So this will mean that y3 is equal to 5. y2 की जगह पे if I just plug this value, I will get 5 y1. So I will get 5 square y1. And y1 is nothing but 5 y naught. तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5 square into 5 y naught. मतलब I will get y to the 5 to the power 3 y naught. तो I have been able to derive this relationship. मेरे पास एक relation आ गया कि y3 is nothing but 5 to the power 3 y naught. Similarly, अगर मैं y2 को derive करने की कोशिश करूं, I will get y2 is equal to 5 and y1 क्या था? 5 y naught. So it is 5 y naught. So I will get y2 is equal to 5 square y naught. Can I see the general pattern here? I can ना. What is my general pattern? That if I need to find out y3, तो ये 5 to the power 3 y naught हो रहा है. If I need to find y2, ये 5 to the power 2 y naught हो रहा है. So if I need to find yt, this will be a to the power t y naught. This will be the general solution to your equation. बस आपको ये general solution याद रखना है. You need to remember this general solution. So let me give you an example of the kind of question that can be asked in exam. Take an example. So I am giving you that the equation is yt is equal to 7, let's say 2. Let me give you an easy number, 2 yt minus 1, and you are given that initial value of y in period 0, that is 7. The solution to this difference equation will be. Right, beta? I'm giving you options. You tell me what is the answer. First, yt is equal to 2 to the power 5 y naught. Second, yt is equal to 2 to the power 7 into 7. Third, yt is equal to 2 to the power t into 7. And fourth,
yt is equal to 7 to the power t into 2. What do you think will be the solution to this? C. Okay. C. Good. Good. C. Good. So that means everyone is clear with the solution. तो एक homogeneous difference equation का जो solution है, that solution is of the form a to the power t into y naught is equal to yt, और जहां पे हम clearly बोल सकते हैं that this is nothing but this is this coefficient. अच्छा, one thing. Suppose they go ahead and they give you something on the time period also. जैसे they say कि हमें yt नहीं निकालना. They ask you a time period in particular that the value of y to the power y in time period 4 will be. They give you some value, मतलब उन्होंने दिया कि y to the y in time period 4 उसका value क्या होगा. So then you can just go ahead and plug it in this also clearly, isn't it? I know that the general solution is of this format, तो मैं यहाँ से plug in भी तो कर सकती हूँ. I can just go ahead and say कि okay, y4 will be 2 to the power 4 into 7 and just solve this, right? So 2 into 2, 4 into 4, 16 into 7, and you will get the answer. So try to see that not always they will be asking for a general solution. Sometimes they will ask you for a particular solution. मतलब वो आपको initial condition दे देंगे, एक time period दे देंगे, and they will ask you to solve that homogeneous system of equation. अब second point ये आता है, what if I have a non-homogeneous system of equation? अगर मेरी जो system of equation है वो non-homogeneous है, then what will happen? तो बेटा in that case जो हमारा solution हो जाएगा, again you don't have to derive it. I am coming to the solution. The solution will be of this format. So we can go ahead and say that we will get the solution yt is equal to a to the power t y naught minus b by 1 minus a plus b upon 1 minus a. This will be the solution of your difference equation. I have derived this in the intermediate math, in your maths videos. If required, you can refer to that, but just remember this, that is enough. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. A system of difference equation, it is called as a stable solution if and only if you go ahead and you reach a solution such that you don't deviate from that solution. जैसे for example, अगर हम सोलो मॉडल की बात करते हैं तो सोलो मॉडल में हमारा इक्विलिब्रियम कब आता है? When do we go ahead and say कि हम एक steady state में हैं? When there is no change in capital. तो अगर मैं अपने कैपिटल को पीरियड 1 के कैपिटल को पीरियड 0 के कैपिटल से कंपेयर करूं, I will be at a steady state when there is no change in capital. The capital is exactly the same, right? So the same thing applies here. If I go ahead and I want to attain a steady state, अगर मुझे एक steady state की तरफ जाना है, it means that there should be no change in the level of the output. Output या जो भी है y variable, it should not change. That steady state or that stable solution is achieved when your value of y is b upon 1 minus a. तो जब y की वैल्यू देखो, when y is b upon 1 minus a, then you will achieve the steady state or equilibrium. और ये हम कैसे देख सकते हैं? Actually again there is a proof, but बहुत simple तरीके से देखो अगर मैं initial value को y naught को if I take it at b upon 1 minus a, then this part will become 0. And if this part is 0, अगर ये वाला part 0 हो गया तो yt will also be b upon 1 minus a. मतलब y1 भी b upon 1 minus a, y2 भी b upon 1 minus a. So it means you have gone ahead and you are reaching the same value. So that is what is your equilibrium. Okay. What is b and what is a?
So beta B and A are coming from this equation. So we have written that yt is equal to a yt minus 1 plus b. We have written this variable as a function of last year's value. And इसी का हम जैसे अभी हमने लिखा था बिना b के, we had written that okay yt is equal to 5 yt minus 1. इसका solution हमने यहाँ पे निकाला था. This is the solution of this equation. तो इस equation में we were only given a. Now we are given A's and B's. Now I am not only given A, but I am also given a B. So whenever you have this equation, yt is equal to a yt minus 1 plus b, the general solution of this equation will be this. And its equilibrium, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए find equilibrium condition, it will be b upon 1 minus a. पहले ये दो चीजें याद रखो. Then I will tell you some conditions on A also. Let me give you one example, then things will make more sense to you. So, consider this beta. Suppose exam में ये question आया है, and they're asking you two things. First of all, you need to find the general solution of this equation. Second, you need to go ahead and you need to find the stable equilibrium. ये दो चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे. General solution and stable equilibrium. Now just try to go ahead and have a look here. So beta, I am saying yt is equal to ct plus it. Now just go ahead and see here. So beta, non-homogeneous difference equation of order 2. I have done that in the maths videos. You can have a look. I am not expecting it. Most probably it should not come. But in case it comes, there is a very big solution to it. So you can go ahead and always refer back to those videos. Huh? It is there in my maths videos. But as of now, I am just covering the part which is most expected in the CUET paper. Okay. So you will go ahead and get beta yt is equal to ct plus it. So I am going to go ahead and take these values. So ct will be 100 plus 0.8 yt minus 1 and it will be 100. ठीक है? So this will give me 200 plus 0.8 yt minus 1. अब just this is yt. Just compare it with the original case that we had. क्या original case था बेटा? The original case was yt is equal to a yt minus 1 plus b. So from here I have got that my a will be 0.8 and I have got that my b will be 200. I have got my a, I have got my b. तो पहली चीज हमें करना है, if I ask you what will be your stable equilibrium, or suppose they ask you what will be steady state in this case. So beta steady state का क्या formula, what did we study? It is going to be b upon 1 minus a. So b value is 200 upon 1 minus 0.8, 200 upon 0.2. So this is going to be 1000. ये पहला part हो गया. If they ask you find out the steady state, तो steady state का answer will be b upon 1 minus a. One thing done. Second, बच्चे what if they ask you to find a general solution? तो जो हमारा general solution था, our general solution was of the format a, अच्छा let me write it from yt's perspective. Yt is equal to a to the power t y naught minus b upon 1 minus a plus b upon 1 minus a. इतना याद रखना जरूरी है. This is the minimum you require to learn. So beta this will be yt is equal to a का क्या value था? 0.8. So 0.8 to the power t. What is yt? Y naught? Initial value of y. You are given as 3500. So plug in 3500. What is b upon 1 minus a? You have found that as 1000 plus 1000. So yeah, this will be 0.8 to the power t into 2500 plus 1000. Yeah, general solution. So two things we have learned in difference equation. A
स्टेबल सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं? नॉन होमोजेनस केस, where you have yt is equal to a, yt minus 1 plus b. जब भी एक स्टेबल सॉल्यूशन होगा, whenever you will have a stable solution, its equilibrium will be here b upon 1 minus a. Its general solution is of this format. In this, you just have to plug in the values given to you and you will get the answer. अब suppose वो पूछ ही लेते that find y in period 3, तो just put 3 everywhere and you will get a particular solution. ठीक है? Now, last thing of difference equation and then we are done. This is it बेटा. Difference equation में इससे ऊपर पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है. This is the maximum that can be asked in this paper. Okay, so now we want to go ahead and we want to talk about when is difference equation stable. बेटा stable तब होती है if we are able to go towards the equilibrium value. What is my equilibrium value? We found out our equilibrium value is b upon 1 minus a. So it will be stable if I will be able to go towards this equilibrium value. Now listen to me. It is stable if and only if mod of a is less than 1. अगर a की जो absolute value है, if that is less than 1, then it will be called as a stable solution. And if a will be more than 1, then it will be called as an unstable solution. These are the conditions for the equilibrium. So this has been explained here. देखो case 1. In this case, we have gone ahead and taken a is greater than 1. मतलब example के लिए, suppose a is 1.5. अगर a greater than 1 है, जैसे ऐसा कुछ equation, yt is equal to 1.5 yt minus 1 plus 700. So clearly I can see a is greater than 1, ये जो coefficient है. Then you will deviate from your equilibrium solution. ठीक है? So if my equilibrium is this, b upon 1 minus a, I will deviate from that equilibrium situation. Okay. Case number 2. If a is exactly 1, अगर a का value exactly 1 है, then I will be exactly at my equilibrium solution, b upon 1 minus a. I will be exactly on that horizontal line. Case 3. If a is less than 1 but greater than 0, मतलब a is positive, like 0.8, 0.4, a is between 0 and 1, then I will go towards my equilibrium value. So अगर ये this is b upon 1 minus a, I will go towards equilibrium. तो अभी तक हमने क्या देखा? That if a is greater than 1, unstable, a is equal to 1, merge with equilibrium, a less than 1, greater than 0, go towards equilibrium, but stable. It is going towards equilibrium. Equilibrium से away नहीं जा रहा है, it is going towards equilibrium. So these are the 3 conditions when a is positive. अब हम a negative में देखते हैं. So if a is negative, but it is between -1 to 0, मतलब absolute value of a is still less than 1. जैसे example, if your a is minus 0.8, a is minus 0.6 and so on. So if your a is negative, but absolute value of a is less than 1, then बेटा इसको बोलते हैं dampened oscillation. This is called as dampened oscillation. मतलब you will go towards equilibrium. So if I just go ahead and I make this,
here I have b upon 1 minus a. I will oscillate. मैं ऊपर नीचे करूंगी but धीरे धीरे वो कम होती जाएगी. I will go towards equilibrium. So this is called as dampened oscillation. Yes, beta. A equal to 1 is stable. Absolutely stable. Okay. Then you have what if A is minus 1? So I will just be having exactly same oscillation, but I will not reach equilibrium. So ये मेरा oscillation exactly same होगा हर बार. It will be by the same value like this. And if my A is less than minus 1, जैसे अगर A का value हो गया in A not so इसको absolute value में A greater than 1 भी लिख लेते हैं. So for example, A will be minus 1.45, right? Then you will have increasing oscillations. ऐसा कुछ. Gap will keep increasing from your equilibrium value. So this will be unstable. So actually, whenever we write the stability condition, अगर उन्होंने आपको stability condition options में पूछी है, the answer to stability condition will be mod of A less than 1. This is just stable equilibrium. And suppose उन्होंने पूछ लिया that in which of the following cases do we have dampened oscillation? ऐसा कुछ. A less than minus 1, A greater than minus 1, but less than 0, A between 0 and 1, A greater than 1, ऐसा कुछ बोल देंगे. In which of the cases do we have dampened oscillation? Then you have to remember these cases. For dampened oscillation, we need to have the condition that, correct, we need to have the condition that A has to be between 0 and minus 1. It can be minus 0.8, minus 0.9. And for increasing oscillations, A will be less than minus 1. This is also called as explosive oscillation. Okay? This is it that you have to do from difference equation. But itna karke hi jana hai. No one will skip this. So difference equation mein what all we need to do? First, order of difference equation. Second, solution of homogeneous, non-homogeneous difference equation. Third, stable equilibrium value. And fourth, you need to know conditions on A for different graphs. Right, beta? So this is it for difference equation. Still, if you want, you can go through the additional content of maths given. So when A is minus 1, you will never reach equilibrium, but you will not deviate also. You will always have the same gap. So it's like kind of cyclical, but with the exactly the same gap. So just see here, neither oscillating is increasing nor oscillations are decreasing. The same kind of oscillations repeat themselves. Right? So time period will have static instability. You are not reaching your equilibrium anyways, and these are stable, these are the same kind of oscillations. Learn the graph also better. Graph याद करोगे तभी याद रहेगा ना condition. So I need to remember कि अगर same amount of oscillation है तब A is minus 1. So to map things, graph has to be mapped with condition. Okay. So now let me just move on to the second topic for the day, which is your linear programming. Again, in linear programming, nowhere in the syllabus do they mention simplex. Okay, they just say linear programming. So accordingly, we don't have to deep dive into simplex. Simplex is not a part of the course. But we need to just know some things ऊपर से which can be asked in the MCQ. तो पहली बात तो ये है that in a linear programming, you will have an objective function subject to some constraints that you will be given. Now, a lot of times, the constraints also mention that you want to work with x greater than 0 and y greater than equal to 0. This is called as the non-negativity condition. This just goes ahead and tells me
that we need to work in the first quadrant. That's it. Now, we need to understand what is a feasible set. So, a feasible set is any set such that you go ahead and you get some equilibrium point. Like, for example, I tell you that I want to go ahead and I want to maximize my function 4x plus 3y, and I have given you some conditions. The conditions are 2x plus 7y less than equal to 14, 3x plus 9y less than equal to 21. ऐसे करके कुछ conditions are given to you. You will go ahead and you will plot these, right? You are also given x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. तो aim होगा कि आप इन constraints को plot करो. So supposedly you go ahead and plot them. I take good x here. I take good y here. And here I have 7. Here I have 2. This is, ये मेरा ये वाला line हो गया. You plug x 0, you plug y 0. You get 0 plus 0 less than equal to 14. This is a true statement. So you will shade towards the origin. Then you go ahead and you plot this one. So this is 3x plus 9y less than equal to 21. So on the x-axis, you will get 7 only. And on the y-axis, you will get 7 by 3. Something like this. This will be your other point that you will be getting. Again, you will plug in 0. So 0 plus 0 less than equal to 21. This is a true statement. So you will shade towards the origin. Now you will see where are you getting this common region. So you can clearly see that this is my common region where both of them are getting shaded. So you can go ahead and call this as your feasible set. A set which needs to be evaluated. मेरे जितने भी points होंगे x और y के, they have to satisfy all the constraints. So I found out this equation. मैंने देखा कि किस region में वो satisfy हो रहा है. I marked it with green color. I plotted this equation. I saw where it is getting satisfied. I marked it with another color. And wherever both of them were getting satisfied, that is where I will have my feasible set. मतलब कि it is something which is affordable set in a way. Now what you will do? You will go ahead and you will look at different points in this feasible set. तो एक point तो यहाँ पे ये आ गया 7,0, and the other point that you have got is 0,2. Now whatever points, and third point is this 0,0. Whatever points you have got by solving these two constraints, so we have got the point 0,2, 7,0, 0,0. I will put it back in my equation, and my equation is 4x plus 3y, and I will find out the value. So from here I am getting 4 into 0 plus 3 into 2, so 6. 4 into 7 plus 3 into 0, so 28. And 4 into 0 plus 3 into 0, so 0. This point is giving me the maximum value of the function. ये जो भी मेरा objective function था, it is getting a maximum value at this point. So this can be called as the solution point. This is how you will be solving. So feasible set is nothing but this set that you get by solving the two constraints together. And I have given you an example as to how you can go ahead and solve that. Now there are some assumptions of this linear programming, and since they may ask theory in exam, it is a good way to just remember these assumptions also. The first assumption is that you have limited resources. Of course, तभी आपके पास constraints हैं क्योंकि resources limited हैं. Like when we maximize utility, we know that we have limited income, right? The second thing is that you have an objective function in hand. मतलब like you want to go ahead and maximize utility. The third is that, as the word suggests, this is linear programming. So I am not working with non-linear constraints or non-linear objective function. I am only working with linear functions. Now linearity allows me
to ensure that I have a proportionate change everywhere. मतलब कि जैसे अगर मैं budget line लिख लेती हूँ, right? And I just write px into x plus py into y equal to income. So I know that, if this will increase or decrease, it will have an impact on m linearly. So that is what m is, linearity is ensuring. Then you have homogeneity. Again, beta, this is just an assumption. We assume that it will be good if we have homogeneous constraints, right? Like here also you have a homogeneous constraint, as you can clearly see. Here you have 2. If I just take lambda x plus 7 lambda y equal to 14. So I can clearly see that lambda can come out and I will be left up with 2x plus 7y and power of lambda is 1. So these are homogeneous constraints. These are homogeneous objective functions with which we are working. And we have the assumption of divisibility also. So we are just assuming that if I get the answer in points, it will be a valid answer. If I get the answer saying that labor will be 2.4, it's a valid answer. Divisibility is possible. Okay. Now just consider this example quickly. So it says determine if x comma y equal to 1 comma 2, does it lie in the feasible set or not? So what is the condition of feasible set? That it should satisfy the constraints. So look at the first constraint, 2 into 1 plus 3 into 2. So this will be 2 plus 6, that will be 8. This is greater than or equal to 6. So it is satisfying the first constraint. Look into the second one, 2 into 1 minus 3 into 2. So this will be 2 minus 6 minus 4. Is this greater than 15? No. So this is not a part of the feasible set. कोई भी चीज feasible set तब होगी if it goes ahead and satisfies all your constraints. This is not satisfying all your constraints. So this is not a part of the feasible set. This point. Okay. Okay. Now the next thing that we want to understand is bounded versus unbounded. Better try to understand. Suppose I go ahead and I plot two equations. जैसे अगर मेरा equation जो है, I am taking the same equations I took above. So let's say my equation is 2x plus 7y, but it is greater than or equal to 14. ये मेरा पहला constraint है. And my second constraint is 3x plus 9y greater than or equal to 21. Now, you will plot these two constraints. So when I will plot the first one, I will get 7 here. I will get 2 here. This is how I have plotted it. Simple. You will just, for plotting, equate it to 14. When x is 7, y is 0. When y is 2, x is 0. Sirf in दो points को just put them here and join. Now, just think about it. If I will plug x and y की जगह पे 0 and 0, I will get 2 into 0 plus 7 into 0 greater than or equal to 14. 0 greater than or equal to 14. This is a false statement. So I will shade away from the origin. Similarly, when I will plot this also, I will be getting something like this. And again, I will put 0 and 0. I will get 0 greater than 21. It's a false statement. So I will shade away from the origin. So what is the common area I have? इन दोनों को shade करने के बाद मेरा जो common area होगा, it will be all of this region. Now I want to go ahead and I want to maximize. मेरे को अपने function को maximize करना था. Whatever that function I had written. 4x plus 3y. So I want to maximize this value. 4x plus 3y. But will I be able to maximize it? क्या मेरे पास कोई भी solution आ पाएगा इस case में? The answer is no. Why? Because just think about it. Suppose I want to maximize 4x plus 3y. So एक तो मैं इस value पे check कर सकती हूँ. I can check it at this value. But I have this entire unbounded space to myself.
तो at what other values will I check? वहां पे मेरे पास एक region था जो bounded था. It was within one triangle. So I knew I had to check the vertex of the triangles. But here this is a completely unbounded region. ये पूरा region आपके पास है तो आप 100, 100 पे check कर लो value. You can check it at 200, 200. So you don't have one solution to it because your region has become unbounded. So if it is unbounded, then you are not able to get the solution unless maximize करने की जगह पे I ask you to minimize. Then maybe I will be able to find a minimum. Maximum value तो बढ़ते जा रही है तो आ रही है. Maybe यहाँ पर या यहाँ पे I may get a minimum value of the function. So you need to understand that a feasible set जो मेरे को shade करके region मिल रहा है, it may be bounded or it may be unbounded. Both cases are possible. दोनों ही चीजें possible हो सकती हैं. And I have just given you an example of both of them. So this is a bounded feasible set, which is coming within this. And अगर वो यहाँ पे हो जाता, it would have been unbounded. Now, in exam, अगर LPP से question आता है, the first thing can be to solve a very basic LPP problem. जैसे they may ask you maximize, जो अभी हमने किया था, 3x plus 2y subject to 2x plus 7y less than equal to 21, x plus 3y less than equal to 12. ऐसे करके कुछ देके they will give you two basic equations and they will ask you to maximize or minimize like we did. So you will get some points by solving them. You will put them in this function and you will evaluate those points. एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है. If that does not come, then the last thing that I am guessing that can be asked in exam can be from duality. Now what is duality? Duality basically has two things to it. One is called as a primal, one is called as a dual. These two things, primal and dual, they can be reciprocated. मतलब एक को primal बोल दो, दूसरे को dual बोल दो, या इसको primal बोल दो और इसको dual, it does not matter. One is primal, one is dual. किसी को भी primal मान सकते हैं, किसी को भी dual मान सकते हैं. How do we make primal and dual? तो अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ that I want to maximize a function c1x1 plus c2x2 subject to a11x1 plus a12x2 less than equal to b1, a21x1 plus a22x2 less than equal to b2. So this is called a primal. और इसका dual लिखने के लिए you will go ahead and you will convert maximum to minimum. So you will go ahead and say that this is max. Let me just go ahead and plug min here. That's the first thing. Second thing, whatever coefficients you will see in the constraint, you will write those coefficients here. So B1 W1 plus B2 W2. Whatever sign you see here, you will change the sign. So if this is less than, you will make it to greater than. Then you will go ahead and you will reciprocate, find the transpose of this matrix. So see here, if I convert this in the matrix format, I have A11, A12, A21, A22. I will just transpose this. I will get A11, A12, A21, A22. And I will write this transposed matrix here. Okay. I will just put this greater than equal to sign here. And whatever coefficients existed here, C1, C2, you will plug those coefficients here, C1, C2. Right? So I am thinking, let me just write W1, W2, W1, W2 plus and plus. So if at all there will be a question, there can be a question from the primal and dual, and they may go ahead and ask you something like this. Which of the following statement is true? And suppose I tell you that the coefficient of
the objective function of primal become the constraints of dual, right? The coefficient of the objective function of the primal become the constraints of the dual. So देखो, C1, C2 of primal has become the constraints of the dual. Number two, if primal is maximizing objective function, dual will minimize it. So see here, I was having a maxima here, I will have a minima here. This is also true. Third statement. The coefficients, the coefficient matrix of the dual is transpose of coefficient matrix of primal. This is also true. This is your coefficient matrix of the primal. इसको हमने transpose किया था and we got the coefficient matrix of the dual. All of the above. So something like this can be asked in exam. You will be given 2-3 statements and आपको primal and dual का conversion, you should be aware of that. They may not ask you to solve it, but only the condition. So max, if it is max, it turns out into a min. The constraint here become the coefficient here. The coefficients here become the constraint here. The less than sign converts into a maximum sign. And this matrix, it transposes itself. These are the conditions of primal and dual. At last, one last thing. These are some of the important characteristics of primal and dual which can be asked in the exam. These are important. First thing, ये बोल रहा है dual of dual is primal. So suppose primal था to maximize the function. Then I wrote its dual. वो हो गया minimize the function. Then I again wrote its dual. It will again be maximizing the function. So it will be same as primal only. So if we go ahead and we write the dual of the dual, that is primal itself. Similarly, if either the primal or dual has a solution, then other also has a solution. I have just all these points. I have just written it here in the matrix form also. So just understand. अगर primal का unique solution exist करता है, मतलब I am able to maximize the function, get some x star y star, तो dual का भी unique solution exist करेगा. If your primal is unbounded, then dual will have infeasible or no solution. अगर primal ही unbounded हो गया, right? Primal unbounded का case I just told you, the shaded region ends nowhere. So if it is unbounded, if primal is unbounded, then dual will have no solution. Vice versa is also true. If dual is unbounded, then primal will have no solution. So this matrix basically goes ahead and it explains exactly the same thing. If one of the problem has infeasible solution, मतलब अगर मैं एक problem को solve नहीं कर पाई, then the objective function of the other is unbounded. अगर एक का solution नहीं निकल रहा, मतलब दूसरा unbounded रहा होगा, और दूसरे का solution नहीं निकल रहा, मतलब पहला unbounded रहा होगा. So the value of objective function for any feasible solution of primal is less than equal to objective function of the dual. Yes, this is something you have to remember. So whenever you will find the final value, मतलब I just had some constraints. In constraints, I find it the shaded region. Shaded region में मेरे पास कुछ points आए. I evaluated these points. I got x star y star. At these x star y star, मैंने objective function को evaluate किया. और कोई x star y star में भी I got that as the maxima values. Whatever value you will get of the objective function, that will of the primal, that
value of the objective function of the primal, it will always be less than the objective function for the dual. Just remember this, right? So the value of objective function of the primal is less than equal to the value of objective function of dual. Okay, if either primal or dual is unbounded, solution to other is infeasible. If primal has feasible solution but dual does not, primal will not have finite optimal solution. So these properties are important and there can be an MCQ on these properties. Point number 4. Okay. So beta, what I am saying is the following. There is a very good example of this in Sater and Hammond, which talk about a baker's problem. और उस बेकर्स प्रॉब्लम में ही इज ट्राइंग टू मिक्स अ केक और उसमें उन्होंने इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है. इट जस्ट मींस दिस. सो इफ आई जस्ट गो अहेड, सपोज यहां पर इफ आई जस्ट गो बैक टू माय एग्जांपल दैट आई डिड, this one, I had found out that the maximum value of the objective function was coming as 28. यहां पे मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स लिखे थे. इन कंस्ट्रेंट्स के होते हुए आई हैड ट्राइड टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, और जब मैंने इसको मैक्सिमाइज किया आई सॉ दैट इट इज गेटिंग मैक्सिमाइज्ड एट 70 and the value is coming at 28. So this is the value of the objective function of primal. This is coming as 28. Now I will create a dual. तो इसका अगर dual create करना है, I will minimize. ये वाला coefficients will go up. 14W1 plus 21W2. This constraints will reverse itself to 739 W1, W1, W2, W2. Signs will reverse themselves, and here I will have 4 and 3. I will be able to create a dual. अब मैंने इस dual को solve किया. I solved this dual. When I solved this dual, I will get some value of W1 and W2, जो इन constraints को satisfy करेगा. I evaluated that here, and उन सारे W1, W2 से I saw which W1, W2 is minimizing this function, and I found out this, जो भी यहाँ का value आया होगा, I found out the value of the objective function from here. Then this property is saying that whatever value you will get there from dual, that will always be more than or equal to the value you got. So if I am getting the value 28 here, then यहाँ पर it can be 28, it can be 29, it can be 30, and so on. Okay. This is what this is saying. This is what point 4 is saying. So it's like this. Let me give you one example also. Imagine you are into a cake factory. You are making cake and उससे आपको कुछ profit हो रहा है. So you are trying to maximize your profit subject to your resource constraints. Now suppose you think that you want to close your business. आपका business नहीं चल रहा, you want to just close it. So when you will be closing your business, जो भी आपके पास resources रहे होंगे, you want to sell them off in the market. You want to earn money and leave the market. So what is the minimum money you want to earn by selling these resources? I'm not using flour, sugar, milk separately to make cake. मैं इनको सिर्फ directly raw material की तरह बेच रही हूँ. I'm not making cake anymore. So what will I do? What is the minimum money I want to make? It is at least as much as the profit I was making here. अगर मैंने इनको बेच के profit से भी कम कमाया, तो I could have very well just kept running this cake factory. So the minimum money I want to earn by selling these resources is at least as much as I was earning by this cake business.
So here I was maximizing my profit. Here I am earning, I am asking what is the minimum money. मतलब I am creating a dual out of it. और जो मैं minimum money earn करना चाहूंगी by selling these resources, it is at least as much as the profit of this place. So that is exactly what that condition is saying, that जहां पे आप objective function का primal का final value निकालोगे, it is at least as, it has to be less than equal to जो आपने इसके dual का value निकाला. That is your fourth point. Okay. So just make a note of these properties and it should be enough. But read them only if you have time. If you don't have time, then LPP ka basic question is fine. Okay. Okay. So with this, we end today's session.